Hello. Mic test. Hello. What's up? Welcome everybody. How was that, Abby? Good, mic. First things first, mic. बराबर है कि नहीं? पता पहले. और दे दो क्या ले भाई, ले भाई. ले भाई, जी ले अपनी जिंदगी. सबको मिल गया. लीक्स आ गए खाली भाई मेरे पास. कौन से लीक्स भाई? क्या लीक्स? कुछ लीक्स नहीं है भाई. देयर आर नो लीक्स ब्रदर. क्या लीक्स है मेरे को पता है तेरे को? What's up, Karan? वॉच पार्टी जा रहा हूँ मैं. मुझे उठ के पाप आने वाले हो? नहीं अभी तो घर पे ही हो गए. घर से भी निकलने नहीं वाला हूँ मैं. इतने सालों से घर पे आया नहीं हूँ. अभी घर पे रुकना पड़ेगा थोड़ा. व्हाट्सअप प्रतीक काली भाई. जय श्री राम भाई. जय श्री राम. क्या हाल है पब्लिक? बहुत दिनों के बाद स्ट्रीम किया. बहुत दिनों के बाद तुम लोग को देख रहा हूँ. क्या हो क्या रहा है लाइफ में? हमारे लाइफ की मत पूछो. आपकी खुशियाँ बता दो हमें. Death match. Warm up. भैया आपका कीबोर्ड कौन सा है? कीबोर्ड टकी 37 फुल कीबोर्ड 37 टकी. नमस्कार सुरवे साहब. Fight. Time to delete exclamation team. वो डिलीट नहीं करता. Always be a memory. वो कभी डिलीट नहीं होगा. Gone. Dominating. अब सिर्फ VGMI चल रहा है. VGMI सोच रहा हूँ मैं शिफ्ट होने का. डाउनलोड किया है मैंने. 4 फिंगर जायरोस्कोप पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं. 4 फिंगर जायरोस्कोप. कल 2 किल मारे मैंने, बट पता नहीं मेरे को मैंने बॉट्स मारे कि असली बंदे मारे. सेड के साथ खेल लो भाई. मैं सेड मेरे को बुलाता ही नहीं है भाई. मैंने उसको BGMI आने के एक दिन पहले मैंने उसको बोला था कि भाई तुम लोग के टीम में मेरे को ले लो. टीम करियर रेंडर्स वाले टीम में मेरे को ले लो प्लीज.
मैं स्ट्रीम पे रखे उस दिन पूछा उसको, वो पूरा तो नहीं है उनको। टीम रिवील का वीडियो आएगा, सब आएगा सब आएगा। टीम माही वाला वीडियो आने वाला है। टीम माही BLT इज नाउ टीम माही। हाँ बोल सकते। अरे कुछ भी बना देना, ऐसा पेंट में वगैरह बना दे कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो पहले वाले यूज कर रहा हूँ, कौन सा तो ऑलरेडी था क्या। हाँ बढ़ गया उसने की मैंने के 32 का सीड का। सीड भाई महंगे ही है अपने, हाँ पहले से बड़ा हुआ है सीड भाई का। No more. साहब ऐसे मिले कि नहीं आज, साहब ऐसे किधर से मिलूंगा मैं, अपने घर पे वो उधर दिल्ली में, तो कैसे मिलूँ। सिर्फ कल बर्थडे विश किया उसको मैंने बस। 22-23 साल नहीं 24 साल का हो करेगा अभी। 24 साल पहले एक लेजेंड आया था दुनिया में, लेजेंड एवरीकली गुड मैक्स पेन। एक हफ्ते पहले मैक्स पेन था, बट अभी 10 kills remaining. मिनिमम पेन। Three gone. Now 4. मेरा मोबाइल बंद हो रहा है बार बार। फिर से स्नीकर्स आएंगे सीट के फुल, तो वही बोला मेरे को, क्या बोला था लास्ट टाइम, स्नीकर्स और चश्मे मेरे खरीदे नहीं रहे बहुत टाइम से, अभी टाइम आ चुका है वापस खरीदने का। अरे अच्छे मूड में हो, एक स्किन भी दिला देते तो। कौन सा स्किन चाहिए बोलना तेरे को, कौन सा स्किन चाहिए बोल मेरे को, आईडी दे दे अपना, कितने वैलो पॉइंट्स का कितना है वो बता दे मेरे को, डाल देता तेरा अकाउंट में। और क्या क्या चाहिए। Neutralized. आईडी दे रहा हो बेबी बेस्ट, ठीक है करा देता हूँ मैं। 45 मिनट्स में चेक कर ले अपने अकाउंट में, One वैलोरेंट kill पॉइंट्स रहेंगे remaining. तेरे अकाउंट में 45 मिनट्स के अंदर। अगर नहीं आए वैलोरेंट पॉइंट्स तो राइट को कांटेक्ट कर ले एक बार। बराबर बराबर शौर्य, कुछ नहीं है भाई, वैसा कुछ नहीं है भाई, कुछ पनौती नहीं है। व्हाट्सअप वॉलपिक्स। कल भाई टीम आई में कौन कौन है अब, वो सीक्रेट है, बता नहीं सकता मैं फिलहाल, बता नहीं सकता, बट ऐसा नहीं कि कभी बोलूंगा नहीं मैं, टाइम आने पे
सब समझेगा, सबको समझेगा। Match क्या found. प्लान है आज का क्या प्लान है? वेट कर रहा हूँ 4:30 तक, तब तक डेथ मैच वगैरह खेलूंगा मैं। फिर अपने विक्रांत पुजारी सेट आने वाले हैं, अपने ऑर्गलेस सागनिक हेल फाइटर रॉय वो भी आने वाले हैं। तो थोड़ा वॉच पार्टी करेंगे, अच्छे लोग का मैचेस देखेंगे, थोड़ा सीखेंगे बीसीएम Death में। match. Warm up. बस वही है अभी, इतना ही प्लान है फिलहाल तो। क्वालिफाइड टीम्स को देखेंगे बीसीएल में, नॉन क्वालिफाइड लोग वॉच पार्टी करेंगे, और क्या बचा है लाइफ में। यार आईफोन में स्क्रीन बंद था वो कैसे हटा दे? इसमें ऑटो लॉक, ऑटो लॉक नेवर। पहले तो से मिड वन रेड कारपेट, मैं रेड कारपेट का जाने दे। मैं लिटरली पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से ऑलमोस्ट दिन के मिनिमम 10 12 15 गेम तो खेल ही रहा हूँ, और मेरा 2 हफ्ते से इतने 100 रैंक मैचेस खेले रहेंगे, उसमें सिर्फ +50 या +60 आरआर मिला रहेगा मेरे को। मतलब 70 मैचेस अगर जीत रहा तो मैं 50 मैचेस अगर जीत रहा तो 70 मैचेस हार रहा हूँ। वैसा मेरा फिलहाल रेशियो चल रहा है। सबके साथ खेलने का ट्राई किया मैंने, कोई नहीं है मेरे को बचाने वाला। कल एक गेम चाहिए था मेरे को रेडिएंट के लिए, एक गेम में नहीं, एक्चुअली 2 पॉइंट्स चाहिए थे, 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के चक्कर में और 3 गेम हारा हूँ मैं। यार इतना सोलो में बीटी हो रहा है एक्चुअली, मेरा मोटर हो रहा था, डायमंड 2 आ गया, हर के भाई सेम मैं भी रेडिएंट पूछ जाता, मैं मोटर 3 पे अटका हूँ, आगे भी नहीं जा रहा हूँ, नीचे भी नहीं गिर रहा हूँ, समझ नहीं रहा क्या करूँ और किसके हाथ खेलूँ और किसको बुलाऊँ। एचपी किधर है? एचपी किधर गया वो? वाकले को बोला, वो क्या नहीं करेगा, वही करना पड़ेगा। एक डोंबिली वाला डोंबिली के साथ ही जीत सकता है, ऐसे लग रहा है मेरे को तो अभी। डोंबिली भाई भाई बंग्स भाई के साथ भी खेला हूँ मैं, बंग्स भाई के साथ भी 3 गेम जीता, 2 गेम हारा, वैसा कुछ तो रेशियो चल रहा है बंग्स भाई के साथ। कोई नहीं है मेरे को जिताने वाला, कोई नहीं है, कोई नहीं है। I'm sad. गुल्डी भाई बफ रेटेड, गुल्डी भाई बचा सकते हैं मेरे को, गुल्डी भाई अगर रेस के लिए तो ही बचा सकते हैं मेरे को। No one else can save me from this disaster. Dominating.
लेफ्ट हैंड ट्राई किया है क्या? ये नहीं करना है क्या ट्राई? अरे भाई कुछ वियर्ड लग रहा है मेरे को, ये चाकू देख के कुछ वियर्ड लग रहा है थोड़ा पूरा। ऑलमोस्ट पूरा स्क्रीन कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं डेथ मैच जीता नहीं तो राइट पे आऊँगा, अगर डेथ मैच जीता तो लेफ्ट पे शिफ्ट करूँगा। कुछ वियर्ड लग रहा है। क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड से? ऐसी चेम्बर बाय राइट हैंड वाला लग रहा है मेरे को। चेम्बर राइट हैंड वाला इसलिए इतना अच्छा मार रहा है। 10 kills remaining. अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है लेफ्ट हैंड। हेलो हाँ एक सेकंड। हेलो पता चेक करा। Hi Karan, how are you? Good. Penta, how are you? How are you? हारने वाला उधर मैच में। Remaining. प्रणय का भी टीवाईएफएस आ गया। कभी आया प्रणय का? कभी आया? अब भी जस्ट है क्या प्रणय का? ओए 1 kill remaining. मैं हारने वाला हूँ मैं। पीक। हेलो हाँ दे दो। हाँ दूसरा क्रिएट सेशन। हाँ इससे है ना? ठीक है
टाइम क्या हुआ है? Where is our beloved hacker भाई? करण नवीन स्किन्स घेतले की नाही? आणि डिस्कॉर्ड आहे. येतो मित्रा, आलो डिस्कॉर्ड. नवीन स्किन घेण्यासाठी पैसे नाही हॅकर देतो का? थोडे अर्धे पैसे देतो का? खाली भाई 2700 VP दे दो. ब्राह्मण हो, सारे गम मिट जाएंगे. दिल से मांग रहा हो. फर्स्ट स्किन आईडी बेबी. भाई देख, अपन एक डील करते हैं. एक अच्छा वाला डील मिलेगा तेरे को. तेरे को स्किन चाहिए राइट? तेरे को स्किन चाहिए राइट? तो स्किन्स मेरे को भी चाहिए. तो अपन एक डील करते हैं. तू मेरे को 4000 VP खरीद के दे, मैं तेरे को 2700 VP खरीद के दूंगा. और नेक्स्ट बंडल का एक बंडल भी दे दूंगा तेरे को. नेक्स्ट बंडल का बट हॅलो. हा पाठवलं. एकदा नेट वगैरे काहीतरी हे झालं असेल. ऐसा ना कर भाई. अभी दोनों को गरज है ना. मतलब तू भी खुश उसमें, मैं भी खुश, दोनों खुश. हैकर भाई भी खुश. भाई स्किन्स विंस देने का स्कीम चल रहा है तो मुझे भी दे दो भाई. भाई हैकर भाई तू देना आधा मेरे को दे देना प्लीज. आधा? खाली खाते में 3 डिजिट में अमाउंट आ रहे हैं आजकल. मेरा सिंगल डिजिट भी नहीं आ रहा है हैकर. समझ रहा है तू बात? शर्म कर रहे. सिंगल डिजिट का डबल डिजिट करने के लिए मेरे को 2 साल रुकना पड़ेगा अभी. समझ रहा है हैकर? इसलिए मेरे को कुछ हेल्प, इसलिए मैं हेल्प मांग रहा हूँ तेरे से. हैकर भाई थोड़ा अब आज के डेट पे थोड़ा सा हेल्प कर दो. थोड़े टाइम में यही मैं फेवर रिटर्न कर दूंगा. डबल एकदम. ऑलरेडी हो गया है क्या डील? नहीं भाई, पता नहीं भाई. टायसन कुठे है? टायसन यार नीचे है. टायसन बेचारा सोया है. ओए तू का ट्रीट हो गया इकडे. ऐसा ट्रीट अरे ऊपर आ रहा. भाई टाइसन का जो ट्रीट लाया ना मैंने हैकर, वो स्मेल किया तो इतना इंसान लग रहा है ना, सेम मिल्की बार जैसा. सब मन कर रहा है कि मैं ही खा लूं. यही बचा है क्या करन? ये दिख रहा है. अरे गुड बॉय. What's up, orangutan Pranay Goyal? How are you? बंडल सस्ता है ले ले काली. बंडल सस्ता है काली ले ले. क्या कर रहा है भाई? बंडल भी सस्ता है, मैं भी गरीब हूँ. क्या करे अभी. तो लाइफ इज नॉट फेयर समटाइम्स, यू नो विक्रांत. हो का करन? Yeah dude, I'm good. How are you doing, TSM Excali? I'm doing all good bro. किधर TSM Excali भाई. प्रणय गोल का भी आया क्या? Excali है. TYFS आया क्या प्रणय का? कौन बोल रहा था? 7 Excali है भाई. प्रणय भाई का TYFS आ चुका है. We would like to thank Pranay Goyal for being a part of Velocity Gaming and we wish him all the best for his future endeavors. #feel the velocity. Look at this guy. Look at this cutie. ये किसने डाला है? खुद ही पोस्ट किया है क्या इसने? नहीं अरे मेरे को बता.
ये वाला रहा हूँ बेचारा, खुद ही पोस्ट किया है ये मैंने। देख देख देख, ये वाला किसने एडिट किया है? ये वाला स्माइली क्यों डाला है इसमें? एक तो इतना सैड मोमेंट है और उसने स्माइली डाला है। ऐसा नहीं कि एक स्माइली है, एक स्माइली नहीं है, दो स्माइली है, वो भी हंस रहे हैं, ऐसा नहीं कि सैड वाले, वो हैप्पी हैप्पी स्माइली है वो। वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। वो हैप्पी क्यों है पता है ना, क्योंकि ओरांग उटान जा रहा है अभी। ओ समझ रहा है ना। समझा समझा, अभी बराबर बोल रहा है। भाई वैष्णव के लिए बुरा लगा, खुद का टीएफएस खुद बनाया उसने। भाई वैष्णव क्या बुरा लगने वाला है भाई उसमें। वीएलटी के लिए स्प्लिट 1 और स्प्लिट 2 में गया वो दिल्ली पूरा ट्रैवल करके, अभी आरएनटी के साथ गया है वापस दिल्ली। एक ही बंदा है जो दिल्ली घूम के आया पूरा, दो टीम्स वापस में, वो गया है भी घूमने। वापस गया। अरे ओजी एक्सकैली नहीं है, 7 सीज एक्सकैली है भाई अभी। क्या हो गया ना तेरा करंट 7 सीज? ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन है। सात समुंदर अभी गाना थोड़ा लिरिक्स ऐड करना पड़ेगा मेरे को, बहुत काम आ सकता है बाद में रखना। The only person who will see the full event. Just maybe Excali.vfx होता, मे बी फिर आरएनटी के साइड से जाता दिल्ली। दिल्ली तो तू अभी वापस आएगा। क्यों आऊंगा मैं? अपन वेकेशन जाने वाले हैं ना भाई, क्या कर रहा है, भूल जाना गया है क्या क्या? वेकेशन? जाना है भाई। भाई कौन सी चीज का वेकेशन? वेकेशन ऐसे चीज का रहता है, ऐसे चीज के बाद होता है जब भी कुछ अच्छा होता है, ना तो बहुत ऐसा मेहनत की जरूरी नहीं है। है, अच्छा हो भाई बुरा हो कुछ भी नहीं हो, ब्रेक नहीं ब्रेक भाई, होता है। नहीं भाई, चुप हो जा। मैं यकीन नहीं करता इसमें। आरआर ऐसे मत कर भाई। ऐसे वाले ब्रेक में मैं यकीन नहीं करता। आरआर मत कर, आ जाना चुपचाप। अगर मैं वीसीएल जीता हुआ रहता, तू वीसीएल जीता हुआ रहता तो तू टूर्नामेंट जाता ना गधे। नहीं बट उसके पहले वेकेशन पे रहता ना मैं। वीसीएल के पहले भी टाइम नहीं है मेरे भाई, 10 तारीख को इधर खत्म हो रहा है, 24-25 तारीख से उधर टूर्नामेंट है, 15 दिन क्या दो तू वेकेशन करेगा या बार प्रैक्टिस करेगा? दो दिन जाके आ सकता हूँ, 2 दिन का क्या है? बस बस, तूने बोला और मैंने मान लिया 2 दिन का वेकेशन तेरा। क्यों नहीं भाई? चलो सीनन एक्चुअली बेटर, नो सीनन गोपी इज मच बेटर। गोपी भाई को अभी थोड़ा निकलना पड़ेगा, अभी आरएनटी गोपी है फिलहाल वो। आरएनटी गोपी टू सीनन गोपी। मेन अनाउंसमेंट कब आएगा? अबाउट लास्ट साइड, एक हफ्ते के अंदर, वंस एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड आ जाना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर, उसके पहले ही आएगा। ये साकनिक भी आने वाला था, उसको डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है क्या तूने? नहीं, दे देना उसको। तेरा व्हाट्सएप लॉग्ड इन है पीसी पे? हाँ बट मेरे पास सागनिक का नंबर नहीं है। जा, मेरे को मोबाइल पे जाना पड़ेगा फिर शायद से। अरे डिस्कॉर्ड से ही दे देना सागनिक को, वैसे भी तेरा गेम स्क्रीन चालू है, डिस्कॉर्ड थोड़ी दिखेगा। डिस्कॉर्ड पे ही दे दे लिंक। भाई मेरे डिस्कॉर्ड में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। ऑफ कोर्स। So many contracts, so many signing bonuses, everything, everything man। के सीओ वीओ का रहेगा सब डिस्कॉर्ड है मैसेज भाई, तेरे अभी को। क्या बोलूं। इधर से इनवाइट, अच्छा इनवाइट पीपल, एलएफ इनवाइट कर दिया उसको, एलएफ को इनवाइट कर दिया। किधर है सागनिक, किधर है? कोलकाता? पता नहीं मेरे को कैसा टीममेट है रे तू? भाई, अभी वेकेशन चल रहे हैं सबका, ब्रेक चल रहा है।
कि 7 Cs के बूट कैंप पे पहुंच गया है वो ऑलरेडी। वो पहुंच गए ऑलरेडी। और कौन कौन है हैकर? तेरे को तो पता ही रहेगा। और कौन कौन है नहीं, बट कैंप और पे? कोई नहीं है, और कोई नहीं है, तो पता नहीं है। बाकी लोग कभी आने वाले? बाकी पता नहीं भाई। कुछ अपडेट नहीं मिला क्या तेरे को कभी आने वाले लोग? नहीं नहीं नहीं, पूछना पड़ेगा मैनेजर से। पूछ ले भाई। नाम के पीछे 2 ट्रायंगल है पक्का, इल्यूमिनेटी से है ये प्रूफ। भूलना मत किसको, ये सब चीजें बोलनी नहीं रहती, सिर्फ देखना रहता है और छोड़ना रहता है, समझ जाना चाहिए, सिर्फ देख के समझ चलो। भूलना मत, गलती से भी भूलना मत। अब भी बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्लीज अवॉइड। अवॉइड से याद है मेरे को, एक सेकंड। खाली ये कॉस्मिक बाइट वाला माइक है क्या? यस। ओके। माइक का वो तो साउंड क्वालिटी तो इंसेन है भाई। कैमरा ग्लिच हो गया भाई तेरा, क्या कर रहा है भाई? क्या कैमरा नहीं चल रहा है? हाँ, बंद हो गया। एक सेकंड रुक। आइसन ने वायर बियर हिला दिया क्या? ओबीएस रिस्टार्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा। ओबीएस रिस्टार्ट करेगा गधे, पूरा स्ट्रीम बंद नहीं हो जाएगा? नहीं, मैंने शेड्यूल करके रखा ना स्ट्रीम, तो नहीं होता। अगर स्ट्रीम डायरेक्ट चालू किया और बंद किया ओबीएस तो फिर बंद होता है। अच्छा। अगर शेड्यूल किया स्ट्रीम और फिर चालू किया ओबीएस से तो मैन्युअली दोनों बंद करना पड़ता है बंद होने के लिए। अच्छा, गॉट इट। हो गया, ओबीएस रिस्टार्ट कर दिया अभी। ठीक है, अभी दिख रहा है क्या? यस। इंटेंशनल कैम ग्लिच, इंटेंशनल नहीं, गलती से बंद हुआ ओबीएस। शर्म कर लो, क्यों शर्म कर लो, ये नहीं है मैंने। पर तुम लोग क्या लिख रहे हो भाई, ये फूफू अगर घर पे हूँ मैं अपने, अगर करता भी मम्मी रहता तो मारेगी हाँ उसकी। ना यार, क्या 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 बातें कर रहे हो यार। लोग जानते नहीं हो थोड़ा सीमा मसवड़कर को। थोड़ा थोड़ा सोच समझ के लिखा करो यार, थोड़ा। वो दरवाजा खुल के चप्पल मुंह पे गिरेगा उसके। हाँ ना, क्या लिख रहे हो भाई, क्या लिख रहे हो भाई, मत लिखो ये सब। अच्छा नहीं लग रहा है क्या खाली? ये अच्छा नहीं, अच्छा प्रणय का भी आया है, देखते जरा प्रणय का क्या है। प्रणय का पढ़ते हैं। Last 2 years have been absolutely mind-blowing for me. I've been a fan of Anna and VLT since the beginning of VLT as an organization, and now I can proudly say that I have had the incredible opportunity to work with them. If I could go back in time and tell my past self that this was going to happen, I know I wouldn't believe it. Life works in a mysterious way. I want to take a moment to express my heartfelt gratitude for giving me the invaluable experience I can during my time with the team. I'll never forget the feeling of shifting to bootcamp and shifting to Mumbai and learning. It felt like stepping into a dream as I got to meet and interact with incredible players like Tatmeka, Ramatarasu, LF, Excali. It was a by क्या भाई, बाहर के प्लेयर्स का नाम ही नहीं डाला है इसने तो। it was an honor to be surrounded by such talent and passion. डेडली का भी नाम नहीं डाला है इसने तो। I also want to What is give a this special shout behavior out to bro? Vaishnav.vfx who has been like a big brother to me throughout this journey. अच्छा हाँ, वैष्णव बड़ा था ना इससे, प्रणय तो छोटा था। क्या मतलब बका रहा है? साइज में नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज में बोल रहा हूँ। Your एज constant में ही वही presence, बोल रहा हूँ your मैं, लग constant रहा presence नहीं and है। support meant the world to me. And to Lord Batura, thank you for always being there, helping me and guiding me in the right direction. Your mentorship made a significant impact on my growth. Looking back, I can confidently say that if it wasn't for VLT, I wouldn't be where I am today. The memories, the experience, and sense of belonging they provided me, it feel made it feel like I was part of family. Thank you VLT for everything. Feel diversity. वाह वाह प्रणय, रुला दिया प्रणय तूने, रुला दिया प्रणय तूने। बट ये भाई गलत बात है ये। रुक जा, 2 मिनट चाहिए मेरे को। 2 मिनट चाहिए मेरे को, नहीं थोड़ा इमोशनल। रोके आएगा क्या अभी?
क्या लगता है तेरे को आज कौन जीतेगा? ऑनेस्टली बोल, कोई भी एक टीम पिक कर पट। अरे बस भाई, 150 रुपए काटूंगा इसका। कौन जीतेगा? रेवरेंट मैप से डिपेंड करता है, बट रेवरेंट बोलूंगा मैं। मैप्स तो मेरे को लग रहा है क्या आएंगे। तेरा इंस्टा का है? इंस्टा देखना ऊपर एक्सक्लेमेशन इंस्टा। नाइट बॉट ने डाला है। आप कौन सा वापी यूज करते हो? वापी क्या होता है? वापे वापे मतलब क्या होता है? पब्लिक क्या क्या पूछ लेती है भाई। डुम्बलीला रस खबर है। यस यस यस। थैंक यू ध्रुव फॉर द मेंबरशिप। होम कमिंग गैंग। गलत मेंबरशिप गलत टाइम पे लिया है। ये होम कमिंग भाई गैंग मैंने बनाया पैसा था। तो है। होम होम कमिंग मैंने बनाया था जब मैंने ज्वाइन किया था वीएलडी, और मेंबरशिप अब भी ले रहा है। गलत गलत टाइम। चालू कर जल्दी, रुक नॉडविन को फोन करता हूँ। नॉडविन दादा नॉडविन ने 15 मिनट बोला। नॉडविन ने बोला क्या तेरे को? कॉल लेता क्या? हाँ, विक्रांत दादा 15 मिनट में चालू हो रहा है। हाँ। समझा। चल मेरा स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सिमर को बर्थडे पे क्या दे रहा है? चप्पल। सोचना पड़ेगा मेरे को इसके बारे में। विश तो किया क्या रे कल मेरे से बात करने के बाद? उसने कॉल किया मेरे को? अच्छा ठीक है फिर। नहीं किया रात को मैंने किया। मैंने उसको लिखा, क्या लिखा रुक बताता हूँ। हैप्पी बर्थडे साहिब है, हार्ट्स गुड लक फॉर स्प्लिट 2, और उसके आगे एक स्टिकर भेजा है, और उसका रिप्लाई मेरे को है 3 हार्ट्स के साथ। क्या करूं मैं वो 3 हार्ट्स का? मैं थैंक यू एक्सपेक्ट कर रहा था एक साहिब भाई से। उसने 3 हार्ट्स भेजा है मेरे को। एक थैंक यू नहीं लिख सकता हूँ। बस कर रे। भाई बुरा लगता है यार ये सब जैसा देख के। बहुत इतने साल की दोस्ती, एक साथ इतने पल बिताए, बुरा लगता है सब। नको। उस टाइम पे ओडिन गैंग ले लिया था सीधा। ओडिन गैंग तो ठीक है। हाय बाय सैम टू ब्रशेस वी गॉट नो टाइम टू टाइप थैंक यू। है ना यार, तो रात को मैंने 4 बजे मिस किया था। कॉफी सर पीता है काय? कॉफी वगैरह खाए ना। नो कॉफी, नो नथिंग, नो कैफीन, नो दोनों टीम में निकोटीन। अपने ही लोग है। यस, तब मैंने भी स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया है अभी। कर दिया क्या कर भाई? यस ब्रो। सही है भाई, सही है। स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड गोस टू हैकर विक्रांत पुजारी सब्सक्राइब तो किया है क्या रे फ्रॉम। मेरे चैनल को? ऑफ कोर्स किया ब्रो। क्या बात दिखा कर रहा जरा है? स्ट्रीम पे। एक सेकंड। अरे ओबीएस किधर है? अरे भाई हैकर टाइप किया तो हैकर आ रहा है भाई इधर। अभी क्या बोलूं? अबे MDL हैकर लीग। इधर है, ये देख एमडीएल हैकर, मेडल हैकर। यस। सब्सक्राइब ब्रो, बेल आइकन ऑल। अनसब्सक्राइब कर दोगे? तेरे ऊपर है। MDL हैकर लीग। वैसा तेरा गेम स्क्रीन ऑन है।
क्या गेम स्क्रीन ऑन है? दिख रहा है इधर। ओ मेरा पीछे था, नेवर माइंड। तेरा स्ट्रीम पीछे हो गया था। भाई तेरा ये क्यों है? तू लाइव है, तेरे पीछे से आवाज आ रहा है तेरा, बट तेरे ऊपर है। ओके देख अपनी शक्ल तो देखा प्यारी सी। देख, वैसा तेरा गेम स्क्रीन ऑन है। क्या गेम स्क्रीन ऑन है? दिख रहा है इधर। मेरा कैमरा ग्लिच नहीं होता है ना करण? अरे तो चालू तो कर। किया मैंने। इतना डिले डाल के रखा तूने? नहीं डिले नहीं डाला मैंने। तो पता नहीं, क्यों नहीं मेरे रहा? इसमें तो दिखा रहा है। ओह देख कैमरा ग्लिच नहीं होता है ना करण? अरे तो चालू तो कर। किया मैंने। इतना डिले डाल के रखा तूने? नहीं डिले नहीं डाला मैंने। पता नहीं, मेरे इसमें तो दिखा रहा है। ओह भाई मैप्स क्या आएंगे? मैप्स बोलता हूँ, 5 मिनट में बोलता हूँ। मेरे को पता है, रुक एक मिनट में बताता हूँ। स्ट्रीम का मैप्स चालू। आएंगे। टीआर मोस्टली फ्रैक्चर बैन करेगी। और ये लोग फ्रैक्चर बैन करेंगे। आरएनटी का परमा बैन क्या है? पर्ल। फ्रैक्चर पर्ल बैन होएगा। अगर रेवेनेंट का फर्स्ट पिक है तो फर्स्ट मैप बाइंड आएगा 100%। और अगर ये लोग का फर्स्ट पिक है तो टीआर क्या पिक करेगी? लोटस। लोटस स्ट्रगल किए वो लोग, वैसे तो लोटस पिक कर सकते हैं लोग टीआर वाले। आंटी वेट करके चली गई। इधर क्या? अच्छा आई थी ना पीछे, देख रहे थे। लोटस पिक कर चलिए सकते भाई, हैं आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? रेवेनेंट मेरे हिसाब असेंट से। स्प्लिट हेवन में अगर टीआर को बैन करना है तो लोग 100% असेंट बैन करेंगे। देयर इज नो डिनाइंग दैट, क्योंकि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हाई अगर डूड? वो नहीं इतना टाइम था। डोंट यू थिंक दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर असेंट? नहीं वो लोग असेंट पे 2 डिफरेंट कॉम खेल चुके हैं। मेरे को लगता है वो लोग असेंट बैन करेंगे। ओह गेम नाइट मूवी असेंट कैसी बैन है? करेंगे। देखा नहीं है मैंने। स्प्लिट हेवन में से एक तीसरा मैप आना चाहिए। ओके ओके। स्प्लिट आपका खेलेंगे। व्हाट्सअप स्टिंग, हाउ आर यू? स्प्लिट खेलेंगे क्या बट ये लोग, इज द बिग क्वेश्चन। स्प्लिट खेलेंगे वो लोग, टेंशन मत ले तू। बोल दिया मैंने। हाँ तो मतलब यही है, 3 मैप आने चाहिए। टेन्शन नको घेऊ विक्रांत. तुला कोणते मॅप नाही पाहिजे? घेणार, नाही तुला घेणार. कोणते मॅप बघायचे ते सांग मला फक्त. बाइंड लोटस आणि हेवन. बाइंड, लोटा आणि हेवन. हेवन. देतो देतो हेवन. देतो देतो. जेवण केलं तरच हेवन दिसणार. जेवण केलंय तू? की रेवेंचर. गजानन वड़ा पाव खाया मैंने आज. इंसेन है भाई. यस डूड. अली भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया. आकाश, हाउ आर यू? क्या? टाइसन कैसा है? बढ़िया बढ़िया एकदम. मेरे चेयर के नीचे सोया है. बहुत सस बातें करता है वो. एकदम नीचे. रोम रोम. मैं कभी कभी इतना अनकंफर्टेबल होता हूँ ना, मैं पूरा टाइम मेरे चेयर के नीचे होता है, मैं एडजस्ट करने जाऊँ तो साला कर भी नहीं सकता मैं. 5 या 10 बार मेरे को देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है करूँ नहीं करूँ, कितना और लेफ्ट लूँ कितना और राइट लूँ. वैसा बात ने नहीं क्या है. बोला था? 1 सेकंड रुका. रुका रुका, मैं कर तेरे लिए 1 सेकंड नहीं 10 मिनट रुकूंगा मैं. हेलो सोनिक. ठीक है, बीजीएमआई का ऑफिशियल इवेंट चालू हो गया. हाँ भाई, भी कुछ एक बड़ा इवेंट भी आ रहा है बीजीएमआई का. ओ भाई.
भाई पट अपने प्रेडिक्शन बताओ चैट। ऑल फैन ब्रो देसी गोल्डबर्ग भाई। गोल्डबर्ग भाई, ये गोल्डबर्ग मतलब वही है क्या जो उसमें आता था WWE, WWE वही है में? वही है अच्छा, वही है। आइजोली। वो फैन है, सब इंडियन वैलोरेंट ओपी का वाले फैन है वो। कौन आने वाले और इजी आ रहा है? पता नहीं, हाँ शायद। हेलो। Watchparty RNT versus TR. Very good, Anil. Very good. Hello, BC dude. How are you? ऑल गुड काली भाई, आप कैसे हो? Nice. I'm good too. I'm good too. TR21 मेरे को भी लगता है TR21 जीतेगी। कैसा मूड है कर भाई आज आपका? टॉक्सिक है होलसम भाई? मैं तो ऑलवेज टॉक्सिक हूँ भाई। बस जल्दी जल्दी स्प्लिट 2 खत्म करो, फिर रोस्टर चेंजेस भी तो होने हैं। भाई जल्दी जल्दी स्प्लिट 2 करो, फिर वेकेशन पे भी तो जाना है। वेकेशन में भी तो जाना है। ऑन TR2 विन, बट लगता है RNT जीतेगी। पता नहीं यार, मतलब नेक एंड नेक ही होने वाला। मेरे को नहीं लग रहा कि वन साइड होएगा। नेक एंड नेक होगा। यस, नेक एंड नेक होगा काली भाई। लिप नेक एंड लिप नेक। लिप टू लिप कभी होगा? कैसे रे? कैसे बातें करता है तू ये सब? भाई पूछ अश्लील रहा हूँ भाई, एकदम। एकदम नेक। रुक जरा, तेरा शक्ल देखने दे मेरे को गंदा सा, जब तू ये सब बात करता है। बोल। अबे क्या बोलूं, पीछे करके देख ले वापस। एक एक बोल। एक चीज में 2 बार नहीं बोलता। हंस रहा है गधा। व्हाट्सअप उत्कर्ष कॉपीराइट लगेगा ये, इसलिए मैंने बंद कर दिया। वही नहीं, बहुत घानेड़ा है ये, बहुत गंदा है ये। ऐसा कुछ नहीं क्या है। क्या बात करता है भाई, बेशरम। ठीक है, मैं चैट में टॉक्सिसिटी फैलाओ तो चलेगा ना? अरे भाई बिंदास फैलाओ, मेरे चैट में कोई लिमिट नहीं है। बस एक दूसरे के लिए मत भाई फैलाओ। एफएस भी हार रही है मिथ को। वेल्टी मैचेस में हुआ था नेक टू नेक मैचेस भाई। ये वाली टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, एंड करियर वाला नहीं चाहिए टॉक्सिसिटी। ये वत्सल अग्रवाल भाई, ये तीनों अग्रवाल है ना, पूरे टॉक्सिक है। भाई अग्रवाल सब टॉक्सिक ही रहते हैं। एक्सपीरियंस है क्या काली तेरे को? नहीं, सुना है मैंने अग्रवालों के बारे में। टॉक्सिसिटी से तो तेरा पुराना रिश्ता है रे करण। क्यों? कौन सा रिश्ता? अरे एकदम क्या रिश्ता? पवित्र रिश्ता है तेरा उसके साथ, टॉक्सिसिटी के साथ। मतलब क्यों ऐसा? अब समझदार को इशारा ही काफी होता है मेरे भाई। भाई इशारा मिला ही नहीं ना, प्रॉब्लम वो है। किधर है इशारा? रहने दे भाई, रहने दे। अरे दे इशारा तो दे। रहने दे भाई, रहने दे। अरे देना है कर। अरे तू कौन सा मैच स्ट्रीम कर रहा है भाई? भाई Copyright चाहिए तेरे तू को? इशारा तो दे मेरे को। नहीं देना है मेरे को। अरे मैं वेट कर रहा हूँ अभी इशारा के लिए। नहीं तू दे नहीं, देना ही नहीं है। जल्दी दे। देना ही नहीं है। दे जल्दी। देना ही नहीं है। जल्दी दे देना भाई, ही देना नहीं यार है। हैकर इशारा। नो भाई 100 रुपए का एक इशारा मिलेगा। Hello team, नो। हेलो। welcome to the watch party. व्हाट्स अप वेंका dude? How are you? Hello dude. बढ़िया, आप बताओ। All good dude. वेंका भाई एमएलटी का मैच कभी है? ये बच्चा भी जब बहुत जिस दिन अश्लील है भाई। VLT का है तब। ओह वीएलटी वर्सेस एमएलटी फिर। Yes sir. ग्रैंड फाइनल्स, जो ग्रैंड फाइनल जीतेगा उसका होगा हमारे अगेंस्ट। समझा समझा समझा। क्योंकि मैं आपके लिए फेवरेट्स कौन है मेरे हिसाब से? फनाटिक एनआरजी लाउड। हैकर तेरे को पता है ये 4 एंग्री मैन 4 AM टीम नहीं, कौन है ये? चाइनीज टीम है। हाँ, उसका ऑफर रहता है मेरे को ट्विटर पे एक बंदे से। क्या भगा रहा है? रुक दिखाता हूँ तेरे को, स्ट्रीम पे दिखाता हूँ, रुक। अबे बहुत सारे चाइनीज टीम्स ऑफर कर रही है। पेपर एक्स DRX नहीं, पता नहीं। बट ये DRX मेरे को लग लगा रहा है। ये थोड़ा स्कैम टाइप लगा मेरे को। अबे नहीं, चाइनीज ये लोग बहुत प्लेयर्स ले रहे हैं अभी। मैं तेरे को ज्यादा उससे ज्यादा ऑफ स्ट्रीम बता सकता हूँ क्या सीन है, बट अभी नहीं। मेरे को ऑफर है पेपर एक्स का 7th। क्या? हम्म। पेपर एक्स? गेट मैंने रेडी टू बोला लर्न भाई, चाइनीज उनको- बड़ी। सात्विक भाई पेपर एक्स DRX भाई, पता नहीं मेरे को।
मेरे हिसाब से मैंने 3 बता दिए। मैं 26 घंटे से सोया नहीं और मुझे नींद नहीं आ रही है। Is there something wrong with me? Yes, there is always something wrong with you, bro. हैं? Don't you know that? Why bro? कि कितने मार्क का आंसर चाहता है? 1 मार्क का, 15 मार्क का? 1 मार्क का। 4M पबजी Something में wrong बहुत with you, यस bro. यस पबजी का पता है मेरे को 4M। इसमें कोई तो एक प्लेयर था रे 4M पबजी में, पबजी पीसी में बहुत दिखता था मैं उसको। वो टाइम बहुत फेमस था ना पबजी पीसी, 2018-19 की बात है। तो पबजी पीसी भी फॉलो किया है अभी? अरे 2018 में तो क्या खेलते थे ना हम लोग। ऑल गुड ब्रो, ऑल गुड। ये स्कूपी वगैरह सब कितना खेलते थे हम लोग पबजी पीसी। अब भी नहीं, 2018 में। ओके। तभी तभी अच्छे दिन थे। बहुत सारे चाइनीज टीम्स है अभी, ऑन अ लुक आउट फॉर प्लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड चाइना। Like me bro. अबे तू दिल्ली से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है दोस्त, किधर चाइना जाएगा? ये टॉक्सिक विंग किया है क्या? हाँ। Yeah. अरे लोग टॉक्सिक क्यों बोलते हैं तेरे को विंग का? पानी नहीं रुका है। ऐसे बोलते दाढ़ी होंगे। आ गई भाई उसको, अभी बाजू में बैठा है मेरे। मुझे? नहीं, इजी का पूछ रहा हेलो था। वैभव, वेलकम टू अपने स्ट्रीम Easy। 1900 का हीरो का है। हेलो, हाय प्रतीक, वैसे मुझे हाय टॉक्सिक क्यों बोलते हो नितिन, हाकर भाई? हाय जोकर। क्योंकि तू हेलो गाइस, टॉक्सिक वेलकम है। टू हेलो स्ट्रीम, नॉट माइन, दिस इज माइन। पूछ रहा है। Like in a good way ना? वो तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर है। जैसे लेना है ले। ऑन अरे यू वाह। ब्रो, ऑन यू। I think I'm very humble bro. एकदम, मतलब आप ही हो नेल्सन मंडेला के बाद घर पे हो? यस यस। हम्बल एकदम। Thank you. कैसे कर लेते हो आप? बस सीखा है हैकर से। हम लोग को बम्बल पे बहुत मैचेस मिलते हैं। या ब्रो बम्बल में अभी 2 साल है उसमें। 16 साल का है वो भाई, क्या बता रहा है तू? अरे तो क्या हुआ, फेक एज डाल के कर नहीं सकते क्या? हाँ? क्या बोल भाई आप तो बहुत अच्छे राह पे चला रहे हो इसको। I think me and Kali should make a team bro. Yeah, dude. Me, Kali, hacker on Jet. I'll play support. रिएक्शन रिकॉर्ड करो। हाँ भाई, ये देखना है मेरे को भी। भाविन भाई ये वेंकी के साथ खेलेंगे तो क्या होगा? भाई हम अच्छा। खेले तो थे। हेलो I 5-starred with him bro. हाँ उस दिन उसने अपना सर मार दिया तो वही ना। Scrim. मैंने क्या करा था? कुछ नहीं। मैंने 30 मारे थे just saying. Note full discipline. वाह। भाविन भाई was like you're the future of मुझे India. बड़ा मालूम है कैसे यूज करते हैं भाई, सब पता है, ऐसे सबको काली को पता बोला रहता था है। उसने। बम्बल इज फॉर ये एवरीवन। डैम्सी सर्वर में कैसे है? हेलो तेरे से पहले से हूँ, चुप कर। ये टॉक्सिक है देख। स्ट्रीम कर रहे इधर, ये टॉक्सिक है याद देख। रख ले। तो ये कैसे बोल रहा है? ये टॉक्सिक है। वैसे बोल रहा हूँ तेरे को। डैम्सी भाई थोड़ा हेल्प चाहिए, इधर मिलेगा क्या? हाँ बताओ बताओ इधर क्या चाहिए काली भाई? दिल्ली में नहीं, डोंबिवली में चाहिए। डैम्जी स्ट्रीम कर रहे हैं। डम- हाँ हाँ समझ गया। डोंबिवली में थोड़े कॉन्टैक्ट्स को मने थे, हो सकता है कुछ। ट्राई कर सकते हैं काली भाई। मतलब यहाँ से वहां भिजवा सकता हूँ मैं, चाहिए तो। नहीं। क्या भिजवा रहे हो भाई? भाई वो- पीसी? कुछ नहीं भाई। हाँ हाँ पीसी ग्राफिक कार्ड हाँ, हाँ, की PC नाइस ब्रो। वो ग्राफिक कार्ड की बात हुआ है ऑलरेडी। हाँ हाँ। खाली वैसे भी बहुत टाइम हो गया ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करके थे। Nvidia 420। क्या है, मेरा अच्छा पीसी है। मेरा पीसी किस 70 है ना तेरा? मेरा पीसी किसका है देखना है? तो किधर है? स्ट्रीम देख मेरा। देख रहा हूँ। इस पीसी प्रॉपर्टीज ये 5-3 हो गए भाई। वॉकआउट वगैरह कब होगा साहू का? इधर देखने से तो साओ कितना नाम किधर भागेगा। दिखता है? पीसी का नाम किधर से दिखता है? Can you guys not watch on Loco? No, we cannot watch on Loco. Why? अरे करण बोल क्या? मत, तू बूट कैंप से पीसी उठा के लेकर आया है। स्पेक्स दिखा मैं समझ जाऊंगा, तेरा घर का पीसी का स्पेक्स पता है मेरे स्पेक्स नहीं है, मैं चश्मा नहीं पहनता। भाई अबे को। शी भाई करण। कौन है 16 साल का इधर ये बताओ?
Shit, 16 ये भाई। 5 साल का है ये मेंटली। एटलीस्ट यहाँ दबे gas लो। मेरे को छोटा होना है भाई, क्या होना है? छोटा कौन है? छोटा होना है, 16 साल का बनना है वापस मेरे को। क्यों कोई भाई? नहीं। जब स्कूल के साथ स्क्रिम्स करोगे ना गांड फट जाएगी। चलेगा भाई। क्या बोल रहा है? हेलो हेलो ब्रो, हेलो आई एम Mr. वेंका ब्रो। Sagni। Minimize इधर the मेडल screen. वॉच पार्टी चल रही है। मैं मेडल में नहीं हूँ। एक्स मेडल, फ्यूचर मेडल। या डूड सब लीक्स इधर ही हो रहे भाई यार सब इधर ही बता दो भाई। डिस्कॉर्ड पे। I'm gonna be playing Omen। ये थोड़ा ज्यादा हो गया अभी, भाई मेरा Omen अच्छा है यार। ये थोड़ा ज्यादा हो गया अभी। ट्रस्ट नहीं है बस आकर भाई मेरे Omen। मैं काली को एक बार ओमन खिला लूंगा, तेरे को नहीं। क्यों? भाई नहीं भाई, बेटर हो मैंने भाई वेंका भाई। थैंक हेलो यू। एक्सकैली वैसे- न्यू टीम मेंबर। हेलो सागनिक, माय ओल्ड टीम तेरा में कॉन्ट्रैक्ट आ गया खाली? हो गया, भेज दिया मैंने। हेलो 7C सागनी। मेरा वो बार्गेनिंग चल रहा है सैलरी का। अच्छा बार्गेनिंग चल रहा है क्या? बार्गेनिंग कितना? बार्गेनिंग कैसे Negotiation में। क्या क्या कर रहे हो मतलब तू? बार्गेनिंग में बट तू कम करा रहा है कि बढ़ा रहा है? मैं वो ज्यादा दे रहे हैं तो मैं कम करा रहा हूँ। ओह समझा समझा। इतना पैसा टैक्स फिक्स देना पड़ता है ना बाद हाँ में, अभी ये वो प्रॉब्लम हो जाता है। बराबर, अभी ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है, सोच समझ के Yeah. सब करना पड़ता है। देख ले, टाइम ले अपना। मेरा तो क्या, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का कुछ है ही नहीं लेना देना। भाई मैच शुरू करो यार, क्या कर रहे लोग? प्रेडिक्शंस क्या है? 2-0 VLT। यार VLT नहीं खेले खाली, वेक अप ब्रो। ओह सॉरी, when does Wake up. VLT play? VLT just watches। VLT just watches जो now। दर्द में बोला है ना सागनिक ने। इतना बड़ा forehead है, इतना बड़ा। भाई, यार देख लो क्या, लोगों पे देख लो क्या हैकर, क्या देख लेते हैं लोगों पे। फक इट ब्रो। लोगों पे चलो, हो गया वॉकआउट। भाई कितना अच्छा किया है पीछे का ये लोग ने, प्रोडक्शन हमारे कितना जाने अच्छा के बाद ही किया है। होता है भाई। ये तेको किधर दिख रहा है? लोगों Mouse for comparison. भाई कितना अच्छा किया है प्रोडक्शन पीछे अभी। अच्छा इनका ओ फोटोशूट भाई। हुआ था ना अभी। भाई ट्रॉफी देखा भी नहीं VLT ने, और ये हाथ लगा रहे ट्रॉफी को बाकी टीम्स। भाई मत रे भाई करन, विम मत भाई कर। टॉक कर रहे हैं भाई। सेल्फ साबोटाज मत कर। हो गया सिर्फ सबोटर अभी मत करके। लाइव क्राउड है क्या, देखा शायद से। इस क्राउड से मेरे को याद है, एक सेकंड ओबीएस रिस्टार्ट करना था मेरे को। कौन कौन गया है कर भाई वहां से? कहाँ से? अपने उधर से। से हाँ कबीर गया बस। बस। यस। अच्छा दिखा दे क्या लोगों भी? ओह RNT पे एक बाइंड। ऑफ कोर्स, हो गया? कोर्स इज गोना बी फन हैकर भाई। ऑफ कोर्स मैंने बोला है बाइंड लोटस हेवन या तो स्प्लिट। ब्रो लिटरली वही हुआ, व्हाट द फक। बाइंड लोटस हो गया। हेवन अरे। या स्प्लिट में से जो आरएनटी बैन करेगी। अगर आरएनटी ने RNT ने हेवन बैन कर दिया। हेवन बैन किया तो स्प्लिट पेक बैन करेगी पेक। Ban ठीक ना? होगा टीआर से। TR असेंट भी- बैन होएगा। टीआर क्या खेलती है बात- भाई, स्प्लिट अच्छा खेलती है। हाँ 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 बाइंड pick इंटरेस्टिंग होगा। होगा हैकर भाई। बाइंड इज गोना बी फन। यस ब्रो, They just need to pray. They don't have arena on the other team, bro. यस ब्रो, दे हैव नो क्लू। भाई हैकर लोगों पे देख रहा तू? नहीं 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 भाई मेरे चालू ही ये नहीं हो रहा देखा। है पता क्या? नहीं स्टार्टिंग भाई, सून, starting soon पे अभी सून छोड़ कभी है दिया तुम भाई। लोग यार। लगता है यहाँ तो production पहला वो राउंड करना हो गया भूल भाई। पहला राउंड हो गया YouTube पे भी स्ट्रीम हो रहा है। स्टार्ट होएगा आई गेस फिर इधर। चुप हो जा भाई, स्पॉइलर मत दे अभी। हमारे स्ट्रीम पे आ और बैठ जा शांति से। ये Have patience. माइक क्या हो रहा है माइक को?
आपका वाईटी वॉचपार्टी अभी भी जिंदा है। How is such a cutie भाई? हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ, I always love Paradox entries. Bootcamp, yes, This I'm one was a at little. तो मैं भी YT पे देखूंगा फिर। क्या हो गया? In the split before, but I guess कहाँ he होता है wants to YT start पे the playoff Nordwind in a very Gaming? ड्रीम ही humble चला way. देना इनकी। I'm pretty sure he will make What's up. up, for at it. Dombey? वहाँ पे Yes. delay रहता ना? In Dombey, in Dombey. Now, True In Rippers Dombey. and Revenant Esports, on paper, both these teams have their strengths and weaknesses, right? True Rippers are a very YouTube पे unique delay team, क्योंकि especially लोगो when it comes to exclusive pistol है ना। and अली भाई rounds. अपने रेडार पे ही कैमरा डाल दिया। Revenant, let's Karo, just say Karo. they hit you with a sledgehammer. That's the kind of team that they are. And they've had Wait, quite YT a पे lot of walkout भी changes नहीं हुआ? throughout Yes. the split as नहीं, well. late I mean, किया in है split 1, when True Rippers started off, they were one of the strongest teams on Pearl. पक्का इस पे देखना है क्या? And Revenant Esports, on paper, both these teams एक have second, their कुछ strengths setting and करना है weaknesses, थोड़ा। right? True Rippers are a very unique team, especially when it comes to pistol and aim rounds. Revenant, let's just say they hit you with a sledgehammer. That's ये what- OBS that's the ऐसा क्यों kind of दिख रहा team है? that they are. And they've had हाँ, ये quite कैसा a कर lot रहा of है? changes, Motherboard डाला है क्या कोई? throughout मेरा the वाला? as well. अपडेट हुआ हाँ। था। Split 1, when नहीं, True Rippers started OBS off, का they इंटरफेस were तो one of the चेंज नहीं हुआ strongest अभी। teams on Pearl, and then they started to just insta-ban Pearl Hello, and pick chat. Lotus instead. वाईटी Now, में I स्टार्टिंग wonder if Revenant is स्टार्ट हो ready चुका for है, it. देखो तो Revenant have played Lotus in the past, and they were देखो super मैं एक्सक्लूसिव valorant, क्रैट they की were कमेंट्री quite भी तो है stable. भाई, But of course, मेरे को they तो weren't दिक्कत able to नहीं है win all मन्नू that के much. कमेंट्री On the से। other hand, Revenant don't need to win Lotus because they have Bind as one of their core strengths. Now, the thing that I want to see is whether these teams ban each other's stronger maps or whether they go for their own comfort bans. I mean, Oh, once boy. again, you need to take another thing under consideration is that in the league stage itself, Revenant went through a group that was filled with monsters, absolute monsters. भाई, Group A, easiest you've got prediction, teams भाई। like OG coming in, Reckoning Esports coming in. Every single team in that group was monstrous. On the other hand, True Rippers, I mean, a lot of people would agree with me, but Group B was a little bit lightweight, you know? That's why True Rippers, they had quite a phenomenal journey for themselves. वेंकी, So one thing is for sure, Yeah. that Revenant क्या ये have लोग been through a first lot of pistol different वही things, चीज so there's a करेंगे? chance They have हाँ। been forced for the toughest battle in वही करेंगे brother। They do move on forward But वो as towards the defense map वाला leader. बोल रहा हूँ मैं, The attack first two वाला games तो are अगर very RNT ने easy. अच्छा The react pick कर is लिया, gonna be Bind, which is their strong तो suit. जीत ही हो जाएगा। As always, they're gonna stick to Bind, but then you go and move on a forward and you take a look मुझे at लगता है Lotus कर ही from लेंगे वो True रिएक्ट भाई। Rippers. आरएनटी It's जैसी quite टीम तो ऐसे interesting, नहीं है but I भाई, wanna see them perform on this one. बैठे रहेंगे साइड पे। Yep, I'm actually pretty sure the True भाई, Rippers गोभी can भाई give center में a बैठे हैं। lot of new stuff. to us 148k on watching Lotus. in first They've always official been match very है unique on this नहीं one. है The way watching they spread out on Lotus is also quite BGM phenomenal. man On Bind, on the other hand, Revenant कभी Esports. भी- तू they've practice कर रहा है क्या always been BGM में dominant, so I कभी? wonder if True Rippers can figure it out. नहीं जम रहा है ट्राई किया मैंने अरे, It's not गिव अप कर दिया मैंने 2 दिन में on Bind, but नहीं नहीं नेवर गिव मैंने दो किल्स मारा मेरे को पता नहीं बट बॉट्स को मारा कि असली बंदे को मारा a मैंने little different over here. खुश हो गया था मैं मार के बट Could have gone for some other Trophy map. किधर किसके रखा साथ है? खेल रहा था? Pearl. सोलो It's a map that True Rippers also Oh, are not wow. comfortable on anymore, so even if they let it stay afloat, I think True Rippers wouldn't play it regardless. That could have been a risk they Bye. took, but it's fine. The current map pool, I'm actually strong draft. Exactly. Move on forward towards the agency of the map of Pine. I don't expect any sort of change, especially from Revenant, because it's their map pick. Yeah, speaking about Pine, and you said how unpredictable sometimes Revenant वेंकी, is ये supposed to draft be. के बारे में आपका क्या कहना है? Aggression also adds on a lot of unpredictability, which Free as fuck bro। भाई मेरे को साइफर पसंद नहीं है भाई बाइंड में नहीं ये लोग एक टाइम था साइफर खाली, इज ओनली गुड विद लाइक योरू। एक टाइम था खाली। साइफर और रेज यू ऑल T1 सेटअप या मैन, yeah man I remember everything only a cypher race a अबे नहीं, अभी उसकी ट्रिप्स का लेंथ बढ़ाने के बाद ठीक है, नॉट अ but yes hacker given the map You're right. Paradox is, he will literally just now यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेटअप्स रख सकते हैं ना अगर, बट इनका कॉम पता नहीं। But the rest It's of like them, pick chamber and yeah, you W key। probably try to cut him off from the backup. but actually double damage का सामने अच्छा है cypher Flash. Start things off with. They probably have got some sort of info that there is a man in close quarters. Very good, Paradox. Nice shot. Exactly does so. There's alert coming in soon enough for the bathrooms area as well, but it's not going to matter as Josh is How going is to his clear YouTube things stream out. ahead of mine? Hazen instantly goes for a TP with his teammate. It's a 3-on-2 scenario. 3-on-3 actually. But Revenant Esports so far, they've also got the stroll on the site. They've got the site control, but look at this. 32A. This is exactly what we mean when we talk about aggression. Good Oh my reaction God. man All the way good from reaction the man spawn towards आकर भाई। the opposite side, which is the L B लग गए side. इनके तो। And now True Rippers, they're gonna have no chance of Not countering yet, this bro, one. not yet. I've said this before in different matches of Revenant Esports, and I will say it again. This whole से कैसे रे जो क्लियर करके है वो साइड chase. प्लान नहीं करके इसे As प्लान soon कर as True दी। Rippers jumped into the TP towards the भाई bot area, यही करना होता है Revenant made a height towards the B side, and now that they jump into is the hookah once again. भाई, Revenant will जोश का have देखना to पोजी। somehow hold on.
You can see the flank that Josh is trying to ओ put on. भाई ये Trying to कहाँ जा backstab रहा एक है ही मार पाएगा backstabbers, जोश and लग he रहा है। has to play on हाँ, timing एक ही now निकाल because his देगा teammates are in imminent Frenzy danger. है, दो लोग मारेगा, The दो। first man drop. मेरे को दोनों का Instant लगता death है disrupt. तीनों Could have 4K predicted one more person coming in from CT as well, and that's तीन मार दिया। no way they can भाई survive Josh साहब। has. अरे बाप रे Oh, अरे this बाप man रे just makes it look so Crazy. clean with the Josh Bhai frenzy. is here to Even play. though in long ranges, it does not work Crazy, out that crazy. well, but still the strafing and the burst perfectly utilized. Josh is playing to his strengths and flanking the flankers itself. Nicely done by Revenant Esports. Just आर्यू amping भाई up बस the एक मार के aggression पीछे हो right off जाते the तो bat. मजा आ जाता। Instant हाँ aggression, you know. Revenant Esports knew that in some अरे way, वेम भाई shape के or लिए मुश्किल हो form, गया ना, True वो मर Rippers गया तो। will हाँ, also try वेम के to लिए have मुश्किल a हो गया। very fast कुछ नहीं कर pistol सकता round. था They've मैं। always done that in the past as well. Then as soon as they heard the teleport towards bot, they knew that बट they टेक्नो can't भाई का proceed शूटिंग towards the रूटीन क्या side है? anymore. एम रूटीन क्या है टेक्नो भाई का? Especially वो भागते with रहते हैं। Paradox जय श्री राम। dying, they knew that नहीं मतलब शूटिंग प्रैक्टिस होता है कि मूवमेंट्स प्रैक्टिस होता है सिर्फ And उसमें? even then the नहीं aggression नहीं didn't वो stop. The करता है reverse करता है, flank, डेथ मैच it's करता है। beautiful. ओके ओके। This time though, Revenant Esports are making no secret क्योंकि about एक ही the बंदा fact लगता है मेरे को towards the पूरे side because of this. कम्युनिटी में जिसका शूटिंग वियर्ड है थोड़ा, बट मारता है कुछ भी करके। Is that gonna be हाँ enough to हाँ stop बहुत Paradox? टाइम से उसका ऐसे चल कॉर्ड में देखा भी ऐसे movement? Definitely not. He will overwhelm हाँ all देख of them. मारा, वापस एक मारा। I mean, considering the opponents. अच्छे लोगों का वही तो स्पेशलिटी है भाई। भाई मेरे को भी बच्चा वो बनना है पता है वो BGMI से आया इसलिए उसका मूवमेंट इतना शिट है। What the fuck? Wow. भाई तो समझ के बोलना वेंकी। अबे लाइक अगर तुम फोन की गेम खेलोगे और कीबोर्ड पे होगा तो मूवमेंट गंदे होगा ना। Yes, yes. अच्छा अच्छा कवर अप किया, बट अरे I love BGMI bro, I play it every time Conqueror. With the help of Ching, they get the frag done. क्या? छुपने की ये कोशिश कर रहे हैं। उधर। First of all, but ये it's सर वही ब्रिमस्टोन लेके। What? हमारी सपोर्टिंग TR bro, Goes TR। on to Dota bro. 200 किलो का आदमी एक दीवार के अंदर छुपने का ट्राई कर रहा है। डोमा सनी के पीछे छुप रहा है। अरे भाई। वैसे ही हो गया। there though. But now finally, as True Rippers, they're gonna get their hands on the better weaponry here. Vandals and Phantoms on the board for them. Let's see how they're gonna be able to stop the aggression so far. Revenant Esports is able to bring on the table. वेरी नाइस चिंग। क्या कियो? यस वो गया हो। अच्छा आ गया। वो ले ले। मिल गया मिल गया। Always recover, you have to wait a little. So that kind of slows down Revenant Esports, you know. Probably the only thing that can slow Revenant down themselves. And never mind, Ching will not get to do anything at all. Wimp comes in, instantly executes him. I also like this. How you guys so भाई ahead instant भाई? TP It kind of enables them to crunch spot every now and then. And कर दे भाई, नेड कर दे, स्पेक्टर हो गया। Wall बंद। pushed on from both the sides. Paradox also aggressive. Nice. His back सब jagah घुस रहे हैं सब। Yeah. Look at Techno. टेक्नो ने TP क्यों कर दिया? Can move out. Can do a lot there. Blackhawk going for the plant. It's a 2-on-3 scenario. True Rippers clearly. एक भागते भागते मारा इसने वापस। Techno is on the other side. भाई विचित्र है ये बच्चा। कुछ है भाई उसके कीबोर्ड में। ये तो मैसिव नर्फ होने वाला है 6.11 पैच में। हमने इसको ये बोला था। हाँ हो गया, खत्म हो गया वो। अभी रन एंड गन होने नहीं वाला है कुछ। डिसरप्ट का एम अच्छा है काफी। उसको देख के लगता है ड्यूलिस्ट वाला एम है उसका, पता है? एकदम स्ट्रॉन्ग। Yeah. Where are you guys watching this by the way? YouTube. What's up, Yeah, what's up, YouTube देवा इतना- भाई? What setup do True Rippers put on the Did you 2x it? 26 मेरा I mean, for a मैच। second I thought that they will successfully pull off the crunch to मेरा दिन नहीं करा बे, 26 मारा मैच MVP फिर भी टीम हार गई। But Paradox, he's क्या so करे अब good यार? on this ace side. He's Life is not manipulating fair the sometimes. entire forces over here by himself. I mean, if it wasn't for him, then this execute from Revenant would have stopped in its tracks before it even had the chance. How was to your stop the day? starting blocks. 3 बजे उठ के I like the स्ट्रीम crunch चालू किया also मैंने from सीधा। them. I mean, this Viper wall that's ना been क्या? put up by Wimp, it makes the camera that RU has so much more difficult to detect. But Paradox is just Hey, Para. unattainable, unstoppable. Understandably so, because True Rippers don't have the weaponry this round, so these kills might not seem as. अगर impressive पैरा as they चप्पल really कौन सा are. पहनता रहेगा? पैरागॉन। Exactly. Emerge. मेरे को एक्सपेक्ट करता।
जैसा इसने पहले मारा था ना जोक मैं को एक्सपेक्टेड था। भाई कितने अच्छे लोग से थे। भाई तू पता है ये कौन सा ये हैकर एनिग्मा में था ना तब ऐसे जोक्स मारता था। मैं वीएलटी में ऐसे जोक्स मारता था, कितने हंसते थे देख सागने को पूछ। फिर इवेंचुअली डिसबैंड हो गया वीएलटी मेरे जोक्स की वजह से। काइजन भाई ओ भाई ये तो फोर्टनाइट खेल रहा है भाई। ओए किंग भाई डेथ मैच कर रहे हैं। और नाइस शॉट। ओरा भाई CS2 में, हाँ CS2 में सोचा है मैं और मैंने तो बोला ही था रेवरेंट जीतेगी। कांग्रेस ब्रो। रुक जा भाई अभी 4 ही राउंड हुए। मेरे को भरोसा है। बहुत ये लोग अभी एक्साइटेड। ओवरहीट करके एक राउंड थ्रो करेंगे, मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। जी नहीं हाँ प्रेडिक्शंस क्या है सबकी? प्रेडिक्शन बताओ ना खाली भाई, प्रेडिक्शन क्या है? 2-1 आरएनटी। आरएनटी बोला था मैंने। मैंने 2-1 आरएनटी। मे बी 2 सेकंड लोटस जीत जाएगी टीआर। लोटस अच्छा है टीआर काफी। 2-0 आरएनटी। 2-1 It's 2-0 आरएनटी dude। हाँ। 1 TR। थर्ड मैप क्या स्प्लिट ना? गॉड गोपी Split AS। नाइस वन पैरा। वो भाई एंट्री तो है। ये क्या टीम, क्या है ये? भाई ऐसा लग रहा है अब डेस्परेट हो रहे भाई क्या कर रहे हो लोग? ये वाला टीआर ऐसा लग रहा है जब भी वीएलटी के सामने खेला था वैसा वाला टीआर लग रहा है। पर VLT मर रही थी ना। नहीं जो फर्स्ट इसमें खेले थे अपन तभी का। ग्रुप स्टेज उसके बाद हारे वो तो जाने दे, बट क्लूलेस वाला। क्योंकि बहुत पहले मर गए थे वो लोग दोनों, इतना लेट टीपी। तू समझ रहा है ना वेंकी, सेम चीज कर रहे हो लोग। अरे बट ये तो क्या ही कर रहे, साथ में भी नहीं कर रहे। बट नीड नहीं है ये चीज की, अपन ने भी पनिश किया था ये लोग को। अरे बट कम से कम डॉग करके तो करो। फिर काइजन को भेजो ना, ये टेक्नो अकेला क्या टीपी मार रहे? फिर खुद को फ्लैश कर रहा है उसके बाद। वो भी टीपी मार रहा है बेचारा। चलो भाई कॉल में कौन है? कॉल में ये लोग हैं, इतने लोग हैं कॉल पे। बड़ा डेस्परेट हो रहा है ये, राइट? ये सब लोग तुम लोग भाई लोड हो रहे क्या? अभी तो अटैक में लगने वाले हैं आकर भाई। टकले तेरी स्ट्रीम पीछे चल अभी रही तो है। अटैक में असली लगने वाले हैं। हाँ। नहीं 2 सेकंड ही था, 2-3 सेकंड। Definitely should be something that would give some sort of sense to True Rippers on what exactly to do against Revenant Esports. Considering Revenant is an aggressive team and all the attackers, you need to be sort of aggressive. It just adds on a little bit of plus point for Revenant Esports. But True Rippers, they need to be a quick one to हो गया भाई। opponents are trying to execute here. डीसी पंडे हो गया। ये हॉल स्मोक दे रहा है कि नहीं इज द क्वेश्चन। बबल ऑन करो डिस्कॉर्ड का, देन व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड हु इज स्पीकिंग। ये क्या होता है बबल? इधर है वो सब। ओवरले बोल रहा है। इधर से आता है वो। डिस्कॉर्ड में रहता है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जा, नीचे जा, ओवरले में रहता है, देख गेम ओवरले। फिर उधर क्लिक कर, वो ऑन कर, इनेबल इन गेम ओवरले। ऊपर सबसे किया। ऑन तो कर। किया। For now, it's just Okay. a waiting मिनिमाइज game. कर दे। So, इसमें थोड़ी दिखेगा, वो गेम के बीच में दिखेगा ना सिर्फ। नहीं वो नॉर्मल भी दिखता है। नॉर्मल भी दिखता है। हेलो disrupt down नहीं the दिख stream. रहा This is what I was exactly about to say. If you want to make या तो ब्रेव को एज down, आपके लिए you gotta ब्राउजर को push अपने up एज अ on their गेम ऐड कर। faces, and this time it works out. ओह You're gonna have नाइस at किल। least some sort of map cover, वो किस map side करता है? control in the hand. You will know अब मेज पंग where यूज कर रहे हैं आकर भाई, देख रहे क्या हो? है भाई? and that's when you will be able to at least capitalize and भाई take क्या advantage. कर रहे हैं ये? This time he's got Josh's as well, just closing out the deals against पंछी the बन enemies. उड़ के फिर कर रहा है, ऊपर उड़ रहा है बस। All by himself, and Wimp was able to find one. आप लोग देख किधर रहे हो? मेरा इतना पीछे क्यों है? Weaponry, the chances of them winning this round are quite ये high. राउंड डुएबल तो है ये Not लोग this के fight लिए। plan just yet, and this might just adds on onto the problems. a अरे little bit more. Wim! Comes in a little bit too close to comfort, but eventually shuts him down as well. पैरा भाई। पैरा, of course पैरा। Looking to turn the tide in his team's favor. Jesus, what is this guy? Paradox single-handedly rescues his team from sudden devastation. Of course पैरा। Oh my god, that's a stylish one. Disrupt didn't even see his Para shoulder bhai, before too he got good. his head popped. भाई What a साहब recovery from Revenant Esports. I love the way how True Rippers approached this round, you know? They stopped doing that bath crunch which wasn't working for them. They acquired the gun by pushing out a B long.
And then they kept the gun alive by making sure that पहले मैं VLT का शेड्यूल दिखाना जरा दिखाता हूँ ये गेम के बाद दिखा रहा back as well before he got traded out. So up until that point, everything was going so तो well. हो रहे हैं भाई ये लोग तो हेलो Along with the Seekers, हाँ ये सेटअप मेरे को पता है। ये बॉक्स पे अभी इसको बिठाएगा, इधर से शावर्स देखने बोलेगा, ये शॉट अल्ट करेगा। हैकर भाई ऐसे कौन सी चीज है देखेगा वो सब उसने जाना कैमरा क्यों लगाया उधर? तेरे बंदे भी है उधर। हैकर मेरे को एक ऐसा सेटअप बता जो तेरे को नहीं पता। अरे ये देख कुछ आंसर ही नहीं दे रहे, बस सब पता है। इसका नाइस रे आर यू टेक्नो किधर जा रहा है भाई? हैकर भाई काम डाउन, हैकर भाई गुस्सा मत हो। That's what I जय always श्री say राम about बोल के Revenant आगे is चला गया भाई वो। Chill, fam, chill. It was a confirmed B hit. Are you क्या कर रहे हैं भाई? Fuck. started to get kills with the tripwires and This is not looking good for TR, bro. This is not looking good at all. further confirmed the presence of Revenant all Hey man, actually. despite knowing that they are coming. Despite seeing this execute from a mile away, True Rippers cannot hope to stop them at all. बट ये हाफ ये लोग स्ट्रगल किए थे, याद है ना भाई? नहीं ये हाफ नहीं करे थे। 7-5 स्विच था ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग? 7-5 वो भी दो हम round जीत रहे थे। नहीं हम डाउन थे 7-5, बट हम लोग पिस्टल हार के भी 7-5 किया था। इसके हमने बात कभी का मैच का बात कर रहे हो तुम लोग कुछ? हम लोगों ने लोग को स्क्रिम किया था टीआर को। बट भाई वो स्क्रिम क्या ही था, मैं रैंक की तरह खेल रहा था भाई। रीना लेके 40 मार दिया। तो वेंका मेडल में आ रहा है क्या फिर अभी? नहीं या कंफर्म है। टीम था, हाँ अभी कल अनाउंस हो रहा है। रैंडम टीम बनाया था, रैंडम टीम। So True Rippers, they were able to successfully save 2 weapons right there, but the problem is still they're struggling massively when it comes to सगा बरा यस सगा बरा एकदम सगा मुझे मुझे तो लग रहा है बट जैसे आरएनडी का प्ले स्टाइल है ना, ये तो डिफेंस पे और गंदा पिटने वाले हैं। Paradox is sitting at 12 frags right now. That is just nuts. डिफेंस में ये लोग भी मार खा सकते हैं, बट पारा लेगा ना स्केल कर करके I don't think I've स्पेस। seen such a high KD ever before. Hayes and देवेश मोस्टली can't help him out. Now he's just hoping to buy Be- some be- time be- with the ball. Revenant just rushed right through. ये कौन सा पुश था भाई? टेक्नोगिरी हो रहा है सब। Yeah, the stim beacon and they just पैरा भाई को मिल गए। पहला भाई को पता है। Jesus. पैरा भाई को फ्री किल मिल रहे हैं, बड़े मजा आ रहे हैं उनको। वो दोनों देख कैसे भागे जॉश और चिंग। That's the this Tupac is treatment. just this is you think about it and you wonder how लग does रहा it है even कि work team- out. This team is Oh. W inside a भाई। tournament. Inside an एक official teammate से, Riot अरे, tournament where it matters स्ट्रगल कर रहे so हो लोग, much. अभी कुछ There's so वर्क नहीं much कर on रहे the हो लोग के stake. लिए। कैसे But आई they're एम still गुड able to pull off आरपी। strats like that, and then you wonder अरे जो चीज स्क्रिम में कर रहे थे exactly कुछ is नहीं going कर रहे on with भाई। the opponents. And as I said, वही होता है रे मैच में। picked up this अरे point बट as well, as I said, ट्राई भी तो कैसे करा उन्होंने, वो भी तो देख। वो शावर क्रंच, शावर क्रंच पिस्टल राउंड में करा था वो भी ढंग से, और वो भी रिएक्ट होके चल ठीक है। वो लोग वही रिएक्शन था बैक साइड से बी से ए से बी भागने का। ओए Throws in that rocket and surprisingly it doesn't get anyone. अटक गया। ये आर यू स्पैम कहीं और क्यों मार रहा है? अरे क्योंकि वो बॉक्स Box है वो, जिधर पैर अटका है। And the entirety of halls. So now Revenant have all the area they need to get that plant down. क्या चालू है And Josh has भाई? the elevation. He's got RU cornered over there. जोश RU भाई मारने वाले क्या? help him out, and there is no backup मारा coming. भाई, एक और मारेगा। Incoming from here is the Grim Reaper. बहुत बढ़िया। And Josh continues to ये fire के देख on all cylinders. ब्रो, अरे अरे बाप रे, अच्छा फिर से टीपी किया। आई डोंट अंडरस्टैंड पिटाई हो रही है सोलो लोगों। टीपीस भाई। क्या चल रहा है भाई ये? भाई ये तो लग रहा है Those are desperate moments. Absolutely. टाइम आउट दिस इज जीजी गो ले नेक्स्ट। लिया। Doesn't do justice हाँ, to क्या? the amount of violence we are seeing over here. Hmm. Cannot भाई wanna ये सब shamelessly नहीं लिखना plug है Planet अर्पित। superheroes over here, but this is like a bunch of अरे अगर superheroes रेस fighting याद आ रहा है, against a मैं मेरे को भी small याद आ रहा है। being. क्या क्या कर सकते हैं अभी? That's what Revenant feels like right now. याद ही कर Apes, सकते हैं अभी, सिर्फ और कुछ कर नहीं flying, सकते। Probably laser vision as well. Hey, don't forget back- टीआर का आईजेल कौन है? ऐसा लग रहा है अभी कोई नहीं है आईजेल लोगों Yeah, का। I mean, True Reapers kind of need some sort of where will they find it? ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड 4-1 करके जीत रहे हैं भाई। At least that's what it seems like. I mean, 9 Reality lost to this. माइक म्यूट करना, तेरा आवाज आ रहा है। Now, right here, if they're able आवाज आना ही चाहिए। आवाज आना ही चाहिए। तू भी है मेरे साथ। मेरे को ये सेट डैमेज खाली है। मिल रहा था, तू भी खाना चाहिए साइड डैमेज।
let's see what Revenant Esports Side क्यों खाली है? stack for us, and let's see वो what काइजन ने Rippers got स्केल stacked करके for बैठा us. है ना। The judges there in the close quarters, but it's in a और complete काइजन wrong राइट से direction. नहीं, वो So लोग जा ही Revenant नहीं are रहे gonna have a free भाई। ये लोग 5 पूरा शावर चले ये लोग गए का बाप पूरा रे। डिफेंस टीपी पर है और ये भूल ही गए मैप में टीपी है। Judges also given away, so now they know no need to push in the close quarters because Kaysen's got it just to strike you down. They'll probably try to play this one safe and sound. ये लोग चिंग को ढूंढ यार रहे Ching finding Timing. all the time in his opponents. Oh, no. And then Revenant Esports once again, it's the chain effect. One player falls एक down, round the भाई। rest will follow up. एक There's no hope. No semblance of a comeback. लोग के कुछ प्रॉपर सेटअप्स नहीं लग रहे टीआर के, मतलब रैंडम खेल रहे ऐसे लग रहे कुछ। I love how Brand- Revenant was अबे supposed to रिएक्ट हाँ। करने का देख रहे हैं वो लोग अभी। Hold on, there is still some hope. Disrupt is getting quite गोपी वो भाई RNG का गेम भाई खेल को रहे हैं kills अभी। चाहिए थे। time left. स्विंग इट बेबी। So he can probably take some weapons away from Revenant Esports, but what even is the point of that? अरे 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 इस Revenant have so अच्छा much टाइम money, नहीं है, ठीक है। टाइम sitting on नहीं max है। credits. Even taking weapons away from them doesn't really help your cause. But okay, one thing. भाई 13-0 तो लग रहा है ये। In this round is how Revenant just नहीं, 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 एक round बट टीम में नेवर लूज टू एनी टीम इन इंडिया। put in plenty of utility, right? And वो it's not like नाम में प्रॉब्लम है। नॉर्मल वीएलटी रहता तो मे बी अलग रहता रिजल्ट्स। वो वीएलटी जी क्या है पता नहीं। in the general vicinity, but doesn't tell you वीएलटी how. जी की वजह से ये सब कांड हाँ हुआ है। उसके लिए हार्ड है। हम लोग तो अच्छे खेल रहे थे। हम लोग तो अच्छे खेल रहे थे बट नाम में थोड़ा दोस्त था। Inside, right? They VLT don't G, see a lot of True Rippers players, but they just नो वन नोज अबाउट वीएलटी जी। वो जी गू हो गए। हाँ वो जी थोड़ा जी फॉर गू हो गया। That's what you call Revenant Esports. Somehow would always भाई पहला विफ देखा है मैंने पूरे 10 राउंड में। At least they use the तो सब शॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं लोग। As I said, if they're able to install the brakes, it's all gonna matter. अरे भाई पहली बार पैदा ऑफ गार्ड मरा है। To counter that initial हाँ hit, Revenant Esports will start. चलो एक राउंड तो मिल गया। अब इतना राउंड जीते तो फिर थोड़ा करना पड़ेगा। वेरी क्या गुड मिला? वेरी गुड वेरी गुड। ये लो गोपी ब्रो टू स्ट्रॉन्ग। अरे चलो, इस वन में भाई निकाल heal लिया। करो पट-पट। 2v3 Winnable है। अरे पूरा करो भाई heal। हाँ यार ये थोड़ा अनफेयर है। हो गया ना, खत्म हो गया उसका हील पागल। ओह And True Rippers deliberately did not go for the teleport. अनफेयर है। अनफेयर है। अनफेयर है फ्लैश भाई। पिक करो इस। Before they make any एस ये तो भाई ओह ऑलमोस्ट। टाइमिंग अभी नहीं अभी नहीं। अरे नेवर माइंड। Blackhawk doesn't just neutralize. I the shot भी पिक करेगा देख। राउंड जीतने वाले थे रे। That is the जीत गए स्विंग जीत इट गए। बेबी स्विंग इट बेबी इट्स गॉन टू फार। गरज नहीं था अभी ये वाला। 10-0 ऑफ कॉन्फिडेंस। My heart was beating so कॉन्फिडेंस fast. वो था जब ए स्मोक में से फ्लैश करके दो लोगों के सामने फाइट कर रहा है। True. सोच बस वो गोपी भी साथ में चला जाता उसके। चुतिया एल्बो चला गया। This is what I was exactly talking about when I talked about Blackhawk. When the team starts falling apart, you've got a man like Blackhawk to be taken down as well, who likes देवा to भाई देयर इज नो नेक्स्ट टाइम। lines of the team, but the amount of impact नेक्स्ट टाइम he's खत्म got हो to चुके have, हैं। if बहुत we टाइम्स हो गए। it's just massive. 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम सब नेक्स्ट टाइम हुए। अभी देयर इज नो नेक्स्ट टाइम। भाई टेक्नो भाई को And उठाओ one कोई। more round to go, Crips. What do you think? 11-1 or 10-2? आएगा सेकंड मैप में आएगा वो। ऐसा नहीं चिलकोट बॉयज का कुछ नहीं बोलने का And be an 11-1. 6.11 पैच हो रहा है यार। Not engaging at all. One round in अबे वो which they देखो found some टेक्नो semblance of success was लॉन्ग when भी they नहीं pushed खेल out रहा of the अभी। lobby, हुक्का right? खेल रहा है उसके सेटअप है साथ। उनका कुछ सेटअप है। ट्रैप पे पिक करेंगे। Detects where आपके the पहले पिक कर रहे बट Pyrox goes for the hunt. अरे अच्छा भाई नहीं टीपी वाला सेटअप है But क्या? there's a double ये TP, क्या कर and ये that's कुछ what तो saves them. इम्प्रोवाइज But this किया gives है। them enough information. क्या इम्प्रोवाइज है भाई। वो आरिफ क्या घूम रहे थे उधर। Smokes down over there and keep True Rippers at bay. एल्बो लेना नहीं चाहिए। सेटअप का बोल रहा हूँ मैं। ये सेटअप नहीं खेल रहे थे वो लोग की। Revenant Esports, अच्छा I think all हाँ that matters is the हम second क्या ही round. कर रहे थे भाई। Everything's gonna be coming down याद to भी this नहीं। plan for the position matters. अरे क्यों निकला ये अकेला? ये क्या कर Positions right. टेक्नो And then you've got a man like Josh that's just hitting shots like साहू तो that. हुक्का से कूद गए भाई। चालू ब्रो कम ऑन। In that ओए side, क्या but रे? it's not gonna matter, क्या man. मार It's रहे लोग? Revenant Esports who are gonna 11 keep on half. building Good half, guys, momentum good half. and keep on मैं आरएन टीम होता तो ऑल चार्ट में swinging जीएच the लिखता fence. एक्सक्लेमेशन के साथ। 11-1 कैप्स is the कैप अली। बोल। कैप्स यप। जान मत दे भाई। अरे रेकनिंग वाला स्कोर याद आ रहा है? इधर सब एलिमिनेटेड। ओह 11-1 वाला था क्या? Next to impossible to catch मैं up. भूल चुका हूँ। लास्ट 2 महीने भूल चुका हूँ मैं जो हुआ है मेरे लाइफ में। Devastating scoreline. पता नहीं मेरे को कुछ रहेगा तो याद दिला दे मेरे को। काली वो क्यों हुआ पता है क्या? क्योंकि तू इंस्टाग्राम पे रील कम देख रहा था The पता है। lack of a person coming in from the ओह makes it difficult to break that. पहले तू एक वो डेढ़ घंटा रील एक्टिव देखता था तो टपाटप वो एक्टिविटी कितना है मेरा? 15-20 मिनट था मेरा वो टाइम पे। हाँ बढ़ाना पड़ेगा अभी हुआ है नेक्स्ट वो। इवेंट में। समझा समझा समझा। So nuts. समझ में नहीं आ रहा What's up, साहिल? We'll see whether they can come back. हेलो फेक डिस्कॉर्ड पे। यस
भाई मेरे को निकल दिया लोग ने, ऑफ कोर्स तू मेरे निकल गया है ना, मेरे को निकल दिया लोग ने इजी भाई भी तो निकल गए, मेरे को भी निकाल दिया काली ने। प्लेऑफ में नहीं, भाई निकल दिया वीडियो मेरे में को भाई। जो प्लेऑफ में नहीं वो भाई थोड़ी उधर नहीं। अगर थोड़ी भी कदर रहती ना मेरी, नहीं करते, क्योंकि जो हालत में उस दिन शूट किया मैंने भाई, थोड़ा रखना चाहिए था। तो हाँ, मेरे को नहीं याद ना है। कदर, बोल तो दिया। हेलो भाई, क्या हाल चाल? इंटरनेशनल फैन बोलते हैं व्हाट्सअप सिमंजय सिंह, थैंक यू फॉर 5 यूरो से कि पाउंड से हो? थैंक यू भाई, ऑल गुड हाउ आर यू? भाई कैसे हार रहे हैं बेकार आ रहा था ना यार भाई, मेरे को बुरा लग रहा है यार, कैसे निकल रहे लोग ने वीडियो से। बट एक्चुअली लग रहा है जा रुक गया, चलो काली भाई रुक जा, रो ही लेता मैं थोड़ा, बस रुक जा। चलो दिखाओ, हम भी देख रहे हैं आपकी स्ट्रीम। मैं एक क्लिक दे रहा हूँ, you guys are about to see the craziest shit in the world bro, trust me। ए भाई तो स्पॉयलर्स मत दे भाई। स्पॉइलर नहीं है, बहुत प्यारा स्पॉइलर है। कुछ बता नहीं रहा क्या वो, बट स्पॉइलर नहीं है बट स्पॉइलर है, प्यारा एकदम, ऐसा है क्या? या pretty much this is for not playing ranked with me। दो चीज कॉमन है, एंड बोथ आर एलिमिनेटेड। अरे भाई Welcome back, ladies and gentlemen, into the second half of the I'm first no longer game. in MLT guys, I don't know what you're talking about। Scorelines 11-1, heavily favoring Revenant Now you are Esports, in and now, BLT. as they have Wait, been what? forced on the defending side. What? Let's see if True Wait, Rippers what? is able to at least establish That's news to something me, bro। inside the first game, because even if they're That's not able to news win for this one, Excali as if they're well. able to take it close enough, it can prove out to be huge for their mental. I'm starting to get nervous, Necro. There's 4 people from True Rippers heading towards a 4 stack from Revenant. And I'm just really not on par with this one. The number of people right now is just एज भाई फ्रेंजी लेके बहुत मारते हैं पिस्टल आउट पे रे। हाँ ना, वो ये पेटेंट पोजीशन है इसका फ्रेंजी के साथ। फ्रेंजी और ओडिकॉन फैंटम finally goes Full in, crashies. hoping to collect the spike again, but the Trailblazers already seen where he is. I guess the only element of surprise Is now by popping is swing. Arju's presence. And even he's very hesitant to head out towards the A side and go for a very long flank. He's debating whether he should try and making that flank work or whether he should just stick with Wimp and back him up. I mean, makes sense when things are falling apart for Kita on your Didi. side. And right off the bat, this early off inside the round, you're going to start a second guessing Dink kar decision, diya. and Ching, he gets that dink onto the opponent. How is he even able to land shots like that? Didn't even see him on my screen clearly enough, and Ching was able to get the dink onto him. But now it's a 3-on-2 scenario. मर जाएगा। Clearly a heavily एक और मारेगा, एक और मारेगा, मरेगा एक और मारेगा, देख। ओ भाई पैराडॉक्स इन है, आरएनटी जीत गई। Doable है। दोनों लो है। Paradox has all the पैराडॉक्स में फुल डीमन 1 कॉस्प्ले मैंने जो बोला था याद रखना। both of them combined. निकल दिया शायद से इसने। One of those rounds which can be pulled off. एक्सकाली भाई फुल दिमाग लगा रहा है। That whip goes on for a massive flank all निंजा डिफ्यूज वगैरह है क्या कुछ? हाफ कर लेगा, स्टिक करेगा पूरा स्टिक कर देगा, देख। around him and he's sticking this माँ कसम, बोल मत ब्रो व्हाट ब्रो क्रेजी भाई। I can't believe what I'm भाई गुड राउंड। it all the way अभी टीआर वाले क्या बोल रहे हैं? question. नाइस राउंड। कुछ नहीं भाई, जीजी गो नेक्स्ट। लोटस में क्या कॉम खेल रहे हैं? Understand the play that True Rippers are trying to make over there. Paradox would have never seen them coming from Balls of behind steel. him, nor would he have expected someone to come in from hookah, but not even a single jump. पाउंड से ब्रो, हमें याद रखियो, मैंने मोर टू हालत कैसा हो गया याद देखा रखूंगा। सिमंजय सिंह याद रखूंगा मैं। यस, थैंक यू सो मच I don't know if फॉर अनदर। हार्ड गए ना लोग को, एक इतना बात डर। बताओ हैकर, अगर मेरे को लैंड देखने जाने मुझे टिकट खरीदना पड़ेगा? Revenant No Esports clue, are bro. speedrunning this game. आस्क नॉट विन। हाँ, तो क्वालिफाइड है क्या प्लेऑफ्स के लिए? तो खरीदना पड़ेगा। अरे यार, इसलिए तो हम लोग नहीं जा रहे। पहले बताते हो जाता शायद।
then it just crumbling down, falling apart. एक्चुअली जर्सी वगैरह पहन के चले जाए वॉचमैन जो बाहर है वो लोग को समझेगा नहीं। प्लेयर देखने आ रहे कोई। Never give up on that. You never know, maybe Techno will pull off an 11 HP clutch. भाई तू बिगाड़ है किधर? जीत रहा है टेक्नो, जीत रहा है राउंड पर। चल खत्म। नहीं जीत रहा है वो भाई। आई नो टेक्नो भाई दोनों लो रे। अबे स्टिंगर ले लिया स्पेक्टर फेंक के उसने। तो वही तो है ना पबजी मोबाइल। क्या रे? पैरा वेव कर देगा अभी टेक्नो डबल डिंक। हो गया तेरे हो बोलने गया, तक जी, खत्म जी, हो जी। चुका है। चलो गाइस रैंक गो कर देते हैं। नो थैंक यू। आज शॉट वो क्या स्टॉप वॉच लगा के गेम चालू किया? ओह माय गॉड। पिक करके जाओ, पिक करके बाहर जाओ। एजेंट्स पिक करो और फिर बाहर जाओ। हाँ गाइस पहले एजेंट पिक करो, अपने अपने पीसी पे जाओ। ये ज्यादा जल्दी खत्म नहीं हो गया? वैसे ये तो 25 मिनट का गेम लगा मुश्किल से। अगर ये जो कुर्सी से नहीं उठ रहे आपका मतलब कि टिल्टेड है। जी यार इज मिसिंग दीदी बफ। वीएलटी का मैच कब है? परसों मैच। किसके अगेंस्ट है? MLT। गुड लक ब्रो काली भाई। सी ऑन द गुड लक, सी यू ऑन द स्टेज एंड सो या। आई थिंक मैं 20 लेके जा रहा हूं ये स्प्लिट। स्टेज किधर लगा है? धारावी में? हां डोंबावली में। डोंबावली के डोंबावली ब्रो। एंड अंधेरी नॉर्थ अंधेरी नॉर्थ। बस एंड बांद्रा ब्रो। चुप हो जा अभी। एंड बांद्रा एंड सीलिंग के नीचे। हां सीलिंग के नीचे समुंदर में डूब गया है तू। वैसे भी चुप हो जा अभी। क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है? आई नो एवरी पार्ट ऑफ मुंबई ब्रो। मैं मुंबई गया नहीं कभी, एक बार ही गया हूं। 2-1 प्रेडिक्शन तो लग नहीं रहा अभी, तो स्पीड रन ही लग रहा है। बट जीरो ड्यूड। दोनों सिंगल कंट्रोलर मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, मेंटालिटी पे। हां बाउंस बैक करेंगे कि नहीं। या ऐसे लॉस के बाद क्या ही करेंगे पता नहीं भाई। जज खा रहे इधर उधर, उड़ के मार रहे दो लोग। एक चीज कर सकते हैं, नेक्स्ट मैच में हार जा सकते। गुड आइडिया ब्रो, हेलो भाई, गुड आइडिया। अरे फिर मतलब हम लोग ऐसे ही करते थे। मैच होता है भाई। हम भी नाम के आगे वीएलटी नहीं हटा है भाई। बहुत कदर है तुम लोगों को मेरी। सिंगल कंट्रोलर ओमन, सिंगल कंट्रोलर भाई। तो मिरर कॉम्प है दोनों का। वार्म अप। हमारे जैसा खेलने लगे ना अगर वाइपर हार्बर खत्म। हमारे जैसा मतलब कौन खत्म? हम रैंक में खेलते ना। They are doing medal cosplay. What the fuck? TR is not doing medal cosplay, bro. Cosplay. इसी में बहुत गंदा। के भाई बाहर हो चुका हूं। अभी डिगल हो जाए। तेरे बच्चे नहीं इतना मेरा। खाली भाई आपने ये कुर्सी के पीछे वाइट क्या लगा है? एक बंदा चैट पे लिखता है नॉट इवन 2 रिपर्स दिस टाइम। ओमन ने भी ट्वीट करा एटलीस्ट 2 राउंड तो जीत जाते। यार मुझे भी ऐसी एक वीडियो चाहिए थी यार जैसे ये लोग की बनी है। उसके लिए प्लेऑफ जाना पड़ेगा। एक लूजर्स की भी बनानी चाहिए इनको। क्लिप्स है, मेरे को मैं एडिट करके देता हूं तेरे को। डन ब्रो। Unforced शूट तो बढ़िया किया है भाई नॉर्डविन ने। हाँ भाई फाइट। एक हमारा भी बनाने को बोलो यार। प्लेऑफ चले जाते हैं है ना। ये नॉन क्वालिफाइड लोगों के लिए भी आना चाहिए ना कुछ। हाँ भाई। माय बैड। अरे रे भाई देख भाई इधर सब एलिमिनेटेड प्लेयर्स बैठे हैं, तो बी रिस्पेक्टफुल फॉर एवरी टीम दैट इज एलिमिनेटेड। ओके मैं तो yeah because we are eliminated for a we need reason. respect। yes so that we can do this wonderful watch party for you all। कितने अच्छे लोग हैं गाइस हम।
अबे तू नहीं कर रहा है चलो अभी तो ऑफ सीजन है 8-10 घंटे और ब्रो आई एम ऑन द स्ट्रीम। मैं इतना स्ट्रीम नहीं करता बट इतना खेलता हूँ मैं पूरा दिन और कुछ है ही नहीं इधर करने के लिए तो खेलते ही बैठता हूँ यार खाली। हाँ कितना टाइम के बाद पीसी में बैठा तू सगनिक? सबसे छोटा था सबसे नहीं बैठा सबसे हार्ड वैलोरेंट ऑन ही नहीं किया मैंने। ये होता है असली ब्रेक। हाँ मैं बीजे में खेल रहा हूँ तो वो सोचो बीजे में स्ट्रीम करूंगा आएगा क्या? हाँ चलेगा खेलेगा स्ट्रीम पे। हाँ। CSGO and CS2 time मैंने देखा नाइट्रो वापस आ गया फिर से वैलोरेंट में। स्कोर कर रहे हो वो 100 सिल्स में था वो छोड़ के वो लिक्विड गया अभी लिक्विड छोड़ के फिर से वैलोरेंट आ रहा है। फ्रैंचाइज खेलेगा ना वो फ्रैंचाइज भाई स्ट्रॉन्ग। अच्छा खेलता तो अच्छा था यार ओमेन 100 से। ओमन भाई लास्ट में तो जेट खेलने लगा ना लास्ट में जेट जेट भी अच्छा खेलता था वो खेलता था ब्रीज पे जेट ऑफ डिप करता था। ओ हाँ यार तो सीएस में नहीं बना क्या? ये किंडर को लेके भी नहीं जीत पा रहे थे वो लोग। वो कौन है? नहीं जा रहा CS2 में बाकी लोग फोर्टनाइट आ जाओ यार बोल रहा हूँ मैं। फोर्टनाइट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन ई-स्पोर्ट्स। आप बोल रहे हो इसे अभी भी उसमें वो घर वीर बनाते हैं क्या? घर क्या भाई अब तो पूरा एफएल टावर बना देते हैं। मोनोपोली खेल ले फिर खेल सकते हैं बोलना कभी। अपन मोनोपोली खेलते थे ना हैकर वो किधर गेम किधर स्ट्रीम पे था ना वो स्ट्रीम पे। हाँ टाइम पास भाई बहुत बेकार गेम है भाई वो क्योंकि ये हमेशा लास्ट आता है। भाई मैं हमेशा फोर्थ आता हूँ मैं ऐसा लगता ही नहीं मैं थर्ड के लिए भी। तेरे से ज्यादा गंदा नसीब वो पिल्ले का है भाई। भाई जुवेन तो जुवेन और मेरा कंपटीशन चल रहा है कौन थर्ड आएगा। सही है भाई। बिजनेस स्टोर मजा आता है बट टाइम पास गेम है यार। रिच भाई कुछ रिच नहीं गरीब हूं मैं भाई 300 रुपए की भाविन भाई तो उसमें जो ट्राई हार्ड करते बाप रे बाप। भाविन भाई भाविन ट्राई हार्ड फक 10 kills remaining. गेम जीतने के लिए खेलता हूं मैं बोला ओके ब्रो। तो सो के पीकेम करना अपन पीके में बहुत गंदे आते अगर टीआर यहाँ से जीत गई ना भाई अपने आप टीम्स को आगे डाला था टीआर एक्सेप्ट फॉर वेंकी। क्या मतलब? मेडल को भी आगे डाला था हैकर तू ना? हां ऑफ कोर्स आगे डाला था मतलब किधर? पीकेम्स में। हाँ हमें तो लास्ट ही डाला होगा मैंने खुद लास्ट डाला था भाई। मतलब लोग पीकेम जीतने के लिए खेलते हैं हैकर पे पीकेम हारने के लिए खेल रहे थे। ओ आगे एमएलटी को क्या डाला था हैकर भाई? किसके अगेंस्ट? वो भी हार गए थे। हाँ भाई होता है लाइफ है। आप जैसे बड़े होगे ना हैकर भाई जैसे बड़े होगे ना समझोगे। कितना बड़ा हूँ? आपका बहुत बड़ा है पता है बट और बड़े हो जाओ। छी कितना गंदा छी। अबे टीम पे हम लोग चीज की बात कर रहा हूँ मैं भाई। टीम पे हम लोग चुप हो जा। ना ऑफ स्ट्रीम चलते क्या सभी पीड़ो? क्या मैच चालू हो गया Kills गाइस। remaining. अबे इतना जल्दी? एक सीन हाकर में लोगों पे जाओ कोई एनालिस्ट आए देखो। क्या हाँ ओ भाई देखा हाँ मस्त है। अच्छा कौन आया भाई? करो पता नहीं कोई अच्छा लग रहा है पर गुड वेरी गुड। मुंबई से है कोई। रैंक खेल रहे नेक्स्ट यस वही करना पड़ेगा। वही लाइफ है वॉच पार्टी करो और रैंक खेलो यही लाइफ है अभी। हाँ वो रात को उधर मिलते हैं गाड़ी मिलता है क्या? हाँ, ठीक है कुछ साइनिंग वगैरह है क्या क्या पार्टी है साइनिंग पार्टी है। Signing party। किधर बोलता ओपा तो I said yeah man yeah you're right
टॉक इन इंग्लिश। ओह इंग्लिश यार। भाई सागनी सेटअप तो थोड़ा देखा तो लग रहा है। हाँ अंकित क्या कर रहे हैं? तू उधर क्यों है सागनिक? ऐसे ही मेरे को रोका गया इधर। बंदी बना लिया उसको। हाँ। कितने टाइम से उधर है सागनिक तू? मैं सोचना पड़ेगा, हो गए Frets. एक हफ्ता। Do you guys know Frets? Frets. फ्रिट्स नहीं पता, फिट्स पता है मेरे को। Frets is apparently the guy doing the thing. Yeah. एक इंडोनेशियन प्लेयर है कोई फ्रिट्स नैंसी अरे वो अलग है भाई। जो कर रहा है सारे से उसका बोलते हैं। बहुत टाइम लगा रहे हैं यार ये लोग मैच के बीच में। अरे ओ काली। हाँ बेटा लोगों नहीं खोलना है। इधर खोला है मैंने। देख लिया मैंने। अरे कौन एनालिस्ट कौन है वो दिख रहा था, इसने बोला बस तू पकड़ा गया। चोरी पकड़ी गई क्या? चोरी पकड़ी गई। अभी देखो कॉल आएगा कि क्या कर रहा है भाई। चलाते हैं। मैं बोलूंगा टाइसन ने दबाया कुछ तो। टाइसन ही खेल रहा था क्या अभी सेकंड स्प्लिट में? यस। एक टाइसन खेल रहा था, एक इधर। यार पट क्यों है वो दिल्ली? क्यों बुला रहा है मेरे को? ऐसी मत बुला मेरे को। अरे नया एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन करना। नको नवीन एकदम फ्रेश। अरे जाते हैं ना कल ही दिल्ली, चल मेरे को भी जाना है, काम है उधर। कभी जाना है? जाते 7-8 तारीख तक आ जाओ। एक हफ्ते में। हाँ वही एक हफ्ते में निकलते। टिकट बुक करके देगा तू मेरा? वो मैं नहीं कर रहा। तो मैं अपना करूँ? हाँ और मेरा भी कर दो, मैं दे दूंगा तेरे को बाद में। ठीक है डिटेल्स वैसे मेरे को कर देता हूँ, डेट और टाइम बता दे कभी का चाहिए। हाँ 6-7 तारीख का कर दे ठीक है विक्रांत। सही रहेगा 6-7 तारीख। क्या ग्रैंड फाइनल भी देख के ही जाना। वो इवेंट में नहीं आऊंगा बट मैं कोई नहीं, फिर इधर मेडल के बूट कैंप पे आ जाना, हम लोग किधर से वॉच पार्टी करेंगे। चालू हुआ है कि नहीं हुआ? भाई बहुत टाइम ले रहे हैं यार ये लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तुम चिल्ला रहे इतना? अरे ओ चिंटू पिंटू, थोड़ा कम चिल्लाओ ना। सैटरडे संडे कब की टिकट खरीदो कोई तो बताओ। आवाज जा रहा है तुम लोग का। सैटरडे संडे खेल भाई कभी ब्रेक इज लॉन्गर देन द फर्स्ट मैप। एग्जैक्टली यार सेम हम लोग के बारे में, मतलब बीएलटी रखने का भी सेम ही था। ये हम लोग ने पी साइड में जाके राउंड निकाले थे। ये वो मैं हूँ क्या लास्ट पीछे लोगों पे? मैं क्या कर रहा हूँ? ये लोग क्या कर रहे हैं?
चालू करो यार। हेलो काली भाई, बोल ना। मेरा एक बार स्ट्रीम खोलो, देखो एक बार। हम लोग मेरा मेमोरियल लगाया उधर वो लोग ने। काली भाई, ओ भाई देख रहे हो? हाँ। वो 2 डंडी देख रहे हो, उतना राउंड निकाले थे हम लोग। ओ 2 डंडी देख रहे एग्जैक्टली। हो, उतना राउंड निकाले थे हम लोग। ओ एग्जैक्टली। लोगों पे नहीं देखना चाहिए, लोगों पे नहीं देखना चाहिए। भाई साग्निक अंकिता से पतला लग रहा है अभी। पता है ना? हाँ, अरे मैं जिम कर रहा हूँ ना जिम कर रहे हो? ओ समझा समझा। स्विमिंग स्विमिंग भी है नीचे। अंडरस्टूड 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 अंडरस्टूड। या अंडरस्टूड। ये अंकिता, कार्य ने तुमको मोटा बोला। ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने अंकिता। डीमन स्लेयर दिख रहा, तूने देखा डीमन स्लेयर? हाँ मेरा 7 एपिसोड हो गया। 60 वो तो तब से 7 ही है क्या? 8 था ना, 7 हो गया, एक भूल गया क्या? 3 था ना, 3 देखा था मैंने, 7 थोड़ी बोला मैंने। और वो खत्म किया क्या उसको? लास्ट डांस। लास्ट डांस हाँ भाई इंसान था वो। वैसा नहीं होगा, बस कुछ भी लाइक, और अच्छा था, देखने में अच्छा लगा। लोग का लास्ट डांस ही नहीं हुआ। होगा ना अभी, अभी होगा डांस। अभी डांस होगा, अभी नाचेंगे सब लोग। फिर माइकल जॉर्डन ने माइकल मसवड़कर बनेंगे। माइकल रॉय, माइकल दास, माइकल शर्मा, स्कॉटी रॉय, माइकल मसवड़कर। अरे फिर अपना है ना माइकल एकेल्स। माइकल फैंसिव, बहुत बड़ा है ना। फैंसिव फैंसिव फैंसिव, गोवा फैंसिव। वो लोग के नामों पे सूट भी होता है रे सरनेम। क्राउली। भाई क्राउली तेरी टीम तो चपाचप मार रही, कुछ मंत्र मंत्र पढ़ा है क्या तूने? स्टार्ट ही नहीं कर रहे यार। भाई तुम लोग का हार्ड बर्ड्स पे कितना होता है 30 सेकंड्स में? मेरा एवरेज 23। मेरा 26 हाईएस्ट गया है। ओ भाई। और एवरेज 22 23 हो जाता है। भाई हमारी टीम में जे है ना जो, हाँ वो पागल है भाई, उसका 28 भी जाता है, वो भी डीगल से। हैकर है साला, हैकर। तो कैजुअली 25 मार देता है आराम से। क्राउड दिखा है क्या वो लोग ने अभी तक एक बार भी? दिखा है ना? दिखा है अभी तक। दिखा है एक बार दिखा है। एक बंदा मेरे चैट पे आके लिख रहा है, मेरे चैट पे आके लिखता है वेंडर्स वीएलटी प्ले साइन देखा। हाँ पर 19 हुआ है मेरा, 19 मेरा एनिग्मा में था, तभी मैक्स मेरा 21 है 22 हुआ था। अभी भाई भी फोर्स करता था, कर 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 डू इट। वो तो मतलब रेगुलर किया तो ही बढ़ता रहता है तो। हाँ और तभी कैसा था पता है कि वो अपन स्प्रे मारते हैं ना कभी कभी उस पे मारने के लिए, तभी वो उसने बोला था कि टैप मारना है, सिर्फ एक टैप में एक किल। खाली भाई वैंडल से ये करो, फिर फैंटम आराम से हो जाता है। हो गया स्टार्ट। नहीं जम रहा भाई मेरे को तो। ये सिर्फ
CBD थोड़ा आगे है से करो, थोड़ा आगे से करो। CBD है सिर्फ CBD है ये, सिर्फ हाथ खोलने के लिए। Starting things off in the attack, and Revenant It's has- life. We aren't seeing any aggressive moves from the side of Revenant, but we are seeing some quick rotations as the C side hit. It's confirmed that there's no one coming out of the C side. You can see Paradox on the aggressive angle, just collecting that info over and over again. It's Match started. Hello. Yes. I'm sorry. Gets taken care of, and True Rippers, they've got no other choice than to fall back. I like the position that Paradox has now. It's more like a one and done position, but I don't think anyone will check in if True Rippers decide to go there anyway. Jing, on the other hand, just jump spawning people. He will act like the early warning system, and the Revenant have been pretty quick on the rotates. At least in the fight that you've seen so far, they were able to get there on time. And now look at this. They want to go for a crunch. They're waiting to let right to ace kick the door down in case True Rippers try to go for hit towards the B side once again, and that's exactly why Revenant didn't commit to the A side instead. They knew that True Rippers would try to go for a nice curveball towards the end. One But from Jing, there. blind as a एज भाई यूटिल लेके मरे Luckily, there is backup available. Blackhawk comes in to save him just in time, but Wimp is winning his fights, and True Rippers might just have this round yet. एक सेकंड, ये टेक्नो ने क्या करा अभी? किसने देखा क्या? It's a 2-on-3 scenario. Advantage नहीं। in the hands of True Rippers, but that ध्यान नहीं था मेरा। Rippers should try Oh, to push. fuck Oh, it. Oh, भाई। Connector shots through the smoke. Are you able to find one? A massive one. रिवाइंड करो काली भाई, जरा देखो टेक्नो ने क्या करा है। Try to 15 to let, and now look at this. कभी घुसने का True टाइम Rippers try to Whip go कर for. दिया। हाँ, They knew that True Rippers will और try to पीछे? go for a nice curveball towards the end. But Ching, हल्का सा आ गया। अच्छा luckily there is back. Try to go for try ये देखना। for a nice curveball towards the end. इधर से कर रहा Blind है at the back. Oh my, luckily there is back. Girl available. clear Oh, हो this गया। is just in time, but Whip is winning his fight, and True Rippers might just have this round yet. Yeah, they might just, but still a little too close to comfort. It's a 2-on-3 scenario. Man advantage in the hands of True Rippers, but that doesn't mean True Rippers should try and push, and it'll get a little too ahead of themselves. Able to connect their shots through the smoke. Are you able to find one? A massive one. अच्छा क्या टीयर का मैंने देखा नहीं है लोगों को लोटस खेलते हुए They've got last man up and alive. Ching. अच्छा खेलते हैं 26 लोग। HP doesn't really have a lot to back up on, but still able to find one. But that's all he's gonna get. As अभी सबसे फनी चीज बता, जब ये लोग ने फर्स्ट टाइम लोटस खेला था, हैकर तेरे मुंह से सुनना है मेरे को। क्या फर्स्ट टाइम लोटस खेला था ये लोग? टूर्नामेंट में खेला था ना, किसके सामने था? मेरे को याद नहीं था। एस्टर, फिनिक्स। फिनिक्स वगैरह कौन खेल रहा था? मैंने मैच देख रहा था। एस्टर ने खेला था भाई, नशा कर दिया था। From the venue want spoilers, no bro, please don't. Starting off on the right note, winning the pistol. This definitely makes it a little more promising. Josh, right off the bat, amping up the Kौन से aggression. running platform down close and पे? personal. You can just press end key on Trailblazers to reach end. हाँ पता है मेरे को, बट वो आगे करना है ना। YouTube बहुत पीछे है, to make a great escape, but is he gonna be able इसलिए to? 2x किया था मैंने। He will be able to fall back safely, but he's still wanting to challenge the fights against the भाई opponents. ये लोग Of course, they don't really have the superior weaponry inside this यही fight, करते हैं but लोग। they can try to make ये something out एक of ऐसा it. आगे जाके Ching बैठता है spots विम, out one of the players in लोग the चार close लोग line, स्टिक करके and आते now he हैं। knows it's a complete A hit coming soon. As Wimp will get यही the तो second करना kill, रहता है मैप the में। rest of the team will flood through. Wimp in the ये नहीं close करना will होता है। get destroyed, but an instant trade will back it up, and Kaysen gets another one. A 3K for this man. Kaysen stands ओ strong, भाई, steadfast in his approach as he holds this area down with an iron grip. That's a nice भाई cleanup देखते for ही him. crouch। Farming up 4 kills, getting closer to his showstopper. That's gonna be super useful for True Rippers later on. But I like Spoiler, how one True tap, Rippers it's were crazy, very, हाँ, ठीक है very भाई। passive in this वन round. टैप खेल ही They नहीं took रहा their है। sweet time trying to hit कबीर the वन C टैप site. को मेरे तरफ As से soon as वन they figured ह्यूज out देना। that there's a bunch of utility down समझ जाएगा। over there, they were not at all hesitant in backing off. Hit the A side well enough, and that's also because Wimp was kind of lurking for his team. While the rest of them were towards the attacking spawn, Wimp was already pushing the limits on the A side. As soon as the smoke came through, he just decided to rush it, send it in. And that's how True Rippers are able to कभी get स्टोरी गेम खेले हो क्या? but नहीं, now the real asset सिर्फ GTA खेल रहा था मैं इसके Revenant पहले। with all the weaponry that they need. GTA 5 कंप्लीट किया Stop मैंने। True Rippers in their tracks before they get too much momentum. एक्सो के बूटकैंप पे खेला था लास्ट। Now, या hopefully GTA got a lot of हाँ clear GTA 5। Trailblazer. एक्सो नहीं सॉरी, सामुराई। Exactly know what's inside the site. Oh, On the other nice. side, Wimp. लाइफ ही जीटीए बन गया था एक्सकली। हाँ लाइफ ही GTA बन गया था। Blackhawks, and now the opponents don't even लाइफ इन घाटकोपर था वो GTA घाटकोपर। This is a massive one, a huge opening for Yeah. True Rippers to Lees rely पाव back खाने on. के लिए They get जाता the था site शाम में control, the बाहर। retake is next to impossible. हाँ ना भाई वो मिस कर रहा हूँ भाई मैं लेस पाओ। Taking will be very difficult for Revenant Esports. एक बार जाना है मेरे को उधर। One choice. रास्ता भी याद है मेरे को। Don't even let them plant. Of course, Skeptical इतने बार about गया how है। Right to Ace is playing in याद this ही होगा। position. One advantage that Right to Ace position has over here is that he can back up his teammates. RNT पहले खेली है क्या फ्रैक्चर? A and the B side, so that's I mean, amazing. Lotus. A well-timed fault line could हाँ, really stop them in their टेक्निक के tracks over सामने here. खेला था। Paradox doing well They for lost. himself. The satchel to help him reposition, and he peeks back again. But the pinstripe of Trace True Rippers is doing it, huh? in favor of True Rippers.
This is a different True Reapers. While they're planting on the A side, look at the position the they Wim are has. truly ripping It's him. gonna be the insurance policy in case Sahu, something let's go goes wrong. Sahu. But I don't think Red 2A sees him coming. खड़े रह के मारा रे साहू ने. On HP, he might as well साहू just try to insane है भाई. save. खड़े रह के हमारा believe कर सकते हो आप काली भाई? No, not at all. Yeah. भाग के नहीं मारा, बड़ी बात है भाई. Bro, isn't like Ace is like into his monitor भाई completely. And he was able to find out Disrupt as well. That's Oh what? But Techno in the खड़े होके मार दिया वापस. Crouch करके मारा. That's two rippers. Crouch करके मारा. Sleeves. Nicely done. 3K bonus round. Dominating start indeed. What's up फेरो पुढे काय मग दादा पुढे आम्हाला पण नाही माहिती. तर तुम्हाला कळलं तर आम्हाला पण सांगा जरा. पुढचं काय नाही माहिती. वो गोपी का लॉजिक ही नहीं समझा. और रबल के ऊपर टीपी मारा था, बाद में नीचे उतर के क्या चेक कर रहा है. क्या पता. मैं भी वही सोच रहा हूँ. अब इतने भी अच्छे विम शॉट को उसने था. ऑब्वियसली विम उधर ही देखेगा रबल से नीचे कूदने के बाद. It's a different story that 𝐿𝐴 gets decapitated by Wimp in a very ugly fashion, but Revenant Esports are still not willing to give up rubble control, which is something that is a defending team should do. अरे वो लोग ने सी पे प्रेशर दिया था ना, तो गोपी नीचे उतर के स्मोक करने के लिए. मेरे को पता है वो रेंज नहीं होता सी स्मोक के लिए. रबल से नीचे उतरना पड़ेगा. So True Rippers are avoiding walking into a trap of sorts. And Wimp wants to play this one quite safe. It is completely fine for him to take that control. As two rippers, they make their stroll onto the C site. They've got the site control easily and freely in the hands. Just waiting for him to flow through. Another flash comes in and Chinks gets shut down this time. Code. He's got no visual on the opponents or the surrounding area whatsoever. The flashes are placed perfectly. Paradox able to strike. बा तुमची डिग्री कुठली आहे? MBBS. गुटली. Nicely done. 40-0. बबल ऑन करा रे. किधर है? किधर बबल दिख नहीं रहा है मेरे को. किधर बबल नहीं दिख रहा है. तेरे पास डिग्री ITUS है भाई, इसकी तो किधर है वो बबल? Settings में किधर दिखता है? 4 rounds. And it's going to be a tactical timeout from Revenant Esports. They desperately need this one too. They did have losers bonus stacking up, and now they've also got the better weaponry in the hands. Vandals and Phantoms on the board. They've also got a showstopper ready. If there's a complete massive push out from True Rippers, the showstopper can definitely stop them in the tracks. But on the other hand, Disrupt's got his hands on the Rolling Thunder, which they can utilize to get the site control in the hand. क्या ये लोग वो चेंज कर सकते हैं? अरे वो VLT शेड्यूल दिखा रहा था. VLT कुछ नहीं है. VLT शेड्यूल में ब्रिजटन के साथ कंट्रोल लेके रेंज को बिठाने का और फिर ये ऐसा शेड्यूल है. पूरा स्क्रीम्स का. Exact same treatment they received on Vine. Okay, I guess the silence tells me all I need to know. I don't think you believe in that prophecy. Maybe Revenant will show us exactly what they're made of in this round, right? ये सब ऐसा If they शेड्यूल fail है. over here as well, then maybe we can start sinking the possibilities of a 11-1 coming through again. Oh yeah. This time in the favor of True Rippers. But Revenant, they've been quite dynamic on their Killjoy setup, you know? Every now and then Ching was placing his alarm bot towards the mouth of B side, but he would sometimes place the turret on A. Now he's placing it on C, so he's changing that up. And True Rippers always play very passively at the start. They know that Revenant are aggro, so they like holding their defaults. And so far, these defaults are actually kind of working out for them, you know? They always सारा लीक करते हैं. अभी क्या मतलब है वैसे भी? always get the 4v5 advantage. Somehow make sure that the follow-up aggression from Revenant Esports also doesn't give them too much momentum. With skills. अरे तभी कोई प्लेयर था नहीं हम लोग. एक जब भी सब घर से खेल रहे थे तभी एक का लाइट गया था और मतलब स्क्रीम कंटिन्यू करने के लिए एक प्लेयर चाहिए था. तभी स्किल्स ऑनलाइन था वो टाइम पे. तो ऐसी स्किल्स को बुलाया था वो दो मैप्स के लिए सिर्फ कि वो स्क्रीम लिया है सामने वाले का कैंसिल तो कर नहीं सकता. स्किल्स और भाविन वाला. हाँ एक्चुअली स्किल्स और भाविन भी थे वो टाइम पे. भाविन सेकंड मैप में आया था. बट आई थिंक इवेंचुअली कैंसिल ही हुआ था ना वो. मैं नहीं था, मेरा ही गया था कुछ.
W कवर नहीं सच में उसने अल्टी उधर मारा तो उसने स्मोक क्यों किया? पता नहीं भाई क्या यूटिल डाल रहे हैं लोग, ये ले यूटिल डंप किया है लोगों ने। अभी नेट बाकी है, टर्न मार दिया, नेट कर दिया। सारे ऐसे चैलेंजेस टीम से आ रहे हो, ये तब भी क्या है जब भी डोमा डेवी आने के पहले क्या हो। ओ भाई अल्टी मार दिया। The showstopper doesn't get much done, but at least it allows them to have a यूटिल हुआ भाई उधर। forget having a foot. These guys are taking their heads off. Disrupt through the smoke. That's a massive spray down, and this will turn the tides. But he's so paranoid about getting crushed from both sides. निकल देगा Vim. Doesn't get it done properly. Whip's nano swarms have been used up. He has to connect Hey, the shots on Vim? now. He's not able to do ओए it. भाई क्या नसीब। भाई ये क्या राउंड है? So lucky. Oh my god, True Rippers, they know they barely won that round. Completely behalf of that luck. And that timing working out in their favor. Whip was not able to find the spot at all. He was not able to shut down the man who was going for the defuse. And Blackhawk almost could have done it, man. All he needed was a couple of milliseconds more. And that could have been it. But now as Revenant Esports, they've got their hands on the lockdown. And also from the shadows, lockdown can lock down a site completely and make sure that the opponents are not going to be able to breach through. But let's see if they're going to try to utilize that inside the Sheriff round, inside the Eco round. If they're able to find some early... राहुली तूने ही नस्तर लगाया ना, नहीं हो रहा था। अभी हो गया ये देख, 5-0 up है। Was indeed too close, but Revenant can't keep About having to these win close 6th round. encounters. भाई मेरे को मेरी याद आई सागनिक, वो फ्लैश पिक किया तो Aggro players from बी पे। aggro position. साला तेरा टरेट का 1v1 चलता था ना बी पे। कितने बार मारा है भाई लोगों को मैंने। तो क्या करेगा ये? Yeah, he just tried to throw in. लाइट का Never mind. There really is nothing he can do, and this nade will probably be the death of him. So he swings out, hoping to take one down before he bites the dust. Unlucky. Josh as well. Positioned in an interesting angle, not pushing out just yet. Playing this one safe and sound. True Rippers, they know. Considering the opponents don't really have the suitable amount of weaponry, for True Rippers, this should be an easy one to take in their hands. Before Revenant Esports, the loser's bonus is going to start to build up. This is where they'll probably be able to buy some guns in their hands. Paradox able to shut down Techno. Good trade. Paradox able to get 2. He's good for 2. गोपी भाई always good for 1. They've got only 2 players standing for themselves, but you've got a man like Josh hitting his shots as well. But eventually, Disrupt will move things off. True Rippers continue their winning streak. Revenant Esports once again bring it super close. But this time, the decider or the bullets, not the time. Ended by intention. True Rippers are going very strong so far. Yes, the retakes are a little shaky, but so far, they are somewhat keeping it in the bag. Revenant try to sneak that hand into the bag and try to yoink around away, but they are just left with narrow margins. But now that Revenant have 4 massive ultimates, maybe things will change. They're not playing aggro this time. Instead, they just try to make their mark into the A lobby area, but are instantly sent back by the fault line the True Rippers are using. Udin ले लिया भाई इसने। स्पैम करने के लिए, वो स्पैम तो किया ही नहीं इसने। True Rippers. Let's go Techno bhai. Similar strategy that they tried to do in the previous one as well, and look at Techno bhai. Hot Travolta. As well, Odin in the close range is going to strike down anyone who decides to peek it, and then you've got Wimp as well following it up. A 4-on-2 actually. Blackhawk and Paradox, the last 2 pillars. गोपी भाई full गुस्सा हो गया। And these guys can definitely try to pull something over here. Try to do at least something before going down. We'll get some sort of value in their hands as Blackhawk strikes one down. Taking her off. Techno as well, wanting to defend the side from these 2 players as much as possible. It is doable to take his pullable. But as Techno is able to strike the last one, follow it up as well and gets taken care of. A big hurdle for Revenant Esports is True Rippers. Odin फेंक दिया क्या?
Yeah, but True Rippers are actually very. मैं सिर्फ एक राउंड के लिए था ब्रीच अल्टी का काउंटर था ऑफेंसिव So many of them उसके बाद फेंक knocked दिया up into the air, but still are landing on their feet and connecting their shots as well. Chink could only get one. I thought he would be set up for a nice multi-kill over there. गोपी True अलग Rippers leave no भाई के साथ hurl गलत कर दिया uncrossed. उसने. That rolling thunder was Favorite a knife. sentence, but they not only survived that, but they thrive. करम्बट 7-0. इन्हें करम्बट And I'm having deja vu all over again, except it's खाली टर्रेट के reversed. साथ 1v1 चल रहा है वापस True Rippers with the 7-0. अभी लोग एक गार्ड करने के लिए We've seen this happen in the previous map, but I don't know, man. This just seems like one of those series that is going to be super one-sided for either side, and then split will really determine the winner. Unless Revenant can win the next 5 rounds and keep the first half competitive, or pull up their socks in the second one. pull up their Rippers socks in the are second having one a gala time over here. And Revenant once again with the eco weapons are forced to make एक some गोपी gamble के पास stats. एक टीपी रहता है, हमेशा दरवाजे पे टीपी मारता है. Last लेकिन time, लेकिन actually, Owen playing to its C now and the rest of the team on this time, बचाओ कोई खोलो दरवाजा and now that दोस्तों मुझे चाहिए. he tries to escape, gets bit, but is able to ये मार दिया रे cross the doorway. वही बोल रहा ना गोपी ऑलवेज गुड फॉर वन तुम लोग कितना आगे हो रहे Except True Rippers, will they be able to stop them? 32, There's a 31, massive 30. lurk coming हाँ from Paradox, but will he be checked? Yes, he will, but he still wins the duel. That's amazing. There's someone जॉर्ज now. जो बैठ के लगाया है इसके ऊपर टेक्नो पे. ये चिंग भाई एक ही जगह पे जाते हैं रीटेक में ड्रॉप उधर यहाँ रे ड्रॉप पे अटक जाते हैं बार बार नीचे शांति से उतरता है वो. थ्रिफ्टी हो गया भाई ये तो लेट्स गो फाइनली राउंड आया भाई. And this will also boost their confidence up. This is what I was exactly about to say. The objective for True Rippers is not to trip over their own shoelaces. सब मिलेगा ओडिन माइंडफक है मैप में एक बार हम लोग जो ठुके थे ओडिन से Really fast. A good push out from the वो C mound क्रॉनिकल area. ने जब से स्टार्ट किया है भाई अल्फायर और क्रॉनिकल ने And Alfire. सबसे भाई इरिटेट ही कर दिया स्क्रीम में. हर कोई उड़ीन लेके आ जाता है. Not only do they get the round, बट ओडिन का भी काउंटर रहेगा ना तेरे पास हैकर they will have some sort of stability going into the next round as well. जज Will this be the momentum ender for True Rippers? Can they continue their win streak once again, or is this all she wrote for them? भाई क्या हो रहा है Told you, man, for Revenant Esports, the ये main कभी key अल्टी भाई क्या हो रहा है कितने भाई ये मर गया फुल भाई से मर गया आफ्टर शॉक से. भाई चल क्या रहा है side. At least they've got 7-1 is the scoreline. It's भाई not ये क्या bad नशा at है? all. Techno pushing up way too deep. This might just be able to ओ भाई टेक्नो maybe get some value, and he's able to do so. Instantly falls back with that kill itself. Trailblazer's going to spot out another player in the clotheslines. His right to ace gets taken down, and now True क्या राउंड चल रहा है? किस किधर किधर कौन है and they're also able to swing and strike down anyone. गोपी भाई से तो काम कर रहा हूँ Blackhawk to go. हो Last गया. man alive. टोपी भाई भी खत्म. It's quite funny how the only casualty on True Rippers is Kazin, and he too died because he ये was दूसरी concussed बार by किया है the लोगों ने rolling वो thunder, 3 and अल्ट then के साथ Aftershock सी got the हिट better किए of है. it. It's a funny way to die, but hey, as एग्जैक्ट long as you're getting तीनों the अल्ट rounds in सेम the थे. bag, रिजल्ट it's ब्रीच fine. अल्ट और That was quite सीकर्स. a claustrophobic round, so chaotic as well. पर ब्रीच का अर्थ सीकर के पहले ही वो लोग राम 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 साइड ब्रोटन पे खेलेंगे भाई तो कैसा इजीली रोक गाय सकते हैं True Rippers हाँ. realized साइड पे they कुछ can't आ ही नहीं just रहा plant the spike and एक get रेज back नेट के साथ to घुस the रहा ground. That's not going to be enough. काल हटाश They've already काल almost lost a round because of that. So they decide to send it even deeper inside. Especially when Kazin has a showstopper and the rolling thunder as well was sent towards the link. ओ भाई गोपी Before it even Gopi begins, bhai. but even this round is Oh. super fast. Look at the number of kills that Revenant Esports are getting. Even the camera can't catch this. 3 massive frags towards 𝐼𝐼𝐍𝐿𝐴 Rubble, and True Rippers are left reeling. इंपॉर्टेंट राउंड विम बाय स्पेस लो विम बाय स्पेस Back towards the B side and hope कौन to सा plant space the लो? spike in time. विम भाई ऊपर But का Revenant स्पेस ले already रहे. have the trap set. प्लांट कैसे हो The A-side take is not going to work out anymore. Revenant knows how to exactly विम counter भाई that. गोइंग फॉर And this time, ए भाई जोसेफ मार दे like to do where they ओह विम all भाई the way towards Rubble. It worked out, and luckily for them, True Rippers was deciding to push on the A side as well. Stars aligned for them. Revenant Esports, the chances of them winning out this round are quite massive. And slowly and steadily, they're also starting to creep their way towards the B site. The first man found Blackhawk, able to strike him down, and now Vimp is left the last one on the naughty list. And 𝐿𝐵 probably caught on. कास्टर्स लोग बोलते हैं नॉटी लिस्ट नॉट. कास्टर side as well.
next to impossible to win this round at this point. Wimp will probably try to save the weapon if possible. गॉडसन का मैच का भी कोई आइडिया? कल है उन लोग का मैच. Wimp will need to make something happen. गॉडसन और कौन है? रेकनिंग. Too many players. Yes. कल आना वॉच पार्टी में. For him on the other side of that dark cover. And they know that given the time he's got, he doesn't even have the opportunity to go all the way around and recover the spike. मतलब अपन अगर जीतते तो गॉडसन वर्सेस वीएलटी होता सागनिक. He had to dive out of the smoke. And just पता like नहीं. that, Revenant Esports take their second. क्यों नहीं? Much needed round. अबे तुम लोग का राउंड डिफरेंस तो भी कम होता था भाई. Way more success on नेगेटिव these में बहुत था kills than राउंड they ever डिफरेंस. do in the buy 2-2 rounds. होता था तो तुम लोग का हम लोग का It's a bit स्प्लिट वन weird, वाला सीन होता but hey, था. as long as they're getting some rounds, राउंड I'm no one to डिफरेंस का complain. मैटर करता है 3-way टाइम. अच्छा सॉरी रेकनिंग भी जीता ना रेवेनेंट के सामने. because they don't want to let Oh, Revenant Esports जाने दे. get even a foot in the door. The best. भाई कबीर स्पॉइलर मत दे भाई. And hell, if I was to Rippers, I would probably try this I would probably do the same thing. कबीर. They don't want to let Revenant आज एक ही Esports मैच है. हाँ हर get दिन एक ही any मैच momentum रहने वाला है here. ब्रो. Now, जाने दे बम मत हंस. so far, the first round that they were able to win, हंसने वाले दिन गए अभी very पूरे. aggressively and got the crunch ऐसा down to क्यों two भाई? Rippers before they even stepped into the fight. This जीतने time, पर a 5 मिनट massive की खुशी, brawl हारने towards पर A 5 rubble मिनट का was गम. in favor of Revenant उसके Esports बाद as वापस वैलोरेंट Pinstripe of चालू. trades इधर आना decided 2 to मिनट. help out Rippers and सामुरे की स्टोरी बोल रहे हैं क्या तू? एक सेकंड. And if I'm not wrong, both the rounds were स्टोरी तो 50 बहुत rounds. सारी है. yeah, both the rounds were 50 rounds. Yeah, so that's impressive. That in itself proves that Revenant Esports, they're able to टीम land भाई their कुछ तो shots. बड़ा but करने वाले Two Rippers, सूत्रों के they're just अनुसार. having the advantage of hitting the side and exactly having that unknowing factor in their strat so far. That mysterious aura they're able to build around. And this is what the advantage is when you're going to have 3 sides against you. As I said, it is an attacking sided map, and imagine if Revenant's going to get the switch in their hands. If they're even able to make the half 9-3, Revenant Esports are good. Yeah, they will be sorted. Nice TP from Mario. Clears out the bend and realizes there's nobody over there. The only thing standing in there. Nice shot, Ching. ए काली. हाँ? तो कोई क्वेश्चन आया तेरे को पूछना बोल रहे कि तेरे को सामुरे का बेस्ट प्लेयर वो लाइनअप पे कौन लगता था? आयन क्यों? Josh, they are coming in for the and with him clearing out now, they ऐसा क्यों बोल रहे भाई? क्या तूने क्वेश्चन पूछा मैंने आंसर दिया. ऐसा क्यों बोल रहे क्या? पता जो क्यों? था हाँ क्योंकि वो अच्छा प्लेयर था वो. So far, the kills are just straight up flowing in their favor. Has one more to go. ओ और विम. एक और एक विम. और एक. On the naughty list. ओए. And what? Is he gonna एक be बुलेट. able to catch that one? Way too close. नाइस ट्राई. In the end, right to ace. नाइस ट्राई रे विम. He gets that round for his ये team. रो रहा है. रो मत. Oh man, you can see the disappointment on the face of Wimp. He knew he had it in the hand. Almost got that 1v5 clutch set up. It was either the ace for Wimp or right to ace winning. It's quite a poetry in motion over here as both these players are on for glory. But yeah, that round wasn't supposed to go down in that fashion, you know? Revenant Esports saw that push towards Waterfall and Halls coming from a mile away. Two Rippers have done this in the बुलेट्स रहता तो और थोड़ा खेल सकता था कॉन्फिडेंटली और बुलेट्स ही नहीं except था. for the first round, which was बेचारा. fought on. See, Two Rippers, they never really tried to stay Lottie towards भी down. खरीद They लेता था always तो go भी to मार either देता था. Waterfall or Halls. Can't beat that Indian Eco bro. He's not that Indian Eco anymore. Indian Eco मैं बन गया आज के दिन पे. Still, it was a bit too close. Oh, not able to land that shot exactly in the ये target. ऑपरेटर Now, खरीद के he's got Case and सीलोंग शॉट ले रहे. side control in the hand once again. फ्लैश डॉज करेगी. Massive hurdle. वो 10 लाख का क्या हुआ? गए वो पार्टीज में खत्म हो गए पूरे. Revenant will need to try and come up with a game plan at the last moment. ओपा चैरिटी को दे दिया वो सब. Over flashes utilized as well. So much utility to try and stop Revenant in their track. Even one of the players going to get detained by the lockdown. अभी टेक्नो भाई So देखना. far, it seems like the stars are aligned inside this round. Showstopper used as well to get rid of the man in the clotheslines, and he will be able to do so. Perfect flashes due to blind out the players that are left on the aggressive side. And Revenant, they start to get the control once again. They're able to bounce back in style, able to spring back to action. Argue in the clotheslines with the judge. Hey, If Aryu anyone bhai peeks to in the judge smoke, main he hai. will be dealt with. Argu's judge Judge is main. knocking down anyone that stands सिर्फ against जज him. लेके खेलता है वो. हेवन पे देखा है कि नहीं? बी साइड पे बैठता है जज लेके क्लोज. स्मोक करता है खुद ही खेलता है Another क्लोज. round in hand. It's an 8-4 half, ladies and gentlemen, in the first one. And Revenant, they're going to be good forever. For them, it's going to be all good in the hood. Yeah, not a bad recovery from Revenant Esports. They fight fire with fire, they fight shotguns with shotguns. And the best part over here is that
Revenant saw this over-aggression from TrueRippers coming from a mile away. In both these rounds, they knew that as soon as that lockdown is invested, they will try to take control of halls and even maybe try to extend all the way in towards Waterfall. And because TrueRippers have done that so many times, Revenant are able to adjust and win the last 2 rounds for themselves, stabilizes them quite well. Otherwise, this would have been a very one-sided game. Exactly. Well, Crips, I mean, the first half is 8-4. As you said, it's not that bad for Revenant Esports, and now it's going to be Revenant Esports. They shine bright like a diamond. And you guys will be able to find out what the scoreline is going to be on the second half, but after this short break. अरे काली भाई आप हो वीडियो में अभी भी? क्या आप वीडियो में हो जस्ट सेइंग। हाँ मैंने देखा वो बैकग्राउंड डांसर। हाँ आज तो बैकग्राउंड पे। ब्रो फ्रिज मीट के लिए हीट के लिए नहीं ब्रो दिस ग्राफिक्स कार्ड इज मेकिंग क्या रे तेरे को पता है बम? कम विद मी इफ यू वांट गेम है काली तू अभी भी वीडियो में है चिल कर रहा हूँ मैं अभी बट ट्रॉफी अच्छा है भाई ये नाउ दैट्स कूल गेम ऑन विद टेम्पेस्ट कूलिंग पूरा टाइटल का डाला सगनिक सेम टाइटल डालेगा तूने हाँ तूने जो डाला वो तेरा कॉपी करके डाला कैसा है तू अभी ऐसा करेगा एक ही टीम में नहीं कर बिंदास कर एक ही टीम में तो जाने वाले हो वापस ओके फाइन आई एडमिट हाँ वो तो गया 7 सीज कंफर्म बट आई ड्रॉ द लाइन हियर व्हाट इफ आई निको 7 समुंदर 7 समुंदर पार एक साथ आप काली और सनी हैकर भाई को अपने से ज्यादा पता रहता है सब हैकर भाई ओपी शोपी हैकर भाई टैलेंट एजेंसी वाले उनको पहले सैटरडे जू आने वाले हो विद सगनिक क्यों जू में क्या है सगनिक सैटरडे नहीं उसका शो है अपने बम गाना गा रहा है इतना बी पसंद है सबको सब स्पॉन्सर्ड रहेगा तो ही आऊंगा मैं बम देख रेस निकल गया बाकी दोनों का गेम बच जो स्पीड में है वो वही स्पीड में गए वो लोग यू टर्न मार गए को अकेला साइड पे छोड़ दिया Jing has to hold on. He has to buy time for his teammate who's on the flank. I do max damage. Gets overwhelmed. Paradox in position, ready to strike. The spike नहीं अभी and with that kill, he's able to नेट किया तो हो जाएंगे. The paint shell once again. This will even damage him up quite a lot. All these players are super low on HP. ये रेड क्यों नहीं दिखा रहे? सब ब्लिंक होता है क्या अभी? नया है ये. अच्छा. I'm not gonna lie, I like the thought process on that round. I like it. The game plan was nice from Revenant Esports, but unfortunately for them, as you said, that overextension is where everything changed. And true only techno had the round in their favor. I can't even call भाई टेक्नो अगर जा रहे हो तो ये टेक्नो को भी लेके जाओ मैं तो नहीं आ रहा हूँ मैं aggression by design because it's not like they made a mistake by going in there. They all went in together fully intending to fight. I think that was more along the lines of TrueRippers countering them well with the flashes. न्यू है कैसे कौन सा वालो गेम का He was going to use it towards B link initially, but then he realized now not bad better off thrown towards the right hand side. So that's it's more like when they pedal is where they sort of screwed up. Because they had their backs turned against the opponents. And that's where things sort of fell apart for them. Look at 𝐼𝐽𝐻𝐿. Once again, this man has the judge in the hand. Looking to put in some work against the players and also looking to put in some lead in their body. Pump that guts full of lead. वापस जज लेके बैठ गए हो. 8 pellets at a time. Let it rip.
And if the shotgun fails, there's even the nanoswarms present over there. So this is basically a door shut in the face for Revenant Esports towards the B side. They will be forced to go elsewhere. And where can they possibly go? I mean, there's a triple stack on the A side. C seems somewhat susceptible because Wimp is the only one present over there, but he's also playing in a very aggro position, so he can see Revenant coming from a mile away. ओए हॉडिक मार दिया Though True Rippers are on an anti-eco, they have the guns advantage. हाफ इको राउंड है ना वो लोग का Yeah. With the intention of winning. Marshall Sheriff And so far, it seems like they're also able to win that. thirsty हो गया तो The Marshall was able to strike 2 players down. Josh doing his हेलो परिचय बंडल लिया नहीं लिया अभी तक Rippers for them. The lifeline starting to fade away. किसको सपोर्ट कर रहे हैं 2 more players to go. काय बम भाई Is in the close lines, catching him. रेवेनेंट डेविड से Argue in the close corner. हाँ रॉकस्टार बन गया बम भाई भूल तो नहीं जाएगा ना हम लोग को बड़े आदमी हो गया तो अभी Damn, dude, I must confess, Josh made me eat my words. I was about to... I wasn't even about. I literally said that historically, esports don't really have a lot of success on these contact play rounds, but this time they make it work so beautifully. Josh with a beautiful opening. The rest of True Rippers weren't even prepared for this one. I mean, you see the positions that these guys have, and the crossfire that True Rippers have should, on paper, have worked. But what's going to happen when Paradox just jumps across? You can't stop him. And when you're too focused on Paradox, your other guy playing towards the tree side will fall. Saturday Jew He has too much to he has too much on his plate now. So it's not possible to defend this. And just like that, Revenant steal the momentum away. And for the first time, it felt like Revenant Esports, they've installed some breaks in their strategy. That was quite a slow start in that previous round. But in the end, it worked out. They go from terror and fear to find that sweet victory. As now you've got Paradox with the judge. If you decide to kick him out, yeah, he will eat you alive. And that's what exactly happens. Already starting off with 2 bodies on their board. As 𝐼𝑍 is the one towards the waterfall. He will be dealt with as well. Way too low for comfort. Coming back. What's up, Mango? Oh no, my god. Oh well, that's one way to deal with Paradox. Just shorty him away. Another satchel hoping to get in the faces of their opponents, but he will be shot down mid-air. So that's Come back again. From Revenant Esports. Unlike True Rippers who weren't able to maintain their pistol momentum, Revenant Esports survived the anti-eco. And just like that, we are at round 16 already. Finally, True Rippers have some weaponry. But guess what? Because Revenant didn't lose all that much, they also have weapons to boot, and they're even closer to their ultimates. One of Razor, 2 point away from the shadows. Josh 1 point away from the Seekers. So yeah, all these info plays will be available to Revenant shortly. I mean, look at the amount of credits too they have. They're chilling right now. That one single eco round changed everything, the entire course of the upcoming future. And now Revenant, they have managed to take a little bit of control so far. They were quite deep towards B main, and they're also going to decide to backpedal. Don't exactly know what Revenant's game plan is over here, but so far they've also got the rebel control installed. Right there. Let's see if True Ripper is able to realize what exactly is going to be served up on their plate. Yeah. And True Rippers are playing a very defaulty 1-2-1 setup, which is not conducive to contact plays like these, but at least the trailblazer that Techno used gives them a little bit of information. I've got your trail. लग गए What the fuck? Them down. Everybody gets bhai. to try to make their way across the rotating doors. It turns into a rotation of death. Paradox tries to save them. Jinx presses from the other side, and just like that, tree control has been reacquired. But things are already going wrong for for Revenant Esports. They can't take post-plant positions now. Oh, never mind. Unless they don't want to take post-plant positions. Timing. This will be a disaster. My God. Oh, the timing doesn't work out. He pulled out the showstopper too, man. Oh, you gotta feel bad for that one. As soon as he looks away, the opponent peeks out. And so far, True Ripper's still able to be inside that race. Revenant Esports, as I said, for them, the money's stacked up. They're good. They've got a lot of money. And you can see the watch party as well. तो ड्राइव पे इन्होंने जो 2 किल मार के बचाया ना इसको
You love to see that. But yeah, initially it felt like for True Rippers, it's going to be a smooth sailing inside this round. It's going to be an easy defense. But then you've got Paradox just striking everyone down that stands in his path. Yeah, he's the man you have to be on the lookout for. क्या टाइम क्या है अभी तेरे इसमें? Example is this guy super consistent 138, in his 137. fragging. 133 He's already on the 2 up and up when it comes to 1 top 5 players. मेरा of भी this अभी हुआ tournament. बीच में हैंग He होके might just steal 130 Aziz's हो spot. ओ भाई पैरा का एंट्री Nice entry there. Just diving straight inside. No fear, no remorse, and absolutely no opponents to stop him. Spike planted. So far, we're seeing some incredible game of Valorant as now True Rippers. At least they've got the 4 players up. This retake is definitely possible if they're going to try to come up with a middle ground here. Wimp वो ये लोग को पता चल जाएगा कि टॉप साइड लिया है लोगों ने वो पता ही है अभी Wimp gets shot down way too low. 40 HP left over. Argu is there to back him up, but look at Revenant. They're also trying to push against the opponents together. Ace. Nice. Recon Phantom. First contact. The other player will try to swing out, but it's not going to matter. Right to Ace himself gets both of them down. And already comeback incoming. And the last Will be player, अच्छा रहेगा which is Wimp. These guys are on the investigation, which will be Go caught soon good. enough. It's so funny to see. Oh, him right दोनों मरे by himself. I mean, दोनों मरे लोग Paradox was right next to him. But भी नहीं Paradox हुआ never peeked out. He was baiting Ace out. He was hoping that since they kill Ace, they wouldn't check that same angle. ये They'll गलत expect कर the second रही player है to be over there. सेम But guess what? Paradox was सेम never में दोनों needed. बंदे चल दिए Ace holds the ground by himself, and काली भाई टीआर का कॉलर कौन है time in these post-spawn positions, they just hold. Are the you? sight. This time they pushed अभी deeper वापस in गायब हो गया towards लग रहा the upper. है इतने रम से आ रही होता अभी पता नहीं कौन है वापस काली हाँ व्हाट्सएप चेक करना हाँ I रुक mean, at this point, True Rippers, for them, the main goal is going to be just scoop the round you can get. Just try to scoop it. Don't try to overthink anything. Yeah. ये I लोग mean, you can't ये think too swing much. round है यार Might as well just pick up the buckies and the वहाँ भी सकते हैं shorties. लोग के पास ब्रीच अल्ट Hoping है they will do the tricks. bazooka है इतने में हो गया तेरा सगनिक That also is. Done हो अरे गया वो पता नहीं क्या At this point, in खराब हो गई eco rounds like these, True Rippers can only rely on trickery and deceit. They can't hope to face Revenant head on. I mean, even with weapons, they hesitate to face Revenant head on, so forget about this one. But the AA hold has worked for True Rippers in the past, so they will try to stack it up once again. Revenant, on the other hand, fully aware of the economic situation the True Rippers are in, are also taking their sweet time. It's weird because in eco rounds it's expected. कौन है टीएस डिस्कॉर्ड पे Who have the vice, कम हुए शायद से लोग वेंकी भाई और ये म्यूटेड है it's ये not लोग just ecos, right? Every now and then we see Remnant slowing down, going for these contact plays, which we aren't used to seeing them do. Well, I guess that's an easy one. One way to take a side control. B side easily taken away, and now True Rippers, let's see if they're going to be able to scoop the round off the dirt. Revenant Esports, they're all the way deep in the site. It's going to be a tough one to make him pull out of this one. As Argu doesn't even have a lot of HP. He does have to judge though, but someone needs to take a close range corner engagement with that man. And as soon as he tries to push out, he will be by Ching. Disrupt was there to get only one. This man will be dealt with as well. Things are looking so good so far for Revenant on the attacking side. एक राउंड दो राउंड जब 10-10 होगा तब लेंगे shining bright like a diamond. अबे इन लोग को समझ तो आ गया है कि वो लोग क्या कर रहे हैं. How about ये लोग एक कंट्रोल लेने का ट्राई करें एक्टिवली. ये बार just a couple points away from two massive ultimates. Meanwhile, Disrupt has had that rolling thunder in the pocket. मैं मेरे को हुडी चाहिए वाला अच्छा लग रहा है. Maybe it's about time he uses it. नहीं मिलेगा क्वालीफाई नहीं हुआ. He's not made any of those hero Sad. yet, so maybe this is the round. And the moment I say it, he tries to play aggro towards C Mount. दरवाजा खोल के फाइट करने वाले. Now this could be a problem, you know. If True Oh Rippers no. crunch Revenant from the back, No fighting for you, beaches. this whole lockdown is probably not going to have any value, and Disrupt lets it go already. That's 𝐿𝐼𝐍𝐿𝐼𝐻 to start getting inside. He not only gets the kill onto Josh, but also destroys the lockdown, and all of a sudden Revenant see the round crumbling in front of their eyes. But you know what? This is actually a good thing. They bait out two ultimates from True Rippers at the cost of just one life. I think that's still fair. I think they can still bounce back. This is massive, but we always talked about the initial hit of Revenant Esports. And if it doesn't work out, that's where Revenant Esports sort of just starts to crumble down. Yeah, that's and the so other side far, of the they coin. have managed to counter.
So far, they've managed to counter the initial hit. Let's see how the upcoming game plan is going to work out. Now, Revenant Esports have been forced to think this one out. Fake हो गए, fake to be. Really close to the door, and I think so. This might just be a little bit of fake setup on the A side. As soon as they're going to use the Rolling Thunder, yeah, they're going to decide to just stroll on the B site, and that's what exactly happens. Nicely done. B site control might just be taken. मत जा अंदर मत जा नहीं गया on the other side of the smoke with the judge, and he will take care of Paradox. He takes care of business. गोपी से तो विम्प सारे डुअल जीता है। Now as Wimp also takes off Blackhawk's head. गोपी भाई ले रहे गंदे duels. They find themselves in spots they're not used to defending the B side from. Oh, nice spray by Ace, but he still has a lot. Yes. 1v4. लियो भाई। Wimp is already sticking. अरे नहीं almost. And they both let go of the spike and they deal with him quickly. That's what happens when you make Revenant Esports. मेरे को लगा चारों मार दिए उसने अकेला बचा था 1v1 round that Revenant have hit B in the past, they usually defend from either the C link area or the B upper side. They're not used to falling back towards the spawn side. They're not used to falling back towards the rotating door area. That's not the kind of team that Revenant are. They don't like playing out of the site in these post spots. And when you push them into these uncomfortable spots, you make things a lot more easier for yourself. I mean, I like the adjustment from Revenant Esports, but later on, as they got the site control, they were just not able to flow in with the kills. That's the main issue right there. The kills were not there. The fragging department in that previous round didn't really work out in their favor. Right to Ace in the end, though, he tried to pull things together, but the problem is that he didn't really have a lot of firepower backing him up. He was the only man left over. So far, True Rippers, they're really close to victory. They can smell it. They can sense it. But Revenant Esports, too, they're looking to pull them back. I wonder what would have happened if they didn't go for Magic news लेके आया मैं. Decided to send it all the way towards the side instead. कौन तो बोल रहा जीजी हो गया. Team that goes for a lot of these fakes and contact plays, you know, so they are playing. मैं आदर्श ने कल क्या शुरू डाला था सगनिक? क्या डाला था? Oh my God वगैरह वो सब. To that factor, क्या देखा नहीं मैंने. I don't think that's enough. Oh my God, life takes a very big turn. ऐसा कुछ तो. Still have a little bit of money, so it's not like they're out of the game yet. But True Rippers. Oh my God. This judge. फिर और BGMI खेल रहे हैं ना अच्छा उसका टीम बना रहे थे BGMI. Now you guys been playing in very cheeky spots on the other side of these. आदर्श प्लेयर बन रहा है. Once again, Revenant 100k BGMI खेलेगा. Always take control of this B orb first, farm it, and then they spread out elsewhere. But this time they go for the heavy commitment. Paradox diving straight inside, running into Techno, running right past the judge as well, and now RU has an upgraded weapon. Good news for that man. But instantly you see that initial hit not working out, and now you can see Revenant, they're going to start it. They're going to be forced to think this one out. As lockdown's going to be initiated too, that means they're in a huge panic situation. We'll need to get rid of this entire lockdown that is being placed by the opponents, and Revenant know it's pretty much donezo for them so far. It's all about the initial hit, ladies and gentlemen. It's all about the initial hit. If we're able to counter that initial hit, Revenant Esports, the secondary hit is a little bit too shaky for them. Yeah, you can kind of deal with it, and True Rippers have dealt with it really well. Revenant also deciding to push the envelope a little too much. They tried to break the lockdown. They tried to send it in even harder rather than falling back, hoping to not give up on the momentum that they had acquired, which wasn't much to begin with. And that's their undoing. True Rippers on map point already. Split seems inevitable unless Revenant Esports can mount a massive 4-round win streak and somehow push this game into overtime. Stream are not reading chat route भाई. बोला तो तेरे को वैल्यू का बताऊंगा बाद में. ऑन स्ट्रीम नहीं बता सकता क्राउली. क्या कर रहा है? Cancel करवाएगा क्या सबको? Come back. The margin for error is quite thin, and Disrupt this time is able to start things off. Looks like GG, bro. Looks like GG. 1v1. Versus Josh. Back and forth on the board. Best friend versus best friend. Never Josh going mind. for the plant. This plan might just come through, and it does as Wimp seals the deal. Lotus is won by True Rippers. Very good. To the decider split. 2-1-8-8. It is indeed coming through, and this time True Rippers did really well at the last round. Every now and then, Revenant Esports were hitting them with the contact plays. They were hitting them with the slow approaches. But the moment Revenant decided to go in for a full commitment in the last round, True Rippers dive deep inside.
क्या क्या था वो? उसका ऐड आ गया मालूम है क्या? ऐप में यूज कर रहा था, कुछ तो डाला था उसने और ऐड रन हो गया। नशा। कैंडी रेसिपी dude, कैंडी रेसिपी। अक्टूबर में बीजीएम में खेलने वाले क्या? दोस्तों मैं वॉशरूम जाके आया, उसका ऐड आ गया मालूम है क्या? ऐप में यूज कर रहा था, कुछ तो डाला था उसने और ऐड रन हो गया। Hey, be right back. Choices you made, did you make them up? Karan.
Forever I'll follow. You'll be my holy ground. You forever I'll follow. In immortality, I can see you हेलो हेलो। चालू हो रहा है कि नहीं मैच? नहीं भाई, नॉट येट। अभी मजा आएगा देखने के लिए। डबल टू स्प्लिट है ना अभी? क्या डबल डुलिश? रेवेनेंट का डबल डुलिश थोड़ी है अभी। आरएनटी स्प्लिट डबल डुलिश खेलती है। नो ब्रो, ब्रीच वाला खेलते रहेगा अभी मोस्टली। तुम लोग के सामने तो ब्रीच वाला खेला था लोगों ने। हाँ, यस, इट वाज ब्रीच। ब्रीच ने हम लोग को बिच बना दिया। एस भाई, एस भाई, ही इज फैनेटिक लियो ब्रो। Immortality. ओ भाई, ये क्या बच गया है? Yes. देखना है मेरे को ये लोग क्या खेलेंगे, कि वो तुम लोग के सामने जो कॉम्प रन किया था वो करेंगे, या फिर वो जेट रेस डबल कंट्रोलर वाला जो ये लोग पहले गेम में खेले थे वो खेलेंगे। दिख जाएगा के सामने लोगों ने खेला था वो। ये लोग तो गेको खेलते, इतना मेरे को पता है। जेट, गेको, स्काई और डबल कंट्रोलर आई गेस, टीआर वाले। Match एस्टर के found. सामने गेको खेला था। नहीं, एस्टर के सामने नहीं खेला था। बॉट्स के सामने गेको खेला था। अरे मैं वेयर इज टाइसन? टाइसन नीचे है क्या? यस, इधर सोया हुआ है वो। मैं निकलता है भाई, रेड के साथ उस पर जाना है। भाई वेंकी, ऑल गुड? Death match. Warm up. हैव अ नाइस स्ट्रीम, थैंक यू। व्हाट्सएप
ज़्यादा सा मेजर ये तो नहीं है ना सर्जरी? क्या हुआ भाई? किसका सर्जरी भाई? क्या हो रहा है? वेंकी के डैड का है कुछ तो। ओ भाई ये चालू हुआ तो बोलना है कर मेरे को। डेथ मैच कर रहा था तब तक। टाइम है अभी। ऑलरेडी हो गया 5-10 मिनट और कितना टाइम? अबे अभी वो एनालिस्ट लेकर आए ना तो अभी बढ़ा दिया रहेगा सेगमेंट का टाइम बीच में। अलविदा। हम लोग को भी अगर ज्यादा टाइम मिलता तो हम लोग कुछ अच्छा प्लान कर सकते थे। टाइम ही नहीं था बट मैप्स के बीच में थोड़ा सा टाइम चाहिए था बस। थोड़ा सा 5 मिनट अगर मिलता ना। ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा टाइम। अलग रिजल्ट्स होते फिर। Fly, my friend. Got 3. Got 4. बल्ला कोचिंग बीसी किसमें? तुझे में? शरीफ गंदा है मेरा। यूज ही नहीं करता मैं शरीफ। बहुत टाइम है खाली अभी, कम से कम 10 मिनट है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ईशान भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई टीम बनी नहीं है, सब होगा आफ्टर स्प्लिट। But what you are thinking is not right. Stay down. Got 3. ओए चढ़ रहे लोग रूम सार पर। क्या बोल रहा है? ये डेथ मैच में अच्छा सब रोप चढ़ रहे ऊपर, सबको मार रहा हूँ मैं, तो भी चढ़ना है सबको। अगर उस दिन घूम घूम के माले दिन का बात हो गया, वो दिन गया, महीना गया, वो हफ्ता गया, सब गया। अबे ये नोजी का YouTube हैक हो गया है। Fly. नोजी पता है तेरे को, जो ब्रीच था पहले,
एने का हैक हो गया, ये देख। एने का ना? हाँ, उसका YouTube हैक हो गया है। यार 747 द किंग ऑफ वीमेन। ये लोग कितना टाइम ले रहे हैं यार। ओह, चालू हो जाएगा थोड़े टाइम में। ओके 6 किल्स बचे मेरे से। 6 kills हो। Dominating. One kill remaining. Fly. नहीं भाई, रॉसी तो एने का प्लेयर है। रॉसी नहीं, नोजी क्या है मेरे को भी पता नहीं, बट सिर्फ उसके हाइलाइट्स देखे, ब्रीच के क्लिप्स देखे मैंने उसके। जो उन्होंने डाला था कुछ बड़ा होने वाला है। सारे शो मैच है यार, जितना मेरे को पता है। अब उससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। कौन सा शो मैच है ब्रो? मैं भी खेल सकता हूँ क्या शो मैच में? आपके लिए तो रखूंगा मैं स्पेशल। आप आ जाओ दिल्ली, आपके लिए स्पेशल शो मैच लगवाएंगे हम। ठीक है, आता हूँ। अगर नहीं हुआ ना तो देख। Match found. नहीं हुआ तो तेरे को जो खाना है मैं खिलाऊंगा दिल्ली में। अगर हुआ तो तू खिलाएगा। ऐसा नहीं भाई, तू ही खिलाना चाहिए ना। खाने के इसमें क्या है भाई? अगर खाना तो खिला सकता है तो अच्छा खाना तो खिला सकता है तू मेरे को। भाई अभी गरीबी चाहिए मत कर भाई मेरे को भी भाई, इसलिए तो तेरे से मांग रहा हूँ मैं भाई कि तू एटलीस्ट खाना। अगर पार्टी देना तो पार्टी लेकर आऊंगा तेरे को मैं। बोल, डील है कर। क्या तू मेरे को खाना खिला, मैं तेरे को पार्टी करने लेकर आऊंगा। तेरे को पता है मेरे को वो सब करना पसंद नहीं है, इसलिए तू दे रहा है मेरे को डील। ये नहीं, अच्छा डील है भाई। कंपनी देना तो आ ही सकता है तू भाई। हाँ ठीक है, हो गया, चालू हो गया। हाँ चालू हो गया। Fight. भाई ये इतना सरप्राइज क्या हो रहा है? ग्रुप स्टेज में मैच में भी गेको खेल चुका है वो। एक कास्टर भाई फुकट हाइप कर रहा है। उसने मैच कास्ट किया रहेगा ना भाई। Oh my god, wait, hold on, are you? It's gonna pick that gecko, ladies and gentlemen. काली बोल रहा हूँ, स्ट्रीमर कास्टर बन जा तू भी अभी। हाँ वही बच्चा है। साग्निक मेरा कोच बनेगा तो, को कास्टर बनेगा तो मैं मेन कास्टर बन सकता हूँ। अगर मेरा को कास्टर बन सकता तो सब जगह सपोर्ट ही मांगते रहते हैं कुछ मांगता नहीं हूँ मैं, देते रहता हूँ उसे अभी आजकल। देना ही तो नहीं है। I thought for some reason the disrupt was the guy on the gecko. My bad, it was RU last time as well. So apologies for that, but hey, I'm just happy. गोपी पे रश होगा, गोपी पे रोक नहीं पाएंगे। गोपी भाई Oh screen, sorry dudes. This will let not just the entire team but even the wingman sneak up. तो भाई चिंग भाई क्या कर I'm really sorry dudes. ए भाई आगे कैसे हुए भाई तुम लोग? तू पीछे मत जाओ आगे। तू तो सबसे आगे रहना चाहिए। तो उसको पीछे पसंद है आई थिंक। यस, ओ टेक्नो भाई।
Wingman taken care of. Yep, Spike Karan on the back, and then you've got Kazin. Like a bird in the skies, able to shut down anyone that stands in his path for glory. हाँ भाई. Esports still trying to bounce back and make sure that they're spinning, or at least bring it back to action. But मैच तो देखो यार. I like how they didn't send in the. क्या टाइम है तुम लोग का अभी? 18 सेकंड 17 सेकंड 16 15. Plus, I also respect how Revenant made the rotations really quickly. Like almost everybody. 12 11 10 9 8 7 चलो आ गए. If Revenant can keep तुम लोग के साथ आ गए. ये मेरा वाइपर दिखा ही नहीं ना साग्निक स्प्लिट में. Ah, fuck रे yeah man. Unlucky. खेले नहीं अपन स्प्लिट. तो मेरा वाइपर दिखता था हैकर तेरे को. बस वही एक स्प्लिट मैप में. भाई अच्छा खेल रहा था भाई वाइपर में. मजा आ रहा था वो मैप में खेलने. नहीं करूंगा मैं. अच्छा तो तू प्लेयर है ही. बहुत मजा आ रहा था मेरे को वाइपर खेलने. So true rippers will need to stay as cautious as possible. मतलब मेरे हाथ में रहे तो मैं तेरे को डुलिश छोड़ के कुछ ना दूं. बट वो मेरे हाथ में. And once they're found, Revenant will be back. क्या कर रहे हैं अभी साग्निक ने नहीं दिया मेरे को खेलने. And trying to assert dominance. साग्निक के हाथ में था सब. चुप हो जाओ. सबके हाथ में मेरे स्मोक था. उसके हाथ में स्मोक था. तू स्मोकर ही है रे. इतना मत स्मोकर ही है तू साग्निक. Trapped but not cornered. Keeps himself बच alive. गया. ओह नहीं. गोपी भाई छू के वापस ले गए दूर से. भाई वो टेक. Now that Revenant Esports have the man advantage, they let go of the B side, but that is completely fine. They've recovered weapons. They have utility as well. Plenty of flashes to help them set inside. The only person who could save them is 𝐾𝐞𝐫𝐢𝐻, and he's coming in late. His luck भाई टेक्नो का लर्क कर दे. and he's already made a difference. लर्कर ऑफ द ईयर. जो 1v1 हो गया. गोपी भाई निकालते. गोपी भाई वर्सेस डिसरप्ट भाई. Good question. He's got plenty of time. He does. एंगल भी ऐसा लिया है कि ओह गोपी नाइस ट्राई. नाइस ट्राई ड्यूड. गुड ही भाई मेरे चैट में एक बंदा बोल रहा है इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया तो वाइपर भी खेल ही लेते थे. करन तेरे को बोल. भाई वो तो किया ही था खेल भाई मैं खेल ही रहा था. बट स्प्लिट 1 में हम लोग ने स्प्लिट खेला ही नहीं. Maybe it could have worked out, and I personally think, especially when you're on an anti-eco, you don't really need to think a lot. कोई निकाली. टेक्स्ट टीम में खेलता वाइपर. ठीक है. Well, now we will see quite. वही खेलना पड़ेगा. Weapons upgraded for Revenant Esports and ए उधर नहीं जाता. ऊपर नहीं जाता. क्या किधर लगा रहा हूँ कैमरा चिंग पे पता नहीं ना. उधर नहीं लगाते. रहेगा भाई उसका आया था एक बार ब्लू. This is a very fast approach. Okay then. ये देख वो कैमरा लगाने में बिजी है. किल भी मिल गया उसको. बंदे घुस गए पे. ये क्या किया. His setup is amazing and the nade from Valorant is even more. भाई ये तो पार्ला के किंग्स है भाई साग्निक. मेरे को लगता था अपन ही है पार्ला के किंग्स. को देखता हूँ जगराज. 2-2 स्पॉइलर जोन होगा वाला. आए इसका माउस गया भाई. भूख लगा मेरे को कुछ खाने के लिए लेके आया. Somewhat hesitant to send the wingman in with the spike, at least towards the B side. But now they make it happen really well, and this is partially because they knew that Revenant ठीक भाई लगा दिया अब भी लगा है ना. Because there's a cipher on the team, they know that Ching loves to play from screens and from heaven. So they can send in the spike on the back of the wingman without worrying about too much. Nice stuff by Disrupt. Threat being neutralized, and that was a massive one too. It needed to be neutralized there. The amount of map control that man had in his hands was incredible. Wimp as well, trying to push out towards heaven, gets dealt भाई with. इसको नहीं है मान मर्यादा सेंटिनल की भाई. Good shutdown. Foolish है ये. Ching. Blackhawk in an off angle, able to find out 𝐾𝐫𝐿, but that's all he's gonna get. The instant trades on the board. True Rippers. 3-on-3 scenario, they still haven't really got any sort of advantage. भाई क्या एक और मार दिया उसने. टप पीक करे जा रहा है. देख वापस करेगा. देख. 2-on-3 scenario, man advantage in the favor of Revenant Esports as they manage to strike one more down. And for True Rippers, बड़ा रहो विनस. is falling apart for them. A 1-on-3 seems next to impossible. Disjointed, discombobulated. True Rippers kind of falter, and Revenant pick up the slack.
this wasn't a very powerful run by True Rippers, but I guess that's partially because they wanted to go for the defaults more and not really commit early on. Little did they know that Revenant would seriously commit to these Little did they know. Even after Paradox was taken down quite early, they didn't expect the rest of the peaks from Revenant. Oh, well, I mean, why would they? Right there. They're already a man down, so it doesn't make sense for Revenant to continue pushing onwards and picking up these fights with their own free will. So the aggression from Revenant really working out. Now the True Rippers are on an eco, let's see if they can convert this. I mean, Revenant find quite a lot of success on ecos every now and then. I wonder if True Rippers can pull off that thing as well. Blade Storms, Cosmic Divide, and even Seekers available. True Rippers. They've got quite a lot of abilities that can help them get a side control established. But then you've got a team like Revenant who's not scared of anything. They're looking to take the fight against you, looking to get up close and personal. Dizzy sent in, nothing found. The detection was there, but the blind wasn't, and that's a massive issue. Good Satchel to just back off. Paradox able to steal one. Swing it, baby, Gopi. And then Blackhawk wall strikes into action. Amazing recovery from Paradox. I thought he was a dead man over there. Yeah. Trailblazer hitting him, plus there's all the other util that 𝐿𝐼𝐻𝐿𝐼 is throwing in. I thought that was it. But Revenant maintained their calm, they maintained their composure. Oh, Techno catches Paradox onto investigation. And also able to put him in his grave. 30 seconds He doesn't left. have a lot to do. Not even a lot of HP, not a lot of time as well. Techno is also trying to fight demons in his heads. And the monsters around him on every step of the way. Quite Kali, scary, especially when they know exactly where he is. आदित्य बोल रहा है कि क्रिप्स की तरह मिमिक करना माइक क्लिक कर दे अपना कुछ नहीं जाने दे And it is such a weird बहुत round. डेंजरस है बोल दे नहीं मैं तो ऑलमोस्ट भर ही रहा हूँ They सब get into the vents. क्यों भर रहे Revenant don't care. ऐसे मैं भर रहा हूँ हम लोग हार गए ना इसलिए अच्छा गुस्सा निकल रहा है क्या Towards the male area and they walk निकल past. निकल But बोलो as soon as the सारा Gecko recovers his utility, यूरोपियन टीम it's बन kind गई of सब obvious that their पे position is present over there. Do Revenant care about that? No, they don't. निकल Paradox speed by himself. Ace was there to cover him, and he somehow gets back. And True Rippers would have expected the fight, but not at that timing. So that's the first thing that really just caught them off guard. Plus, there isn't any Cypher util placed towards the mid-vent region, so that's another weird thing, right? Because that's partially the reason why Techno couldn't go over there. He was expecting a lot of resistance towards 𝐴 and he thought, yeah, maybe I'll just backtrack. Maybe I'll head back towards male. Surprise, surprise, they have been following him every step of the way. So it really does discourage you when you can't figure out what exactly does Revenant intend on doing. I mean, you know that they want to fight, but the timings at which they try to peek you, it's not something that True Rippers are fully comfortable with. And willingly giving up control of Vent, that's just absurd. ये किधर गया रैबिट किधर गया फिलीपींस में ये भी See the hesitation in True Rippers' faces, right? They expected a lot more to be over there. And they were pleasantly surprised when they got hit by mail. So, yeah, that's something True Rippers will have to deal with. स्प्लिट वन खेल रहा था उधर VCL फिलीपींस में Unless they अच्छा completely खेल रहा figure out था that वो वाला आरएनटी Revenant aren't really keen on taking vent control and they then start abusing that area. अच्छा Until then, True Rippers are gonna have to find their way around this entire match. It's kind of like trying to take a shot at the dark. 𝐿𝐼𝐻𝐿𝐼 or Eugene-S. Still, though, the scoreline's quite close, right? So I don't think so any of these teams are going to be trying to... Oh, Gopi. Gopi भाई ने Blackhawk Gopi भाई साला गोपी 2K You just wonder, True Rippers. क्या लग रहा है कौन जीतेगा स्प्लिट 2 Fate isn't really इधर ये स्प्लिट है inside this round. एक ही मैप है इधर Big man, the big dog already out. रेवेनेंट गॉड्सरन ने तो ओरंगुटन में से जीतेगा कोई See if the rest of the team's able to establish something. थर्ड बोला है तूने Trailblazer, एंटी he's को बोलना boosting पड़ेगा and utilizing मतलब it. तीनों में से कोई भी एक Trapped in that side. लाउडे Used as well to get rid of Josh. गया and गेम हो won't गया be गेम हो dealt गया with. Cruel move from RU. Just punishing his opponent for making that mistake. क्या कर दिया भाई पहला किसी को किल नहीं देता है रे Paradox is like, you don't kill me, I kill me. Just don't want to give you that frag. Don't want to give you that satisfaction. That's a nice सीकर से मार पहले It allows True Rippers to गोपी भाई ready but unfortunately Blackhawks मार already के आ गया हाँ now they've been forced to go towards vents and अभी ट्रिप्स खाएंगे Revenant Esports can hear this. It's not like the Cosmic Divide will cut audio by any stretch of the imagination. Oh, and they still get trapped with the wires, the cameras as well. Jing is already in position to stop क्या the blunt.
हाँ Wingman भी नहीं है. The wingman isn't even available. मैंने They कहते can't even फक्त let बेल this बंदे guy ना plant. नॉर्मल Argue somehow survives that, dodges the bomb line as well, which is योग very दो impressive until you take a look at the timer, and that's when you realize the amount of pressure that's building up on True Rippers. Nice, Gopi. With Blackhawk coming inside, there is Let's just go, no Gopi way bhai. they're able to get over भाई every single गोपी hurdle. भाई खेल रहे strong. Blackhawks Yes. massively inside split. Full resurrection. So far able to put up Damas pressure a on the hero. striking department. But as I said, Revenant dealt होगा with through the smoke and अरे मला mid, वाटलं तेजस आहे that in ना. itself right then and तेजस there, पण आहे ना तेजस होता ना तेजस. मगाशी. हाँ, तेजस पण आहे ना cross. Things didn't work out for them in this तेच hit. पुढे एकदम. 4-2 Still valiant effort though from 4-2. considering even though the initial hit didn't work out, they try to आता चालू readjust, झाली they try to do something. आणि TRS पण. True Reapers Right, but also Revenant maintaining composure. आता भरपूर टीम्स आहेत ना. Josh to that. 6 टीम्स आहे फक्त आता पूर्ण इंडियामध्ये 6 टीम आहेत. 6 टीम्स आहे इव्हेंट तसं मध्ये नाही पण पूर्ण इंडियामध्ये 6 टीम आहेत. आहेत खूप आहेत Revenant are खूप on आहेत. सगळे pace, तुला ओळखतच असतील ना. unbothered. तुला कोण पण They're very बोलणार comfortable letting True Rippers take control of A Heaven. They've guarded from the back, but right away gets hit with the dog, and that is undoing. Nahin, Ching galat still flash. alive on the other side of the smoke, making things very difficult. How is he able to keep so Baapre. much impact present in this location? Even the flank comes in, and now they get गोपी भाई crushed. मारो गोपी भाई जाने मत Rippers दो falling like flies. Gopi bhai. Somehow 𝐼𝐸𝐻 has been spotted by Blackhawk, and now the trap is set. The bait is fully in play. क्या And Josh कर रहा है is भाई making जॉश? So much noise on the zipline. Josh, He मेरी wants तो to गांड get फट रही है something इसको out of देख के it. He's like, peek me, bro. I dare you. I double dare you. गया ये ओ क्या जो भाई ये भाई का क्या कर रहा है भाई Deals with his opponent, nicely done. The mind What games the- played perfectly, and Josh with a 4K. उसको खुद को भी नहीं समझ रहा रहेगा Makes it out alive from that chaos. उसको पता नहीं क्या कर जोश भाई मजे ले रहे हैं The भाई. way I can describe क्या this कर round. रहा है? Where else have you seen a player hide inside that A Heaven smoke? And survive for this long, by the way. हाँ भाई. I mean, to some extent, I felt like True Rippers अपने को कौन मारा था रे सगनिक right? Since they had मेनली no पैरन red, और किसने मारा था there's a player in vent. अपने को तो सब लोग पता ने नहीं, मारा जो आ रहा था बजा के जा रहा था नाम नहीं दिखा मुझे हे आणखी तोपर्यंत नाही ना. They can't get over it. ये सिटी स्पॉट पे खींच के उठा वो सिटी स्पॉन से निकलेगा ना अरे वो सिटी स्पॉन से निकलेगा देखना IQ, it's straight up. स्पॉन के अंदर थोड़ी खींच डालेगा वो बाहर डालेगा ना निकल देगी Fake Trailblazer to pull out the peak from the opponent. Josh is so confident in his firepower. You really need to be, especially when you know what's at stake. Right to ace is soften up a little bit. Wimp as well, just falling back from his position. Hawk sent. Oh, Was not flash popped, नहीं so हुआ no है. information नहीं, conveyed but just yet, spotted and है. now he knows that there is someone present there. That is आगे है Wimp. रे. Ultimate एक use second as well. easy. Thrash, let's see if he's able to find someone. He was, but Kaysen deals with that person before Thrash But even they don't hits know. him. क्लियर किया ना उसने Blackhawk is towards B main. सब चेक कर रहा है अभी Got no clue. नाइस गोपी Also uses the aftershock, but Blackhawk able Nice to slide flash. one, sweep one under the rug. Right to ace as well, able to just follow up with the momentum that's been found by his teammate. Disrupt strikes back in action. That's just a 3-on-3 scenario. Still way too कोई close बैक साइड to स्मोक कर दो गोपी भाई positions are वही getting करेगा away, वो। but then you've हाँ, got कर दिया। Ching giving his team a huge man advantage. Oh my god, they had no choice but to fight over there. They were kind of trapped. Revenant esports setting things in motion, playing a 5-dimensional chess game over here. I love Ace how ने बहुत Wimp important decided to just kill मार fall दिया। back as soon as he was spotted over there. Revenant pushing all the way towards A main gives them the information that True Rippers are indeed going for this B hit. And especially when the Thrash is used, they can kind of figure out that True Rippers are उसने putting जो all their eggs in aftershock one मारा basket. उससे box cover होता है अगर? So Revenant start the rotations, शायद. but they're already late, right? So True Rippers think we have a little window, a timing window which we can exploit. We can get to the site and plant before Revenant. नो क्राउड आई सॉ देयर वाज सम टिकट गिव अवे टिकट्स दिखा नहीं रहे वो लोग पता नहीं रहेगा क्राउड तो रहेगा बट दिखा नहीं रहे वो लोग क्राउड के में लोगों पे एक दिखा रहे होंगे That surprise element हाँ, from लोगों पे दिखा Blackhawk रहे makes होंगे, sure सही the True बोला। Rippers don't have post plants. They are पर forced to लोग play को on अलाउड the नहीं heaven, है and that just makes things so much more एक बार भी दिखा नहीं अभी तक going into the retake. यूट्यूब पे भी दिखा था नॉर्मली Good adjustments from True Rippers, but Revenant for a step ahead. The proactivity really helping them out. Paradox this time, though. I mean, you can see the amount of early information Revenant's able to get in their hands. They're always just having that one player peeking out, gathering that information over and over again, and just shoulder peeking that for the confirmation. वो क्या वन वे So you थोड़ा can राइट at least say that they have a visual confirmation of enemy's presence at all times. This time, though, he's giving away the हाथ से दिल बना
falls Karan. back. KZ peeks out. Now Huh? the are going to give his अभी position भी away same too. one में A जा good रहा है. flash to Main suppress पे. this. वही है, गोपी भाई never changes. For now, True Rippers, they're trying to get the mid control in. No VLT, no crowd, I guess. नहीं actually क्राउड में हम लोग का भी कोई था नहीं, VLT सपोर्टर्स कोई था नहीं ऐसे क्राउड में. जो भी था VLT के सब ऑनलाइन वाले लोग हैं. हम लोग के जितने भी मैचेस थे आई थिंक क्राउड में जो सामने वाली टीम थी वो लोग ज्यादा क्राउड थे. Bury them alive! Man's unstoppable! And that is somewhat easy to see coming because he know that True Rippers, they have a lot of weaponry. So he's like, yeah bro, come fight me. I dare you. Especially the way Ace is providing backup, it is beautiful. The fault line to help him get that first kill onto Kaizen. The follow-up flashes, the aftershock to clear out the close right angle next. Kind of confirms his beliefs, right? Kind of tells Paradox exactly where to position his crosshair. And Ace isn't really a character that can find information. Breach isn't supposed to find info. But the way he's using his utility, he clears out the angles, and then Paradox doesn't have to worry about that. So he's kind of like forcing his opponents into very awkward spots. अरे तीनों मैप ऐसे थे, एक में उसका मोमेंटम, एक में इसका मोमेंटम, अभी मेरे को पूछो मत वापस स्टोरी पर का एजल कौन है. They found some success in at least they've been able to get into this area without losing members, so they try that once again. देख रहे दो ट्रिप कैंप सब एक ही जगह पे लगाया है. हेवन क्या देख रहा है, खुद देखूंगा. Still all the way क्या नशा है ये? Careful. They're just hoping to get. उसको देख क्या लग रहा है, कैमरा इधर है. Set up the load while the rest of his team makes impact वो somewhere. देख मार भी दिया एक को, ये पिक करके उड़ा दिया. It seems like they've just completely given away their Strong. उधर डोमा भाई को आधा घंटा पौना घंटा वार्म अप करा देते हैं भाई. ये सेटअप सब प्रैक्टिस कर कैंप सेटअप्स. इधर क्या मैं सोचता हूँ मैं जब जो मन में आया वो जिधर सेटअप लगा उसको डाल रहा है टपाटप. देख कि वो ही अच्छा है रे. मैं भी वैसे करता था रे काली भाई पहले. इसलिए जीतता था तू. अरे साइफर ही हटा दिया मेरे से पैच. इसलिए हारने लगा तू. Oh, never mind. Ching is able ओ to भाई चिंग भाई, ओ भाई अटक क्यों रहा है? देख डेथ मैच. सेटअप के पहले ही उड़ा दिए. सेटअप पे आने ही नहीं थे. पहले मेरे पास आओ फिर मेरे सेटअप के पास जाओगे. And he's also going to help his teammates lure back in the mid. Mid control taken away by True Rippers. That's a massive one. And you've got Ching. He's got no clue that there's a man available in vents. There's a man in the back. यार वाले भी हैंग हो गए रे. क्या कर रहा है ये? बफर क्यों हो रहा है मेरा? तुम लोग का बफर हो रहा है क्या? हाँ मैं रिफ्रेश कर लिया. हुआ. हुआ था. Turns around and slaps his opponent in his face. And now it's all down to Disrupt. The burning torch of consistency. This time, is he going to be able to consistently deliver the frags as he doesn't even have a lot of time left over? Yes, you know he wants it. I mean, to be fair, even if Ching died over there, even if Kaizen took him down, it really wouldn't have made a difference because Ching already did his job. He killed the first encounter towards the ramp area, and that's all he needs to do. The fact that he's able to kill Kaizen is just a bonus. True Rippers gathered a lot of bit control. They're able to get Kaizen into a very nice and deep position, which honestly could have been a massive problem, but Revenant just don't give them. Like I said, Revenant don't care about losing wins at all. And this is the pattern that we've seen from round one. So, yeah, True Rippers can keep them in control of themselves. Revenant are unfazed, unbothered. The problem is that the Cypher's got him the A side pretty much in lockdown. It's after them to breach through when the Cypher's present right in front, and he's able to put up so many numbers, but now you've got Kaizen just going on a mad killing spree. नहीं टूटेंगे देख. सब फास्ट फॉरवर्ड में दिख गया मेरे को. Strike one back into his team's favor, and then you've also got a rolling thunder. दो दिन. For True Rippers, they initially hit. ये खाली and even only 3 players left over in the hands of Revenant. एस भाई लेट्स गो के साथ कौन जाएगा? It should be right here, right now. There is a paranoia available. A lot of utilities in the hands of the controller, and Blackhawk's able to. इसका फ्लैश है गोपी के पास. Who's able to wreak so much havoc so far. Disrupt able to follow it up. Nice गोपी. And one more to go. ये तू लोगों पे मत देख. Trying to do anything from nothing over here. Eventually, Wimp peeks out. Oh, Wimp by 0 kills से but 2 impactful kill मार के round जिता दिया. Nice. Always the clutch master. He almost pulled off a 1v5 in Lotus. This time the 1v2 is so much more by easy comeback for him. time. The wipe stick confirms the round for this team. Although I must say, I didn't even expect that the paranoia would hit Disrupt as well. I knew that 𝐼𝑍 was done for. Disrupt getting hit by that is just a bonus. But Wimp, there's no getting inside his poison cloud. There's no getting inside his wipe spit.
He is the master of that area and no getting over him. Finally a round in the favor of True Rippers, and they have some money going into this last round, but 𝐼𝐸𝐻𝑃 able to kill Josh, and now that's great. अरे अभी दूसरा लगा ले भाई. Fuck भाई. कोई भी ऑफ भी डबल ऑप्स कर लेते वो लोग. In the previous round, they did that perfectly. As soon as 𝐼𝐸𝐻𝑃 got those 2 kills, they got the site control instantly established. And considering they also had the Viper's Pit, it sort of added on a little bit more to their take. 𝐼𝐸𝐻 once again on the site. 𝐶osmic_Divide used as well. Right to Ace goes absolutely berserk. Paradox able to strike another one down. The flicks are perfect. And Paradox with a 3K. He's a mercenary, dude. Mercenary that Doma. An intense desire for bloodlust and explosions. The mercenary. What is that? Like that flick? I would break my wrist. Win only counter of Sin and Gopi. 𝐿𝐸𝐻 boys after all. What a massive win streak for Revenant. 2 𝐿𝐸𝐻 boys watching 2 𝐿𝐸𝐻 boys compete against each other. एस किसको ढूंढ रहा है क्राउड में स्क्रीन के ऊपर से? कोई लड़की देख रहे हो? अरे वो क्राउड नहीं, वो ऐसे ही बैठता है तो अपना रडार देख रहा है. The one thing that will work for them is they cut lines of sight and they get inside. But what's the point of a double controller when Revenant just simply disrespect all that utility all damn time? They peek ahead of the cosmic divides. They peek ahead of the smokes. They don't. But True Rippers वाले comeback करते हुए 9-3 से. हम लोग के सामने भी किया था, गॉडसन के सामने भी किया था. 2 बार. बस एस्टर के सामने नहीं हुआ था 93 से कमबैक. जो गंदा सा ड्राफ्ट खेल रहे थे ट्रिपल इनिशिएटर वाला, और पता नहीं ट्राई कर रहे थे. कौन सा मैप में? असेंट पे ट्रिपल इनिशिएटर खेल रहे और बंदे फ्लैश के बिना स्विंग करे जा रहे एज अटैकर. ब्रो कमबैक तो हो सकता है भाई. हीट के लिए, हीट के लिए नहीं ब्रो. दिस ग्राफिक्स कार्ड इज मेकिंग माय फ्रेम्स तो पिस्तल जीते तो मजा भी आएगा मैच देखने. और तो समझ रहे ये लोग पिस्तल जीत के 93 हाफ गए. Now with 5 heat thermal outlet. वही 16 with 12th gen Intel Core i7 processor to make you forget your frame drops. Now that's cool. Game on with Tempest cooling. Presenting Hyundai i20 N-Line. It's time to play. Yes, I'm a Gen Z, or should I say, the Gen Next. And I don't let fear hold me back from doing anything. I choose to move fearlessly through it all. Hey buddy, we need you to trim your beard for this next scene. What? Okay, fine, I'll admit it. I move fearlessly in most things, but I draw the अरे भाई गिर जाओगे, नहीं गिरूंगा भाई. Try this. चेयर का यही है मजा आता है ऐसे बैठने. Phillips. चलो भाई 93 से कमबैक देखते हैं. Welcome back, ladies and gentlemen, to the second half. For the first half has ended on 9-3. Things are looking quite incredible on the side of Revenant Esports, and now they've also been pushed on the attacking side. It just seems like a date with destiny, Crips. It is indeed a date with destiny, but will it end in a nice Excali. way? With the trophy going एक बंदा मेरे को बोल रहा है आपके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना और चेंज करने के लिए अनलाइक काली. सीधा किल डबल कर दिया भाई. Vulnerable as hell, and even a single shot at the dome is enough. एक ही राउंड में दो डबल मार दिया. Forces him out of position, but he's ready to fight this one. ये स्मोक कैसा है रे? Azen 2 doing the best he can to stop the plant from going down. The mosh pit keeps them away, and it's all down to 𝐼𝐸𝐻. भाई डॉग काट गया भाई. He's गोपी cornered. को. TCH भी था वो. Hopefully the cyber cage will detect him. Yeah, run and gun. That's frenzy for you. In close ranges, you don't even need to stop moving. But yeah, 𝐼𝐸𝐻
just behalf of that one round, we can't really say a lot. So far inside this tournament, this man's been able to hold his nerves with the gun pretty well. 17 kills. भाई ने भी B start किया था department. कि वो मिड पे था. He's on the leaderboard. It's incredible. Well, at least True Rippers start things off well. The pistol round, it goes in their favor, and True Rippers have always been quite fast in the rotates. So this time, before anyone could do anything, they were already in position, and Kaizen's a bit too fast, and he's a bit too sharp. The sixth sense is insane. No line of sight required. He can smell his enemy's fear. चलिए भाई खाना खा लो टाइम पे आंटी बोल रही है. 2 on 5, where the gun's advantage clearly in the opponent's hands. And Kaizen single-handedly has also turned the tables in his team's favor. The wind is in their sails. And Kaizen is looking to put the last man in the coffin, and that's going to be a nail. That's a nail, hammered in, sent through. And that's exactly what True Rippers needed. A nice double round. Picking it up and getting the bonus underway. Now this is where the acid test begins. On paper, Revenant is supposed to win this round, but if Kaizen continues to hit martial shots like these, I'm starting to feel a little nervous. What even is that third one? What does he even do in that situation? Martial in anti-ecos is a strong weapon. Really strong weapon. And it helps that his opponents are unarmored. Exactly. Georges को मार दिया. Pulling shots like this even on the time when the opponents have the supreme weaponry, Vandals and Phantoms. Their loadout is stacked. Kaizen has also got the Blade Storm available so early inside this entire second half. If Kaizen's able to land his shots, it's going to be an incredible moment for the opponents, True Rippers. And for Revenant, they will need to try and stop the man in tracks. Look at Ching, spots out the man just behind. Oh, Has a huge surprise element, able to get 2 of his own, and now it's a 2-on-4 scenario. Revenant Esports, they have the supreme weaponry, but it's not going to matter, especially when Kaizen's got his hands on the Blade Storm, able to put one man in the grave, and also looking to put the final nail in the coffin. Wimp's upgraded weapons now. The blades don't land, but Whip definitely does, and now they can all just swarm over here. Hey, luckily, they only walk away with one upgraded weapon, so there's not too much given away except the round itself, but that's all that True Rippers required. Wimp being cheeky around those smokes. Having his Viper Wall playing to their detriment. Another smoke put up by Disrupt over here just makes things so much more easy for him. Gives him all these avenues that he can disappear in and out of. That's where the Spectre thrives. Just Kaizen with the blades, having already farmed it up in the previous round, just makes life comfortable. Cushions the blow. Oh, the calculation wasn't perfect. Whip. He tossed that poison orb a little bit too early. Still not a problem. Yeah, no issues. Considering it can't be breakable, so that's a good thing. Wimp. Oh, Paradox. Try to sneak in. Wimp's position is still left uncompromised, unchecked. That surprise element now finally as he strikes in. Wimp by confidence aa raha hai lines up against him. Ching with the sheriff in the hand should be able to get at least one. Aryu is way too low for comfort, but in the end, he still comes out on top of that duel. Josh, this man has been incredible with the Marshal, but Kaizen will strike him down. Kaizen's on a speed run over here, just farming up Valorant economy as quickly as possible. Marshall in the second round, Bladestorm in the third. 9-3-9-7 bhi ho gaya. It's almost like he's playing arms race, or escalation rather, just upgrading every single time. Time so game of momentum, man. That True Ripper had, it still continues to get the results. So what even is the need of an upgrade there? 9-7 already. काली भाई, guess the curse has been activated. मेरा ना कैमरा बंद हो गया अचानक से, कैसे ठीक करते हैं? They kind of ignored the 30 सेकंड रुक जा, 30 सेकंड में हो जाएगा. Worked out for them well enough, but they can't hope to take control of the A side without that mid now. नहीं नहीं 30 सेकंड में हो जाएगा. 30 सेकंड में हो जाएगा? हाँ. मतलब ये टाइम आउट के पहले हो जाएगा ना? हाँ हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा. Yeah, sure. पता नहीं अचानक से. I mean, sure, Revenant, but disrespecting the smokes in the देख क्या कर रहा है यार? Can't hope to pull that same thing off in the second half. नहीं, mostly नहीं शायद. टाइम आउट खत्म होगा वैसे चालू होना चाहिए. हाँ मैं देखता हूँ हो रहा है. Starting to close up.
It seems like the momentum that Revenant Esports were able to build in the first half has also disappeared. So that's a good news for True Rippers. What? And they're probably going to try to keep the pedal to the metal. It's been quite flawless for them. Thank you, Kali bhai. Welcome. On the operator, this man is going to try to hold off some aggressive angles. Kali ko pata hai. Revenant Esports will need to watch out from those. Experience, bro. We will reveal their Yep. Wimp can Tiger probably Shroff use a wiper invested step in right R&D away, but Esports. I Gopi guess bhai he की will तनख्वाह refrain, बड़ी you क्या know. अरे That's बड़ी an तनख्वाह area बढ़ती है lockdown. Oh, but Paradox feeling brave. Pushing all the way ऐसे नहीं inside. बढ़ती भाई Paradox ने game बजा दिया रे An op on A. So these two areas are done and dusted, but Paradox is so ballsy. He just walks inside to kill Wimp. भाई वो जब जीप बाहर निकाल के दिखता है ना मतलब कुछ ना कुछ तो शूट करने ही वाला है और नीचे गिरते मार रहा है रे But in the favor of True Rippers, oh scratch that, not even that anymore. It's still quite equal. The spikes drop down as well inside heaven, and True Rippers, they're denying to give away the spike control just like that. He's in front of the backline trying to close up, close and personal. गोपी भाई गोपी मार के कैमरा की तरफ देख रहे हैं They strike back once उस again. तरफ देख रहे थे 3 kills in कैमरा 1 में second. दिखाया That's what Revenant Esports are made of. What on earth was that adjustment from Revenant? Like, downright psychotic. You used that word perfectly. If there's anyone who's brave enough to walk into a white it's Paradox. कल रात को मीटिंग थी तो तनख्वाह बढ़ा ही रहेगी Nobody else, literally nobody else will be brave enough to do that. Ballsy enough. He just हर 2 राउंड में डबल किल मारना है the other side, gets into his vent side. And as soon as Wimp is dead, Wimp will still respond well, you know? The rotations towards the B-headed tree were quick enough. But this time Ksyn's quicker. I told you this man's gonna try to hold off some aggressive Para angles, T and side that's में what he 3 does बार once ऐसे ही again. मरा है जोशेस घुस गए As I said, the main objective over here is to not trip off of your own shoelaces. Wimp shuts down. बार-बार नहीं. A good pick from that man. सब As he एक catches एक him on एक the एक कोई हमको investigation. रोक ना पावे चले चलो Still got सब chain, एक just एक एक pushed एक up चल रहे थे so deep inside the A side. He's got so much control established so far. Now he's just waiting for his team to flow in, and you can see right to ace is just coming in. ये सब देख के हैकर एनिग्मा की याद आ गई मेरे को Trailblazer was initiated, was utilized, and right to ace make sure that he's not getting spotted by that Trailblazer. वही तो हुआ पागल. Sight control locked down, and for Revenant, Blackhawk is probably going to turn it on the side, and that's what happens. But the spike is still yet to make its way across. Now, luckily there's nobody available on screen, so right to ace can walk past. अरे गोपी भाई का फोकस नहीं था They know that there's a person coming in from behind. वो भागते भागते मारा रे वापस. वापस डायरेक्ट में बोलने वाला था इस भाई के साथ हो क्या रहा है इतनी यूटिल डाली उसके ऊपर Concussion doesn't hit them, but Ching does. Ksyn strikes immediately back. It's all down to ace. Left in a 1v3 and he won't have anything to say. They had him in the deadlock. They let the side control flow by. That was nicely played by True Rippers. Patience playing off perfectly. They were like, it's okay if they got the side control. At least we'll have the security. At least we'll know that every single player from that team is on the site so we can keep them in the deadlock. And that's a deadlock you don't want to mess with. Once you get in, you can't get out. Mechanically. And unlike MMA, there's no tap out. क्या कर रहे हैं सर? Will lose your बिल नॉर्मल बिल. कुरमुरा टमाटो कांदा. Want to have a very fast hit towards the A site. Ksyn's gonna be the deterrent. Paradox already makes his way across. Tiny gap in the toxin screen, which Ksyn can still use, but they're using cyber case to cover the distance now. This is great, but they don't know the technology. Vim भाई play बना है हो. And all of a sudden, very potent. My goodness! 𝐼𝐍𝐿 all over again. अरे जाते ही बोझी में भाई. Defend the A site against hordes of people. सब देख के जेट खेलने का मन करता है. That was just some heroic presence being showcased by that man. But once again, it was an eco round from the opponents. Wimp ने किधर से दो मारे हैं Revenant Esports, sort of the game plan for them was that just straight up WP on the A side. Ching was able to find a good opening at the start. I'm not gonna lie, it felt like they should be able to spring back in the offense at this round. Then Ksyn was able to hit some nice shots. और अभी देख रहा है ना मैच? हाँ देख रहा हूँ. देख रहा है ना जेट कैसे खेलते हैं? Yes. Every single player is praised in the opponent. अपना जेट 2 फ्रैग पे रहता था क्या बोले? आई सौली. He still peeks out. Okay, that's just brave. अपने स्मोकर भी नशे करते थे और अपना स्काई भाई का तो पूछो ही मत. As Wimp's gonna bite the dust.
early offense at this round. Good trailblazer too. Sky. Information. Rolling Thunder utilized this wall. Anyone on the site's going to be stunned at least for a couple of seconds. Disrupted, come back to senses and shut down the man in the front. Josh trying his best against the entire firing force. What the of fuck? Two Rippers and Techno. Strikes 3 down and good spray transport from that range. It seems inhuman, but this man makes it happen. Ching now, the only man left over. Position compromise. Techno, on the other hand, with only 35 HP, not a lot to work with. And considering his opponent has a huge striking advantage. इससे सामने से टोपी है. Also a high ground advantage he can rely on. Techno, he's got way too many angles to deal with. And Ching now slowly creeping and crawling. देखा मैंने क्या भेजा? देखा सब माधव भाई. It's so bad for Techno. That man pulled off something that's humanly impossible. Very few spray transfers work as well as that one does. And he almost brought the whole round back. I mean, Excali है भाई, Karan Mhaswadkar. But then look at this. दूर है वो, आसपास भी नहीं है. Is made out of green material, dude. That's the kind of stuff that you see in आसपास के दूर है वो. international tournaments. But despite all his hard work, despite all his efforts, भाई टाइम आउट कीबोर्ड्स. भाई टाइम आउट मतलब कीबोर्ड्स इधर अगर टाइम आउट हुआ तो तेरा भी टाइम आउट होना चाहिए ना संग ने, जैसा मेरा हुआ है. नहीं मेरा हुआ है अभी शायद से. तेरा वैसा थोड़ी होता है. फक फिर से कैम बंद हो गई. in which these two teams are trying to fight back, are trying to fight for the supremacy. तू जो मस्त सीबीडी कर रहा है ना इधर काली. सीबीडी नहीं है ब्रो. Single players gonna also start to feel the nerves, especially from the side of two Rippers. As Revenant once again, it seems like they're back inside the momentum. They're back in the flow. The wind is in their sails. can True Ripper somehow steal that win away from them? होगा टाइम आउट खत्म. हाँ यार, अरे अंकिता कैम खराब है. Like the Titanic. वेबकैम लगा लेता हूँ. That's enough naval reference. लगा रहा मेरा भी आ गया शायद से. ठीक हो गया, टाइम आउट खत्म तो ये भी खत्म. There's only Ching with a gun over here, so yep, Revenant Esports can win the round, but they can't save their money. आरएनटी हरी तो आरएनटी आउट नहीं. Have a chance of getting back. डबल ले मेरा एक और चांस. कोई भी हारे वीएलटी आउट. कोई भी हारा तो वीएलटी आउट है. मेडल भी आउट है भाई. अगर रेवेनेंट जीता तो मेडल आउट. अगर हारे तो वीएलटी आउट. बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा. हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन थोड़ा. सोच ले क्या डालना है. काली भाई ओजी थोड़ी जा रहे हैं दोस्तों. काली भाई जा रहे 7 C's या 7 समुंदर. No tags yet. And finally Ari is able to strike one down with the help of Kazin. Nice. Disrupt his god opponents right onto his face. भाई ये निकाल लेगा चीज. 1 HP रे. विम रुक गया जाने वाला था. 1 HP हो. Only 1 HP and a dream. 12 bullets in the magazine. Exact 1 HP. But he has all the info he needs. The tripwire getting triggered tells him Deep हो रहा है and he already knew where Wimp was. So he's got the round he's महंगा got the किया है ये time. लोगों ने. The HP lacking, but maybe he can bait out a fight. The head glitch angle available on True Rippers is enough. डर लग रहा है मेरे को सिर्फ हेड देख के. ओ ये speaking them, True Rippers just simply not close. 25 मारे उसने. They're comfortable letting him go for the plant. They know he's cornered over here, and yet again they don't budge. Pressure's mounting. Time ticking down. The clock and the world is now. Head angle पे खड़े रहे पूरा टाइम. The spike planted does alleviate some pressure off of his shoulders, but very soon he's likely to not have a head on top of his shoulders. Yeah. कैसे टेक्नो तो फुल रन एंड गन कर रहा है. How does he survive? इसका कनेक्ट नहीं हो रहा है. No, he whiffed a couple of initial bullets. I thought this बहुत ज्यादा महंगा कर दिया 1 HP पे. But Ching, you can never count him out. It was on a huge HP disadvantage. You still managed to take that one player down. You can never doubt his skills. Nice try, man. Nice try. टेक्नो भाई ने बचा लिया. He's been weaving a web of टेक्नो भाई ने पिछला राउंड भी बचा ही दिया था. साइड वाले को तो हाँ मारा है भाई. And given the weaponry that Revenant started with, और उसका ADS हो गया है गलती से. साइबर मूवमेंट हो गया, राइट क्लिक हो गया. Boy, he hit single ounce of value out of that weapon. Look at the KD he has, 26-12 as a Cypher player. Nuts.
Nuts is an understatement for that type of KD. I know. I wanted to use a more, let's just say, an inappropriate word. That's all I can come up with. Vim भाई first half में 2 kill पे थे, just by but looking at 13 that पे score पहुंच itself, चुके it should demoralize you if you're his opponents. But at least 𝐾ZN's able to get rid of that threat early off inside this round. Threat being neutralized, and now they पे should. ब्रीच अल्टी किधर तो यूज करना चाहिए लोगों. यही राउंड है. ब्रीच अल्टी? अच्छा नहीं ब्रीच अल्टी है ही नहीं. Funny how Ace is just sending all his flashes in. क्या देख रहा हूँ मैं? Fake, but they're not actually committing bodies. क्या देख रहा है भाई? True Rippers are not gonna fall for this. Future देख रहा है क्या? नहीं गलत देखा मैंने. गलत बंदे का अल्टी का. From True Rippers. And Wimpy is able to get into these positions really quickly. He can always call for the preemptive rotates. Techno blinded. Timing उसका पुल का. Poison helps him get a double. And even the Cosmic Divide just makes it nearly impossible 𝐿𝐽𝐻𝐫𝐼𝐻𝐿 का भी ult है. side itself. Impossible to clear out these crossfires. Techno and Blackhawk are just standing on the other side of this wall with each other, just literally shoulder to shoulder. Oh my god. Flash का रुक गया. They're looking to swing it. Wow. It's going to be a perfect contact. Wow. And yeah, the trades did happen back and forth, and now it's Josh one on Alte. Josh, he got both the kills on the site, managed to clear it single-handedly. Will also get the spike plant down all the time, every single situation. Short लगे भाग रहे देखना. It's always been a high-pressure situation or a situation, and now Josh, he gets another one down. Takes his grave, 𝐾ZN put down to sleep, and now Josh almost. And Disrupt shuts him down the back. भाई क्या हो रहा है? मसाला में अचानक. Stabbed right in the spine. That was a nail-biting moment. We've seen Revenant Esports get into these ones. देख रहा हूँ. उसको देख वो चश्मे वाले को देख. वो कितना excited है. It kind of tells him where his opponents are coming from. It's just a small timing window with which Disrupt was able to get to the other side of screens. Other side of that little block in the middle of the side, and that's all that stands in between him and the equalizer. True Rippers have so much available now. Not only the weapons, but also 4 big ultimates. They've already equalized the scoreline, and this comeback seems inevitable. 8. Yeah. 11-11. The scoreline's matched up and tied up. We might just be going to overtime, ladies and gentlemen. We thought Revenant might be a little bit more powerful force on the attacking side, but then you can't deny the fact that this map is quite unpredictable sometimes. And Revenant Esports. Yeah, go ahead. And the True Rippers are also damn strong on this one. Yeah. It is their strong suit. You can't deny that. And Wimp is able to line up 3. क्या बात है? Oh भाई. And clean it off. It's so frustrating to witness this again and again. Wimp is able to get so many multi-kills like this. And oh bhai. Techno bhai jo khush hue. Oh bhai. Don't worry, sab kachre. Don't worry. It makes you so susceptible to damage. And Wimp is able to kill so many people like this. अभी Wimp का ult है. Mid पे ult मारेगा, फिर से Paradox घुस जाएगा मेरे को लग रहा है. And on so many occasions. अभी second time नहीं off guard मरेगा वो. ये बार stun मार के जाएगा. शालू भाई. A nice little frag move. Strong. And they're so close to victory. एक clear. Ult नहीं मार रहा है Wimp. Are you sending the thrash all the way inside? So now they know that 𝐾ZN has a lot of work to do over here. 𝐾ZN also got a lot. बस पुल का टाइमिंग अच्छा है इसका. Unfortunately, the pull was there from the Astra, which it was not really able to straight up just glide inside the site. ये मर गया तो गया गेम. जी. O2v2. They're trying to fight fire to fire. The resistance is there, and once again, right to ace, the last glimmer of hope alive with only 21 HP. Everything relies on this man. But as I said, not a lot of HP left over. 21 only. हो गया GG हो गया. Should seal the deal on to right to ace. But on the other hand, right to ace as well knows he's got 2 enemies to deal with. But this time he will नहीं मार देगा यार, तू मार देगा. Even stronger as he shuts down 𝐾ZN. Look at it. Oh भाई. Takes the contact, but this time तेरी माँ की सूट गाली दे रहे हैं. What a reverse sweep. Crowd दिखा थोड़ा. Sensei को बोल रहा है Sensei को. From the depths of hell all the way to the top of heaven. From a devastating loss in Bind to a valiant comeback in Lotus.
And then an even stronger comeback on Split. True Rippers blaze a path to victory. Too much irrelevant. Esports cannot follow. They can't even step on it. Every single player stepping up. गोपी भाई ने जर्सी नहीं पहना इसलिए आ रहे. As you said perfectly, reverse sweep. None of us expected this outcome. भाई after the T-side पैर इतना लग क्यों है ना? You see Revenant getting taken out slowly and steadily, choked to their deaths. But they definitely tried their best. As you said, for True Rippers, Split has been a solid map, and once again they proved that. I just better. Reach better, Jet. That they just make a massive, loud statement. अगर आइडेंटिटी जीती ना तो गोपी भाई स्प्लिट मारते. Be brave enough to challenge them on the team in the future must add it to their ban list. Let's see what was going on in their minds. We have the interview for True Rippers. ये basically ये लोगों ने host लाया कोई. उसके बाद जो वापसी की है TR ने, man, unbelievable. I think इससे better tone setting नहीं हो सकती है. Okay, can we have RU please? RU, come here. True Rippers के कप्तान. उसको बहुत समझ में आ रहा है. How are you feeling right now? I'm feeling great. Listen, let's just start with the first question that's on everyone's mind. What happened in match 1? गाली कौन खाया बिम से सेंसे 2v1 में पागल जैसा पिक कर रहा था. So we don't have a slight idea like. बस यही मैच है. Yes, आज एक ही मैच है. हर दिन एक ही मैच होने वाला है. Warm up for us. Okay, you're the team captain, are you? I just want to know. Win by after revenge. the first match ended, and you guys were annihilated in that first matchup. What did you say to your teammates, and were you angry? I'm not angry because it's a team, like it's a team problem. It's not just one guy who's doing this. It's all the mistakes. So I told them like on the second map, guys, forget the mistakes that we did on map 1. Focus on map 2. This is our map pick, and we're gonna prove that we're the best here on. Look greater than Gopi. Oh yes. This wasn't easy. एस्टर का मैच कब है? एस्टर का मैच आई गेस 3 या 4 तारीख को. 4 तारीख को है. कल बस अगले टिकट बुक कर ले अपने. हाँ. चेंबूर कब आओगे? अभी मुंबई आने को टाइम है. When we in the second half we came in here, we're like, bro, we've done this already. Map 339. I guess you can see the examples. VLT, God's Reign, 39. अपना नाम लिया. VLT का नाम लिया. पकड़ो इसको गाइस. आप पकड़ो ट्विटर पे पकड़ो. नहीं पकड़ो. क्लिप करो. पट क्लिप करो. कैंसिल हो जाएगा तू. VLT का नाम लिया. पकड़ो इसको. At any given point of time, when Revenant was leading, did you guys feel we could let it slip? ट्विटर पे थ्रेड आएगा. करने वाले भी सब. चलेगा. चलो गाइस. बाय. रुकना साधनिक. बाय. क्या अभी क्या करूँ? खेलना मेरे साथ. मैं वैलोरेंट नहीं खेल रहा. मैं सिर्फ देख. खेलना मेरे साथ. डुओ चाहिए मेरे को. बीजे में खेलता है. खेलना बीजे में. How does it feel getting into the semi-final, knowing that? अरे सेमीफाइनल्स में आ गए लोग. Very tight finish. हाँ ये लोग के साथ अभी अभी ये लोग ओजी का मैच है. We were only this close on map 3, so we have to get ready for on our semi-finals against OG. Listen, you guys have turned in a stupendous, a stellar performance. I know he's probably trying to get his heartbeat right. चलो बाय मिलते हैं. बाय. Gentlemen, they have तो काली भाई बाय. Yes, bye. बाय इजी बाय. Bye. चलो boys, I'll bounce too. Yes. Thank you Bye. for tuning in. Like and subscribe. जो भी नए लोग हैं जिसने मैं नहीं किया है. I'll see you guys tomorrow. दूसरे वॉच पार्टी पे अपने साई भाई को सपोर्ट करने आ जाएंगे सब लोग. भाई आपके सामने ही आएंगे. See you guys tomorrow. Thank you. Bye. Good night. I'm feeling so hollow. Don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Don't you know?
gold I fell for fool's gold. What did I know? What did I know?